Assalamu alaikum and welcome to DHS Sports Club Moin Khan Academy, where live action continues. The first match this evening is to be played between two very good teams. It's Gulshan Gohars versus Lyari Legends. Now, Gulshan Gohars seem to be on a roll because they've played two matches and they've won both of them. On the other hand, Lyari Legends have played one match and they've lost it. So a lot to make up for as far as Lyari Legends are concerned. Right then, we're all ready for the toss. I have both the captains here with me. Leading Gulshan Gohars today is S and Chitta. Leading Lyari Legends is their captain Nizar Ali, along with match referee Naeem Ahmed. Right, gentlemen, who's flipping it? I think it's Nizar Ali who's flipping it. Get on with it. KTPL is the call. KTPL. KTPL it is. S and Chitta has started with a win. S and Chitta क्या करने का फैसला किया है? हम पहले बॉलिंग करेंगे। पहले बॉलिंग करेंगे। ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। जो टॉस जीत रहा है पहले बॉलिंग कर रहा है, थोड़ा चेस करने को फोकस कर रहा है। हाँ जी, क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि ड्यू फैक्टर भी थोड़ा सा रोल प्ले करता है लास्ट इनिंग में, या फोर्थ इनिंग जब आती है तो उसमें थोड़ी ज़रा प्रॉब्लम भी होती है बॉलर्स को। कुछ चेंजेस की हैं टीम में? नहीं, मैं कहता एक चेंज है, उसका मैं नाम है, बाकी लड़के सारे सेम है, तो स्ट्रेंथ नजर आएगी हमें आज भी। राइट एसन चिटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। निज़ार अली आइए हमसे कुछ बातें कीजिए। निज़ार, बॉलिंग कर रहे हैं, पहले बैटिंग करना भी बुरा नहीं है, अगर आप अच्छा खेलें तो सब अच्छा हो जाता है। नहीं, हम टॉस जीत के भी हमने फैसला करना था बैटिंग, पहले बैटिंग करें ना तो फिर बाद में ड्यूप होती है, बॉलरों को मसला होता है। आपकी टीम में कोई चेंजेस है? नहीं, सेम चेंज है, सेम टीम है। राइट, यारी लेजेंड्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। Alright, ladies and gentlemen, the word from the center is Gulshan Gohars have won the toss and decided to bowl first. We'll take a break here and we'll be right back with live action.
इतनी दूर और इतनी ऊंची गई कि किसी को नजर ना आई. Getting it outside edge. Has that been taken? It is. What an excellent catch by the wicket keeper. Another short pitch delivery that has been nailed on the leg side. That's going to be another 6. Boom shakalaka! Over mid wicket, unstoppable fast. Wow, shot yaar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum and good evening to every one of you who are watching us from different parts of the world. Once again, we welcome you for an exciting contest where Gulshan Gohars are taking on Lyari Legends in match number 8 of this KTPL Season 3. We are live from the DHA Sports Club, Moin Khan Cricket Academy, Karachi. As we see, both of the umpires are making their way to the middle. Sibtan Raza alongside Shahid Aslam will be the on-field umpires for today's match. Match number 8. Both of the sides are very well served in every department of the game. Gulshan Gohars will be playing their third match and they won both of their opening encounters in this competition, whereas Lyari Legends are yet to register their first victory in this competition, will be playing their second match. The news from the center has been that Ahsan Chitta, the captain of Gulshan Gohars, have won the toss and has opted to bowl first. With me is Kainat Imtiaz. Good evening, Kainat. An interesting decision by the captain is Ahsan Chitta to bowl first after winning the toss. Good evening and thank you so much. Yes, of course it is, and we're looking forward for an exciting game of cricket again and again, as we have seen in the previous games. And what a lovely weather to play. I think this is because of the weather and the wind that he has chosen to bowl first, so that he can get some advantage from the wind. And the batters are going up to set on the pitch to start the game. Here's a look at the both sides. Bahadur Ali, the captain of Gulshan Gohar. Acting captain is Ahsan Chitta at the moment. TM will be the player to be watched. And whereas Lyari Legends are served with Nizar Ali, the acting captain, Ashraf is their captain, and Shah Jahan Mir, the experienced campaigner, the bowler, will be treat to watch if he gets going. Well, surely, I mean, it's so interesting to watch TM bat, and of course Bahadur Ali as well, as he has been in form in the previous games. And this will be an interesting contest as Lyari Legends are in form, and also Gulshan Gohars. Well, mostly, Kainat, we have seen in this opening match, the captains have been winning the toss and opting to bowl first after the first night. It's merely because they feel, as we see that the Ashraf Pathan, captain, has made his way to the center with the bat in his hand. He will be opening the batting with Nizar Lefty. Nizar Lefty will be his partner. So the decision of winning the toss and bowling first means that they will have to bat in the fourth innings, as they feel that in the fourth innings it becomes a lot easier to bat because the ball gets wet a little with the dew coming in, and it's pretty tough work for the bowlers to grip the ball and get it in the right areas. Well, rightly said, this is the matter for when you're batting fourth, and this can be used in both the advantage actually. Not only the batters, but the bowlers can use that as well, because the ball keeps skidding because of the dew. And if you control the ball regularly with that pace and that length especially, you can definitely get the batters out. Well, it's mostly said in table cricket that this is a batter's game, but Kainat, I can tell you one thing. Yeah, it's going to be Ashraf captain to take the strike. Yesterday we saw a bowler, Mansoor, get in a hat-trick, something very rare that you see in table cricket. So there is something for the bowlers as well.
but if they get in the right areas, that is very important. They will have to bowl on the right areas, any bowler, to be safe from the batters, because as you said, it's a batter's game, and Nizar Ali is the batter on the non-striker end from Lyari Legends. So it will be interesting to see who is going. So here we go as match 8 is just about going to get underway. Oh, Loosener to start the proceedings by the quick bowler down the leg side. Missed his radar by some distance. It is so important to start off with a good ball, because as it said, you enter with a good ball, you end with a good ball. It's Safi Khan, bowler from Gulshan Gohar, starting the attack. And the team is all relying on him, as first overs are always very important. And this time he goes through the offside. Width was there and length was there, and he puts it away in style. It's tape ball, it's not a cricket ball, but that really was some shot, Kainat. Almost like the hard ball cricket shot. And again, a great hand-eye coordination by Arsalan, and putting it through the point region. It's always a hard shot to play, but again, it was nicely placed. Well, who says that the tape ball batters are only sloggers? That was a proper cut shot. Nicely executed stroke off the back foot. This time he goes leg side, a little tickle, avoids that fielder at leg slip and goes to the boundary. So a couple of boundaries to start the proceedings for captain. He'll be doing his confidence a world of good. Well, yes, I would say that Gulshan Gohar, bowler Safi, is not in that kind of form and already in pressure, under pressure from the batter. And the batter has been started off really well with 2 boundaries back to back. You know, Lyari Legends dugout, you could see. This time it's launched. It's gone many a miles and safely over the advertising hoardings. First 6 of the night, and it's a good one. Coming on to the ball, Ashraf was completely in control of this shot. And again, he dominated. Either it's the bowler who's going to dominate or the batter. And in this over, it seems like it is the batter only who's dominating. Taking his time before he gets to the second delivery. Next delivery does Safi. Oh, play and a miss. The length was there, but he just didn't get the connection. Well, he swinged the bat too early, and the pace of the ball was a little different than the previous one. Also, the first ball on the right area. I guess Safi will be trying to bowl on this area more often now, because as you know, one was missed. Yeah, just taking a little bit of time to get warmed up properly. Is Safi the bowler? Went for a couple of boundaries and a maximum. Looking to make a comeback and finish well here. This time he goes down the ground, all along the carpet. Kainat is a tape ball, but we have seen some great stuff. An excellent shot down the ground, straight towards the boundary. And again, this is also one of my favorite shots, playing very straight, because it's always hard for the bowler to get that bowler's back. And again, a great stroking shot. Well, it was just almost as good as somebody like Sachin Tendulkar. Straight drive, down the ground, along the carpet. Great sign for a batter.
This time he goes leg side and beats fine leg and goes into the boundary for 4. So reigning boundaries in the first over. Well, not a good over for Gulshan Gohars, but again, it was a great shot. Anything comes in on his body, he is going to pull it through towards the leg side. Good shot by Arsalan. So eventful first over comes to an end. 24 without loss of wicket after first over. And you can watch us from across the globe through 84 plus different channels. It's a specially Geo Super's production. Wherever you are across the globe, you could watch us through Willow TV in America and Canada, Sub-Sahara, Sahara, and in Africa, XP. Wherever you are, you can watch this action live, all the way from Karachi. So Nizar lefty will be the batter to take the strike for the first time in this innings, because the first over faced by Ashraf, the skipper himself, and he's got 22 runs against his name, whereas 1 wide was there, so obviously the total is 24. So it's a start, any team will take it, Kainat. A great start by Lyari Legends. That's what they were looking for. You know, the starts are so important. May that be a bowler or a batter. And Ashraf is well set now. We have Hassan lefty, the bowler from Gulshan Gohars. He goes high. Somebody getting underneath it, and it's a very good catch at short third. It was a sky, it was miscued. Went across the line, played away from the body, and pays the price, does Nizar. He has just come and gone, didn't trouble the scorers, Kainat. And I would say the wrist work of the bowler was exceptional. Well, we'd only see these kind of wrist bowlers in the hardball cricket, but again, I think he has been playing hardball too. Nizar Ali went for 0, 24 for 1. Dawood Suleiman is the new coming batter after the departure of Nizar lefty, who didn't trouble the score. Zohair Nasir, you could see from other Expo. And the other one was Velbo, CEO of E-Zone Business Private Limited. We're having a good chat, I'm sure. Flicked away off the hip, and it's gone all the way to the boundary for 4. Nicely picked. The line was there, length was there, and he didn't waste any time, did Dawood, to put that away. First ball to the boundary from Dawood, and again anything on the body will be gone towards the leg side for our boundary. And again nicely picked. It was almost on the leg side, more on the leg side, and nicely pulled away by Dawood. Looks as if he was waiting for that type of length. Was Dawood, gets off the mark with a beautiful boundary. Hassan, who picked up the wicket of his very first delivery of the spell. Nicely bowled, inside edge, onto the body. No run there. This is where he should be aiming to bowl, I get the feeling. Because he will be willing to take the ball across the right-hander. And if he gets it right, it will be very tough to get away. Well, this is the beauty of a wrist bowler, actually, that they can make the ball swing
as per they want. And this is what Hassan has been doing, trying to get that pace and that swing on the ball so that they can get the batters out as soon as possible. Hassan continuing. This time he goes through the offside. That's a beauty of a stroke. He gave it a real thump. How did he put that away to generate that kind of a power off the back foot over wideish mid-off? It's a phenomenal achievement. And a great shot, that too, a 6, completely getting on the back foot and hitting it over the top. A back foot shot, it's always difficult to play, and getting all the body behind the ball and towards the boundary. That really was a serious stroke. Boy, these guys are definitely have some talent to offer with the bat. Gee, they can play. There's no question about that. Goes again through the offside. It's a flat one. It's Dawood's carnival here in Karachi. What a great, extraordinary shot that was. A 6, a flat 6 over extra cover. Again on the back foot. I think this is because of the bounce that Hassan is offering to the batters. Well, he backed himself and trusting his ability, trusting his power. That really was a serious stroke, Kainat, because off the back foot to generate that kind of power is not an easy job, I would tell you. It's always difficult to hit those kind of shots on back foot, because even a back foot punch is so difficult, and that too lifting it flat towards extra cover. It's an extraordinary shot. And have a look at that for a stroke. Unbelievable. It's one bounce four. And Kari has picked it away, but there is a protection right at the square leg boundary. Kari gets off the mark straight away with the single, and here comes a signal. Oh, that's not on. That is alarming. He bowled a no ball. It will give them 3 runs on this one, and it's going to be a free hit for Rana. It's a bonus. It's a bonus here. He hasn't bowled badly, Hassan, in this over. Although considered just a 6, and also he picked up a wicket. And before that, he produced dot balls. So he overstepped, and he was quite surprised when umpire extended his right arm. So free hit here. Rana will face. He has hit it in the air. Didn't get hold of that one. Gonna get single though, but I think credit should be given to the bowler. He survived not only himself but also his team from getting hit for a boundary. Missed time shot, absolutely, and good to see the short third fielder. He just waited for the ball to spin because it wasn't out because it was a no ball. Yeah. Hamidullah got the strike back. This time he chipped it in the air. It is... Oh, fielder made a valiant effort. He dived in front of him, but still couldn't quite reach at the ball. It was dying on him. A run is also taken. There you see it again. Just a chip. He wasn't in complete control here. He just mistimed it. But valiant effort by the fielder. Qari Hamidullah thought he would be in trouble. Nevertheless, very good effort. And Qari Hamidullah survived. 70 for 3. 4 overs have been bowled. Rana Mohsen wearing an interesting shirt number, 00. Umpire signals for the next power play, which will continue from over number 5 to 6. Maz is the one who's going to start the fresh over. Hamidullah tied his shoelaces.
Nasir has a serious look on his face. Batsman did try to hit that one too hard. That's why he didn't able to time that one at all. He's not happy with himself, Rana. He wanted to heave it away to the onside. Just mistimed it and went straight back to the bowler. Not even a chance to take a single, in fact. At times, you just got to time the ball rather than trying to hit the ball too hard. At times, it can get your timing wrong. That's what happened with Rana on a previous ball. It's in the air. He is going to be out. It is. Wicket-keeper comes forward and grabs that one nicely. And Rana Mohsin was struggling. He was looking out of sorts. And finally, he gave his wicket away as well. Runs are hard to come by now for Lyari legends. As Rana is the latest victim. Went for the big shot. Another mistimed shot. Miscued. An easy catch behind the stumps. Totally wasn't in control. And clear call. No mistake whatsoever from Essen. So it is turning out to be another good over. So runs have been dried up. Rana Mohsin goes for 8. 70 for 4 on the board. Lyari legends. Mars looks a very difficult bowler to be got away or to get away. 13 runs he has conceded in 1.2 overs and picked up 2 wickets. It should be called a very good bowling figures when it comes to 6 overs. Yes, absolutely. He has been quite smart. He's mixed his deliveries well. And he's banked the ball short sometimes, but he's bowled within the stumps, and that has troubled the batsman of Lyari legends, and also hasn't provided wit whatsoever. Syed Bilal has come out of the middle, left hand better. Will his presence change fortune for Lyari legends here? Ball number 3 now. Right and left combination is at the middle now. Bilal got a good stance. He hit it in the air. Wicket-keeper again in business. Yes, he's grabbing another catch gladly, gleefully, and another wicket goes down, and Mars suddenly is on a hat-trick. Well, wickets keep falling, and once again he has been rewarded. Excellent delivery, no real wit, and a little bit extra bounce troubled the newcomer, and he was straight away. Simple catch behind the stumps once again, and he's on a hat-trick. So the left-hand batsman, Syed Bilal, just came and went. Golden duck to his name, 70 for 5. Yeah, that was climbing on him. He pitched that one in a very good area, then caught the ball to rise. And batsman didn't have much clue. And wicketkeeper didn't make any mistake. So wickets are tumbling and tumbling regularly. And Mars doing a wonderful job for his side. Not only he's not giving the runs away, but also taking wickets quite frequently. Shoban Seto has come out of the middle to face the music. He will face the hat-trick ball. Yes, it's important, Rana, to pick up the length, and then you can survive. Otherwise, you will end up mistiming your shot, and you can just get the skyer. Shoban also good striker of the ball. I have seen him playing in many parts of India Sin. Very well bowled. That was a piece of a ball. This is where they should be bowling all the time. That's terrific piece of bowling. That's a Yorker targeted the middle stump and surprised the batsman here. They didn't offer him the short delivery, and that is how he picked up 2 wickets. The first one, missed-time shot. The wicket-keeper covered a little bit ground, and then the Bilal got out. Much easier chance for Ehsan behind the stump. He hits that away and hits that away well. He picked up a 6 here and much needed one as well. Well, that 6 has spoiled this over. The first scoring shot of the over, 2 dots, 2 wickets, and finally the batsman picked up the length very well. It wasn't the dead shot, it wasn't remotely shot, but it was an extraordinary shot from the batsman. Shoban straight away getting into his own. This is in the air. Who is going to take it? No one.
as it dropped in no man's land. They have taken a couple, wanted a third, now going for the third because it has been overthrown. So 3 runs scored on the final ball of this over, or on the 5th final ball of this over. 79 for 5. And that is how the number of things happened here in this last ball. Very dramatic comedy of error we saw. And the balls dislodged the bails that allowed the extra run. 3 runs conceded in the last ball. Overall 9 of the over. So it is still a very good over for the bowling side because a couple of wickets fell. The bowler was on a hat-trick at one stage. So anything below 10 in this format should be considered as a wonderful effort. Another serious faces. Whereas he's telling something very serious to his friend or his partner. Basid has been brought on to the bowling attack. This will be the final over of this innings. Shaban is on strike. Outside that off stump. They are appealing for the caught behind, probably to pressurize the umpire, but he called it a wide by extending his arms. A delayed decision from the umpire. It was around the wicket pass it. The ball was angling away from the right-hander, quite close to the tram line. But in the end, the wide given. Probably he didn't like the appeal. And then he extended his arms and called it a wide. Down the leg side she goes. It's going to be wide as well. More runs. This is not the good start for the bowler. Well, I think Hassan suggested him to go over the wicket. And the bowler wants to bowl around the wicket here. He's bowled a couple of wides. There was a clear wide down the leg side. And also the indication he can present some sort of full toss on leg stump. That would have been an absolute gift for the batsman. So he has to come within the stump once again. It is in the air, but it will clear the man at covers. And it racing away to the deep extra covers boundary for 4 runs. At the end, it turned out to be a productive stroke. He wasn't in control. I think he was targeting the onside. And somehow he timed the ball well enough, more than he expected. And the ball goes over extra cover on the first bounce for 4. He had a good chunk of wood on the ball at the last moment, although he was aiming the mid-wicket boundary. You're absolutely right. Maybe because of the thick and broad bat. Absolutely right. It will go down to the fine leg boundary. There isn't any protection there, and ball raced away for 4 easy runs. Bowler doesn't look so happy. Well, suggestion hasn't worked from the wicketkeeper. He asked the bowler to come over the wicket. But once again, it was full toss on middle stump. Off the inside edge, over the fine leg for 4. So it is turning out to be a strong finish. The last over is being bowled. 12 runs already have come off the over. Only 2 deliveries have been sent down. This time he gets that away onto the onside. Fielder comes in. 13 runs of first 3 balls. And let's see how many runs they're going to get in next 3 balls. That's 13 of the over so far. Still 3 balls to go. And both the batsmen, Hamidullah and Shoban, they must be targeting to clear the boundary here. Hamidullah finally got the strike. He has only faced a couple of balls in this innings. Hamidullah has hit it in the air, mistimed it. He take 1, and this is all which he will going to get. Bahadur left is also not happy with the result. It's a no ball, and once again free hit to be awarded. He knows it is turning out to be a damaging over for his side, and Lyari Legends is cruising towards 100. These spectators are not only enjoying the match but also enjoying the tea. Weather is becoming a bit chilly now in Karachi.
edged. Has he? No, he hasn't. It looked as if edged that one. But in fact, that was a free hit. I beg your pardon, I got carried away. He did edge that one. Wicketkeeper did take the catch. Oh, it's a juice time. She doesn't like the tea. She doesn't like the tea. Come on. Come on. And she looks a bit thrusty as well. There we go. He has hit that away. And hit that away for a massive six. That's a good shot right out of the mid of the bat. Well, this over is turning out to be an absolute nightmare for the bowler Basit. He bowled one good ball that came in the as a result of super free hit. He got a wicket, but it didn't count. And now a juicy full toss. We just saw a little girl was enjoying the juice, and a juicy full toss for the batsman. What an expensive over it has been. One ball to go. 22 is already conceded. 100 up for Lyari legends. Shaban has driven that away. That's a beautiful shot. It has gone down to the boundary and then clatters it 4 runs. What a beauty of a shot. 26 runs of the last over, including 7 extras. And also, batsman enjoyed the one free hit. That was smashed through the covers, a vacant space. It remains vacant, especially in the last few overs or so. And that's the trophy they are playing for. Good finish from Lyari legends. Expensive over from Basit. And Shobhan got 28 of 9. He has done exactly what his captain wanted. What a beautiful trophy it is, Rana. Indeed it is. 8 teams are locking their horns to win it. 105 for 5. What they have scored in their allotted 6 overs. Last over gave them 26 runs. That was an expensive one. These are the highlights. Exciting start of this contest. The first match of the day. The full toss put away for 6. And then smashed down the ground for the boundary. Badar was inside the circle, and then full shot. This time shot. Catch it was a try, comfortably taken. So many catches have been picked up behind the stumps. Pick up shot, beautifully played. And then a smash to the offside. Another glorious shot. It was a flatter. Half a dozen again. And beautifully picked up. Targeted the mid-wicket region. And then catch was taken. Wonderfully accepted. Smash towards long on for 6 more. And then missed time shot. And he paid the price. Comfortable catch. It was a great over at that one. The bowler was on a hat-trick on one occasion. Hassan got a catch. And the second catch he picked up in a very next ball. Much simpler, much easier. And an expensive last over for Basit. Off the inside edge. There's no protection out there. In the end, a strong finish here. Back live now. Very cool and calm atmosphere here in DHA Sports Club Moin Khan Academy. Big buildings can be seen in the background of this ground, and then ocean is not too far away as well. So lot of enjoyment here in DHA Sports Club Moin Khan Academy. People not only enjoying the cricket but also enjoying their time out here. It's sort of a festival for the inhabitants of DHA Karachi, not only for them but also from all parts of Karachi. People do come and watch these matches. दोनों बैट्समैन तैयार हैं
इनिंग्स का आगाज़ करने के लिए 105 रन्स यहाँ पे स्कोर करने में कामयाब हुए लियारी लेजेंड्स के बैट्समैन। बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा देखने को मिला, ख़ासतौर पे आखिरी ओवर में 26 रन स्कोर किए लियारी लेजेंड्स के बॉलर्स ने, और कहीं ना कहीं बॉलर्स अप टू द मार्क नहीं थे। और गुलशन गौहर्स के दोनों ओपनर्स तैमूर मिर्ज़ा और बहादुर लेफ्टी विकेट पे पहुंच रहे हैं। दोनों ही बड़े जाने पहचाने खिलाड़ी हैं, दोनों ही बड़े नाम हैं। और मुझे कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ बुखारी, जो कि ऑल द वे फ्रॉम गुजरात आए हैं KTPL सीज़न 3 को कवर करने के लिए। खुश आमदीद। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच और वेलकम एवरीबॉडी। सभी दोस्तों को खुश आमदीद कहा जाता है। KTPL 2023 तीसरा सीज़न और आज 5वीं रात है और यहाँ पर ज़बरदस्त मुकाबला जात जो है उनका इनेकाद का सिलसिला जारी व सारी है। तो यहाँ पर पाकिस्तान टेबल क्रिकेट के सरकर्दा नुमायाँ खिलाड़ी जो हैं बिल्कुल नंबर आज़मा हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, और यहाँ पर बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की गई है। जोहर नसीर अपने खिलाड़ियों को इशारे कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि अपनी अपनी पोजीशंस पर जाएं। ये हम फील्ड देख सकते हैं। बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए ऑफ साइड में पॉइंट है, कवर है, बिड ऑफ जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा कवर की जानिब हटा हुआ है। एक खिलाड़ी को मूव किया जा रहा है ऑफ साइड से ऑन साइड पे, देखते हैं कहाँ इनको खड़ा किया जाता है। पॉइंट अंपायर के पीछे एक खिलाड़ी बैकवर्ड पोजीशन पे अब खड़ा हो गया है और ये खिलाड़ी स्टिल वॉक करके आ रहे हैं। आई थिंक ये ऑन साइड पे आ जाएंगे। ऑन साइड पे ऑलरेडी मैं देख सकता हूँ कि स्क्वायर लेग है, फाइन लेग और थर्ड मैन सर्कल के अंदर है। अगर बॉलर की बहुत ज़्यादा पेस होगी तो ये बन जाती हैं लेग स्लिप और स्लिप, और अक्सर बॉलर्स के पास पेस होती है जब बॉल कैरी करती है। तो शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट थर्ड मैन अगर बॉलर के पास पेस हो तो फिर वो लेग स्लिप और स्लिप बन जाती है। बहादुर और तैमूर मिर्ज़ा, जिस तरह मैंने जिक्र किया, बड़े नाम हैं टेप बॉल क्रिकेट के। तैमूर मिर्ज़ा जिन्हें TM भी कहा जाता है, लवंगली, और उनके साथ अब राना मोहसिन आपकी स्क्रीन पर लियारी लेजेंड्स के लिए ये बॉलिंग का आगाज़ करेंगे। तो 3 बड़े नाम 2 विकेट पे और 1 बॉल के साथ, क्या कहते हैं आसिफ? हाँ जी बिल्कुल, राना मोहसिन जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। पिछले 2 साल में पूरे पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेली है और ये ऑलराउंडर हैं, पाकिस्तान के नुमाया जो ऑलराउंडर्स हैं उनमें शुमार होता है। और यहाँ पर नजर इंतखाब जो है वो ठहरी है कप्तान की, और पहला बॉल जो है पहला ओवर थमा दिया है उनको, और सामने है मद्दे मुकाबिल कप्तान बहादुर लेफ्टी। बहादुर लेफ्टी स्ट्राइक पर तैयार। अंपायर ने कहा लेट्स प्ले जेंटलमैन। राना मोहसिन फार एंड से पहली बॉल लेकर और पहली गेंद को स्विंग कर दिया लॉन्ग लेग और फाइन लेग के दरमियान, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, छक्का। हाँ जी बिल्कुल, इस तरह की अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो फिर बहादुर लेफ्टी जो कि बहुत ही जारे मिजाजी के लिए जाने जाते हैं, ये देखिए बिल्कुल डायरेक्शन ख़राब थी, छोटा बॉल था और इसको बिल्कुल बैकवर्ड स्क्वायर के पार पहुंचा दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत आगाज़ यहाँ पर बहादुर लेफ्टी। बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया, हल्का सा स्विवल किया। बॉडी वाइज बहुत फिट हैं, बड़ी इलास्टिसिटी है इनके जिस्म में, और बहुत जल्द उन्होंने लेंथ को पढ़ लिया था और बैक फुट पे आते हुए लॉन्ग लेग पोजीशन पे खूबसूरत छक्का लगाने में कामयाब हुए। राना मोहसिन पे प्रेशर होगा, स्ट्रेट अवे छक्का कंसीड कर दिया है। क्योंकि टेप बॉल में चौके छक्के का इतना माइंड बॉलर करते भी नहीं, क्योंकि ये उनको भी पता है कि जाहिर है कि बैट्समैन जो है फूल नहीं बरसाएंगे, उन पे आते ही अटैक करेंगे। और 105 रन बोर्ड पे 6 ओवर्स में उनके बल्लेबाजों ने भी लगाए हैं। अगली गेंद, एक और ऊंचा स्ट्रोक, और गेंद एक बार फिर बाउंड्री से बाहर। एक खूबसूरत जोरदार और बड़ा छक्का इस मर्तबा बहादुर का बहादुराना आगाज। हाँ जी, बहादुर लेफ्टी, अगर मैं पिछले 1.5 माह की बात करूं तो गालोच प्रीमियर लीग सवात में इनकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही लाजवाब रही। फिर ज़िला गुजरात में हमाद मुस्तफा मरहूम मेमोरियल टेबल क्रिकेट टूर्नामेंट में इनके जो बल्लेबाजी थी उससे शायकीन क्रिकेट ने खूब मज़ा उठाया, और यहाँ पर उनका जो इंटेंट है बहुत ही लाजवाब है। ये लुक एट दैट, यहाँ पर जो है वो शायकीन क्रिकेट से और अपने जो साथी खिलाड़ी हैं उनसे खूब दाद वसूल कर रहे हैं। जी, तारिक हारून तालियां बजा रहे थे जो इनकी टीम के साथ हैं। बड़े ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेटर पाकिस्तान के। एक और ऊंचा शॉट, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का, छक्कों की हैट्रिक। बहादुर लेफ्टी हकीकी मानों में इस वक्त बड़ी तूफानी और तबाहकुन बैटिंग कर रहे हैं। राना मोहसिन पे तमाम तर दबाव।
हाँ जी बिल्कुल, जो कराची की मशहूर व मरूफ फ्रेंचाइज है, बिल्कुल शेरवानी स्पोर्ट्स की जानिब से ये नुमाइंदगी करते हैं और पूरे KPK में जाकर ये खेलते हैं, पूरे पाकिस्तान में जाकर ये खेलते हैं और अब की बार 1, 2 और 3 छक्के लगाकर दक बिठा दी है और यहाँ पर धुआंधार बल्लेबाजी का सिलसिला जारी है। इस मरतबा बल्ला स्विंग किया, बैट और गेंद के दरमियान कोई मुलाकात नहीं, मगर अच्छा ही समझेंगे कि मुलाकात नहीं हुई क्योंकि उन्हें 2 तोहफे के रन मिल गए हैं और 2 वाइड के रन के साथ स्कोर आगे बढ़ जाएगा। ये बड़ी सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं और मेरी तरह कुछ जिस्मानी तौर पे ये भारी भी हैं। ओह, हैव अ नाइस इवनिंग। ऑफ कोर्स यहाँ पर बिल्कुल बहादुर एक दफा फिर हैं तैयार सामना करने के लिए राना मोहसिन। इस गेंद को खेलने गए थे ऑन साइड पे, गेंद एक बार फिर लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल के 2 रन और इन 2 रन के साथ स्कोर हो गया 22। जी बिल्कुल, यहाँ पर 22 रन बनाए गए हैं और 105 के तौक़ुब में देखते हैं कि कितने रन जो है बनाए जाते हैं। जिस तरह का आगाज़ किया गया है यहाँ पर अभी तक बहुत ही लाजवाब बेमिसाल बल्लेबाजी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का रोल प्ले करते हुए बहादुर लेफ्टी एक दफ़ा फिर। राना इस मरतबा खूबसूरत शॉट, फ्लिक ऑफ द रिस्ट और गेंद गई डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान, बाउंड्री से बाहर, ऑलमोस्ट स्क्वायर लेग पे छक्का। बिल्कुल, एक बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ अगर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो फिर आपकी जो लाइन और लेंथ है, जो डायरेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती है और यहाँ पर अगर आप इस तरह की बॉलिंग करेंगे तो फिर आपको पनिश ज़रूर मिलेगी। और ये देखें, जस्ट फ्लिक ऑफ हिज रिस्ट, ओवर एंड ओवर, स्क्वायर लेग बाउंड्री, 1 बाउंस, 4 रन के लिए। That was a boundary, not 6, लेकिन स्टिल बहादुर जो हैं बड़ी जारहाना बैटिंग करें, 22 रन पे पहुंच गए हैं और मजमूई स्कोर 26 रन पे पहुंच गया है महज 4 गेंदों पे। 79 रन अभी भी पीछे है 105 रन से, जो लियारी लेजेंड्स का स्कोर है पहली इनिंग्स में। लेग स्टंप पर एक और वाइड बॉल और यहाँ पर वाइड बॉल तो ज़रूर है लेकिन बहादुर खुश नहीं है। यहाँ पर उनका ख्याल था कि ये एक और मौका ज़रूर था उनके लिए गेंद को एक दफ़ा फिर बाहर पहुँचाने का और 4 गेंदों में 28 रन दे दिए गए। ये बहुत ही महंगा सौदा यहाँ पर किया है राना मोहसिन ने। एक दफ़ा फिर नई सोचो विचार के बाद नए अज़म के साथ आगे बढ़ने का इरादा करते हुए दौड़ना शुरू किया है। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, इस मरतबा बैट स्विंग किया लेकिन बैट और गेंद के दरमियान कोई राब्ता मुमकिन नहीं हुआ। गेंद की विकेट कीपर के पास डॉट बॉल। हाँ जी बिल्कुल, आखिर डॉट बॉल जरूर हमें देखने को मिला है। स्क्रीन पर इस वक्त हाई प्रोफाइल बल्लेबाज लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एहसन चिट्टा, जो कि यकीनन इसके बाद जो है बैटिंग बनाएंगे। राहील वहाँ पर मौजूद हैं। सो दोनों बल्लेबाजों ने आपस में बातचीत ज़रूर कर ली है और यकीनन मैच तैमूर की जानिब से यही कुछ कहा गया होगा कि काफ़ी ज़्यादा रन बनाए गए हैं और अब विकेट नहीं गंवाना है क्योंकि पहले इनिंग्स में लीड ले लेना जो है वो इस बात की ज़मानत ज़रूर समझी जाएगी इस बॉल के बाद। इस गेंद को ऑन साइड पे वैक करने गए, एक बार फिर बीट हुए। कुछ अच्छा कमबैक आखिरी 2-3 गेंदों पर राना मोहसिन का, मगर स्टिल बड़ा महंगा ओवर। 28 रन बने पहले ओवर के बाद, 28 पे कोई आउट नहीं। हाँ जी बिल्कुल, तैमूर मिर्ज़ा जिन्होंने अभी तक कोई किसी गेंद का सामना नहीं किया है और अब वो सामने आएंगे और इस लीग में बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की गई है मिर्ज़ा तैमूर की जानिब से। और इस ग्राउंड में अगर आप सबसे ज़्यादा जो फैंस देखते हैं तो वो मिर्ज़ा तैमूर के फैंस पाए जाते हैं जिन्होंने अभी तक फुल सपोर्ट किया है और मिर्ज़ा तैमूर ने भी उनको मायूस बिल्कुल भी नहीं किया है। सो 28 बिना कोई विकेट गंवाए पहले ओवर का खेल खत्म। अब तैमूर मिर्ज़ा पहली मरतबा स्ट्राइक पर होंगे। सोहेल के हाथ में गेंद है, सोहेल लेफ्टी ने भी कहा जाता है। इन खिलाड़ियों के निक नेम हैं, कोई लेफ्टी है, कोई छोटा विक्की है, कोई जो है वो कुछ और उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो निक नेम के साथ इनको पुकारा जाता है। 77 रन्स का भी खसारा है पहली इनिंग्स की बुनियाद पर, मगर वो 77 रन्स बनाने के लिए 5 ओवर्स यानी 30 गेंदें इनके पास हैं और लेट्स सी कि उन 30 गेंदों पे कितने रन्स बना सकेगी गुलशन गौहर की टीम। अब तक इनकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही है। तैमूर मिर्ज़ा ने 3 हाफ सेंचुरियां कर रखी हैं इस इवेंट में। पहली गेंद
तैमूर मिर्जा ने कहा मैं यहां पहुंच चुका हूं डीएचए मोइन खान एकेडमी में, गेंद ग्राउंड से बाहर, छक्का। जी बिल्कुल हाई प्रोफाइल बल्लेबाज और इनफॉर्म बल्लेबाज हैं मिर्जा तैमूर। तो बिल्कुल इस तरह की अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो फिर आपको जाना पड़ेगा मैक्सिमम के लिए, और बिल्कुल कोई किसी दिक्कत का मुजाहरा जो है वो सामना नहीं करना पड़ा है यहाँ पर मिर्जा तैमूर को। ये देखें बिल्कुल बुलंदो बाला, एक और छक्का, पहली गेंद पर ही छक्का चटका दिया है। अगली गेंद, अच्छी गेंद, गुड कमबैक। इस मरतबा गेंद टांगों पे लगी ऐसा महसूस होता है, प्रॉब्ली शायद इनसाइड एज भी हो। बहरहाल इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डॉट बॉल। हाँ जी, ये बॉल कदरे नीचा रहा है और आखिरी लम्हात पर जो है वो बॉल को अंदर लाने में कामयाब ज़रूर हुए हैं। ऊपर से बल्ला घुमाया मिर्जा तैमूर ने और बिल्कुल भी हाथ में कुछ नहीं आया है, डॉट बॉल ज़रूर आया है। एनीवेज एक लंबे टाइम के बाद जो है डॉट बॉल देखने को मिला है। पहला काफ़ी महंगा ओवर रहा था यहाँ पर। सोहेल एक दफ़ा फिर तैयार हैं। लेग साइड पे गेंद, फाइन लेग ने गेंद को रोक लिया है। अंपायर की जानिब से भी कोई इशारा मौसूल नहीं हुआ, तो एक और डॉट बॉल। सोहेल 2 बड़ी अहम डॉट बॉलिंग करने में कामयाब हो गए हैं। हाँ जी, जो बॉल है अब की बार फिर नीचा रहा था और लेग्स पर ब्रश करता हुआ। सो देखते हैं कि मिर्जा तैमूर यहाँ पर जो एक रेपुटेशन अपनी बना चुके हैं तो इसको किस तरह जारी रखते हैं। एक दफ़ा फिर सोहेल हैं तैयार अगले बॉल के लिए। बड़ी अच्छी बॉलिंग, जितनी तारीफ करें वो कम है, क्योंकि बॉलिंग किसी और को नहीं तैमूर मिर्जा को कर रहे हैं, मगर 3 मुसलसल अच्छी गेंदें करने में कामयाब हुए हैं। 2 डॉट्स और इस गेंद पे भी एक लेग बाय का रन बना, तो वेल डन बाय सोहेल। हाँ जी बिल्कुल, जब आपके मेन बॉलर जो हैं पहली 4 गेंदों में 28 रन दे देते हैं तो फिर अगले बॉलर के लिए मुश्किलात ज़रूर हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर पहली गेंद पर छक्का खाने के बावजूद बेहतरीन वापसी की गई है सोहेल की जानिब से। सो देखते हैं कि यहाँ पर बहादुर टीम कैप्टन कैसा सलूक करते हैं उनके खिलाफ, जो कि अभी तक शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहादुर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, 22 रन बनाए हैं महज 6 गेंदों पर, 3 छक्के और 1 चौका उनकी इनिंग्स का हिस्सा। और इस मरतबा भी उन्होंने गेंद को बैक कर दिया है। फील्डर दौड़े जरूर मगर गेंद को रोक नहीं सके और गेंद बाउंड्री से बाहर, एक और चौका। बिल्कुल बैट की रेंज में अगर बॉल आएगा, काफ़ी लॉन्ग हैंडल जो है वो यूज़ करते हैं। और ये देखें बिल्कुल स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार पहुंचाने की कोशिश थी और 1 बाउंस 4। फील्डर बिल्कुल बॉल के पीछे जा सकते थे, रोक नहीं सकते थे। शबान तो वाज द फील्डर। 39 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। 1 ओवर और 5 गेंदों के बाद 66 रन और चाहिए पहली इनिंग्स के स्कोर को बराबर करने के लिए। विकेट कीपर, फाइन लेग, सभी से गेंद निकल गई और वाइड की सूरत में 5 रन के लिए फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। इनफैक्ट 6 रन मिलेंगे क्योंकि वाइड की 2 रन की पेनल्टी है और साथ में ये 4 रन भी हुए। अब देखिए 105 रन जो हैं ये बिल्कुल भी बुरे रन नहीं हैं और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर मौका ज़रूर है बाउंड्रीज और अच्छी फील्डिंग करके आप जो है वो प्रेशर बढ़ा सकते हैं। और यकीनन बल्लेबाज के जब स्ट्रोक्स रोके जाएंगे तो फिर गलती ज़रूर वो करेंगे। एक दफ़ा फिर बहादुर सामना करने के लिए तैयार। इस मरतबा अच्छी गेंद, बड़ा अच्छा ओवर मैं समझता हूँ। 16 रन इसमें ज़रूर आए, लेकिन तारीफ करनी होगी सोहेल की। 2 ओवर के बाद 45 पे कोई आउट नहीं। हाँ जी, 2 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और 22.50 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाए गए हैं। पहली 4 गेंदों में 28 रन आए थे और पहली 7 गेंदों में 34 रन आ गए थे। इसका मतलब पिछली 5 गेंदों में सिर्फ 11 ही रन दिए हैं सोहेल। बड़ी शानदार गेंदबाजी, सभी तक विकेट नहीं गंवाया है और यहाँ पर कप्तान ने सर जोड़ा है अपने खिलाड़ियों के साथ और क्या मंसूबाबंदी की गई है कि बॉल किसको थमाया जाए। निज़ार लेफ्टी केपीके से ताल्लुक है और निज़ार जो है ये पाकिस्तान टेबल क्रिकेट के सरकर्दा जो 5 ऑलराउंडर्स हैं उनमें शुमार होता है। बहुत सारे स्पॉन्सर्स KTPL सीजन 3 के साथ जुड़े हुए हैं। ये आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए आप देख रहे हैं। इन स्पॉन्सर्स के हम बहुत मशकूर हैं जिन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में स्पॉन्सरशिप दी है KTPL सीजन 3 को। UBL अमीन KTPL सीजन 3 अपने तमाम तर रंगों के साथ DHA मोइन खान एकेडमी में जारी है। निज़ार लेफ्टी बॉलिंग करने के लिए आए हैं, ये भी लेफ्ट आर्म
पेस बॉलर हैं, यही वजह है कि इन्हें लेफ्टी कहा जाता है। और ये वो बॉलर हैं जिनका आपने जिस तरह जिक्र किया कि काफ़ी कामयाबी के साथ बॉलिंग करते आए हैं, लेकिन बॉलिंग करेंगे तैमूर मिर्ज़ा को, जो 4 गेंदें खेलने के बाद 6 रन्स पर नॉट आउट हैं। विकेट कीपर स्टंप्स के पीछे मौजूद हैं, उनके बिल्कुल दाएं और बाएं 2 फील्डर मौजूद, शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन लेग पे। देन गली भी मौजूद है ऑफ साइड मैन कवर्स। इस मरतबा ऊंचा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की जानिब, गेंद ने बाउंस किया, फील्डर के जानिब गई, उन्होंने गेंद को रोका। 1 ही रन मिलेगा तैमूर को। हाँ जी बिल्कुल, निज़ार लेफ्टी की जानिब से यहाँ पर गेंद को बाहर निकालने में वो कामयाब ज़रूर हुए थे, और तैमूर मिर्ज़ा जो हैं वो इसको लॉन्च नहीं कर पाए ठीक तरीके से। सीधा फील्डर के हाथों में वहाँ पर 1 रन ज़रूर बनेगा। KTPL प्रीमियर लीग जो है उसने बिल्कुल नए रंग जो हैं वो यहाँ पर दिखा दिए हैं, और पाकिस्तान टेबल क्रिकेट को नई राहों पर जो है वो गामजन किया है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टिंग टेबल क्रिकेट में आई है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर KTPL मैनेजमेंट की जानिब से बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश की गई है, जिसकी शदीद ज़रूरत थी। सो निज़ार एक दफ़ा फिर तैयार, फील्डिंग से कुछ नाखुश नज़र आते हैं और एडजस्टमेंट जारी है। बहादुर 26 रन्स पर नॉट आउट हैं, 3 छक्के और 2 चौके उनकी इनिंग्स का हिस्सा हैं। बड़ा खूबसूरत उनका स्टांस, लॉन्ग हैंडल से बैट को पकड़ते हैं। इस गेंद को ऑन साइड में खेला है, फील्डर मौजूद है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे। 1 रन का इजाफा आसानी से। हाँ जी, काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर ब्रेक लगाने में कामयाब हो गए हैं गेंदबाज, क्योंकि विकेट अभी तक नहीं खोया है। लेकिन मैंने पहले भी ये कहा है कि 105 रन्स एक ऐसे जो है वो एक ऐसा मजमूआ है कि जहाँ पर आप लीड भी हासिल कर सकते हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, मिर्ज़ा तैमूर ने पहली गेंद पर सलामी ज़रूर पेश की छक्के की सूरत में। जोहर नसीर चेयरमैन भी हैं KTPL के, बहुत एक्टिव हैं और इस मैच में भी पूरी जान के साथ जो है वो अपने खिलाड़ियों को मोबिलाइज कर रहे हैं। हर चीज़ से पूरी तरह से आगाह हैं कि कौन सा फील्डर कहाँ पे खड़ा है, ऑफ और ऑन पे कितने फील्डर हैं, और अच्छी बैटिंग भी ये करते हैं। हमने देखा था एग्जीबिशन मैच में, बड़े ज़बरदस्त छक्के लगाए थे। रूहे रवां हैं KTPL के ये। इस गेंद को तैमूर मिर्जा ने स्विंग कर दिया, वाइड ऑफ मिड विकेट, बाउंड्री से बाहर, 4 रन्स। हाँ जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा पावर होती है जब मिर्ज़ा तैमूर बल्ले के साथ कनेक्शन करते हैं गेंद को, तो रॉकेट की मानिद बॉल बाउंड्री के पार जाने में ज़्यादा देर नहीं लेता है। काफ़ी तेज़ शॉट था, फील्डर सिर्फ हसरत भरी निगाहों से गेंद को ज़्यादा वो देख सकते थे। ये देखें, बहुत तेज़ शॉट। सो छक्के के बाद अब आया है चौका काफ़ी देर के बाद, और इस दौरान नो बॉल, सोने पे सुहागा बैट्समैनों के लिए। 53 रन्स बन चुके हैं, तीसरे ओवर का खेल जारी है। फ्री हिट आ रही है तैमूर मिर्जा के लिए। स्वाय ऑब्स्ट्रक्शन और रन आउट के आउट नहीं हो सकते बैट्समैन इस गेंद पे। ऑब्स्ट्रक्शन जो कि रूल नंबर 37.2 है, वो भी ऐसा एक रूल है जहां आप फ्री हिट पे आउट हो सकते हैं और फिर रन आउट हो सकते हैं। दीज आर द 2 वेज टू गेट आउट ऑन अ फ्री हिट। तैमूर मिर्जा का ऊंचा लंबा खूबसूरत शॉट, और गेंद काफी दूर जाकर गिरी, बाउंड्री से बाहर, छक्का। हाँ जी, शायकीन क्रिकेट कुछ इस तरह के शॉट्स देखने के मुतमन्नी रहते हैं और हर वक्त बेकरार रहते हैं। जब मिर्जा तैमूर जैसे बल्लेबाज विकेट पर मौजूद होंगे तो उनका ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं रहता है। क्या खूबसूरत दिलकश अंदाज में गेंद को सैर कराई है मीलों दूर, बहुत ही दूर, 6 रन के लिए। तैमूर मिर्जा अपने मखसूस अंदाज में अब 59 रन हो चुके हैं। एक और बड़ा जोरदार और खूबसूरत शॉट। तैमूर मिर्जा हैविंग अ गो एट एवरीथिंग। अब रन्स उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक बन रहे हैं। ये तो 12 रन होने चाहिए, ऑफ कोर्स ये 12 रन होने चाहिए, लेकिन कानूनी इजाजत नहीं देता है और 6 ही रन पर इक्तफा करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया शॉट है ये फ्लैट 6 से होता हुआ राइज अप होता हुआ बहुत दूर। एक और स्पेशल शॉट, स्पेशल बैट्समैन मिर्जा तैमूर की जानिब से। आगे गेंद गिराई उनको, और आगे गिराई हुई गेंदों को बिल्कुल भी स्पेयर नहीं करता इन जैसा बैट्समैन। इस मर्तबा भी गेंद को उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद हैं
बाउंस के बाद गेंद उनके पास गई, एक ही रन मिलेगा, कुछ राहत मिलेगी निज़ार को। दाऊद मोहम्मद सुलेमान जिनका ताल्लुक सवात के पीके से है, गेंद को फील्ड किया है और सिर्फ एक ही रन का इजाफा है। सो इस वक्त 66 पर कोई विकेट नहीं खोया गया है। बहादुर ने 9 गेंदों में 27 रन बनाए हैं, जबकि 9 ही गेंदों में 24 रन बना रखे हैं। द ब्रांड ऑफ पाकिस्तान टेबल क्रिकेट, तैमूर मिर्जा। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, अगर वाइड या नो बॉल ना हुई। 27 रन पे बहादुर नॉट आउट हैं, तैमूर 24 रन पे। दोनों बैट्समैन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस गेंद को स्विंग कर दिया है ऑन साइड पे बहादुर लेफ्टी ने, और नतीजा सिर्फ एक होगा और वो है छक्का। बड़ा शानदार अंदाज तीसरे ओवर के खत्म होने का बैटिंग साइड के लिए। 3 ओवर्स के बाद 72 पे कोई आउट नहीं, और इससे कबल के चौथा ओवर शुरू हो। आपको ज्वाइन करेंगे आप जीशान खालिद और कायनात इम्तियाज। It's 72 without a wicket after the first 3 overs of this innings for Gulshan Glowers, who are once again at the top of the game so far. I would like to welcome Kainat Imtiaz alongside me in the commentary box. Kainat, although Lyari Legends scored 105 in the first innings, and by no stretch of imagination it was a low score, but look at the way they have started Gulshan Gohars, and once again it's Taimur Mirza who is going all guns blazing along with his partner Bahadur lefty. Great start by Gulshan Gohars, and again I'm really excited to see Taimur and Bahadur performing for their side again, as this is a great batting pair as an opener. Yeah, I still get the feeling that the side that is going to lift the trophy at the end of the tournament is going to be the one which has a very strong opening pair. We have seen a very strong opening pair for Gulshan Glowers, where Bahadur lefty and Taimur Mirza come out to open the batting, and we saw last night where Clinton Popular went all berserk against the opposition. A pickup shot on the leg side, got an inside half of the bat. Will get just a run, Taimur Mirza. They are struggling though a little bit, as Lyari are getting that line and length accurate on every delivery. But again, they're surviving. The batters are surviving and getting on. And if we talk about the way they have batted so far, they haven't given any chance to the fielding side, although we saw so many catches being taken from Gulshan Gohars in the first innings. That shows how well they bowled as well. At one stage, even the left-arm seamer was on a hat-trick as well. But so far, none of the bowlers have been able to create any sort of impact for Lyari Legends. Full toss getting an inside edge, and it was missed by the wicket keeper. The short fine leg is going to cut that one off, so it's going to be yet another single to Bahadur lefty. The good thing about the batting side right now is that this rotating their strike on every delivery is not that they're blocking it. Even if it's not a boundary, it's always a single. So it's always the positive that you need to rotate your strike. Yeah, they're just giving some respect to the left-arm seamer Suhail. It was touch expensive in that first over when he went for 15 runs. So far has just given away 2 in the first 2 deliveries. But we can expect some healthy lead tonight for Gulshan Gohars, because they still have more than 2 overs remaining and they're just trailed by 31. Slower one, picked up on the leg side. It's up in the air. There is a fielder who is trying to get underneath that, and he takes it. They needed that, and they have made a very strong breakthrough. Taimur Mirza has now been dismissed. This is only because of the persistent bowling the Lyari Legends are offering to the batters right now. And again, it was a little bit of slow delivery. I think the pitch was a little bit gripping the ball towards itself and did not get exactly right. And Taimur Mirza is gone for 24 on 11 deliveries. 74 for 1, Gulshan Gohars.
It's 74 for 1. We just witnessed the departure of Taimur Mirza. Score 24. Now Ehsan Chitta comes back at number 3. Well, he is also a very dangerous customer when you talk about table cricket. He hasn't done much of the scoring so far for Gulshan Gohars because the majority of the runs have been scored by Taimur Mirza at the top of the order. He must be disappointed. So far he has scored 3 half centuries in the 2 games that they have played, Gulshan Gohars. You just get the feeling that he might have missed out tonight. Good start this from Sohail. Just 2 runs and a wicket of the first 3 balls. Good ball once again. Was there an inside edge or has it knocked the stumps? Yes, he has. Well, there was definitely some bat involved, but the ball might have rolled back onto the off stump. 2 wickets now in 2 balls for Sohail. And Lyari legends are making their way back into this game. What an excellent Yorker by the bowler. And on exactly on the spot. And he knows that is how important this wicket is. Great bowling by Lyari legends. Yeah, another superstar dismissed. Ehsan Chitta walking back without even troubling the scorers. It's 74 now for 2. .74 for 2. 2 main batters now dismissed for Gulshan Gohars. Sohail has just picked up his second. Ilyas, the new batter in, Ilyas Jani. It's a hat-trick ball. A slower one. Well defended. You don't usually see batters defending a ball in tape ball cricket, but since it was a hat-trick ball, so he did not want to give another wicket to the bowling side. Meanwhile, congratulations, Kainat. Pakistan women's side won yet another T20 game against New Zealand. In fact, they've won the series now. Well, thank you so much. I'm quite proud of the squad right now, as they have been performing exceptionally well throughout. Yeah, winning a series against New Zealand, that too in New Zealand, not an easy job. Once again, playing a forward defensive stroke, will get just a single. There is a shy at the bowler's end. They might collect an extra run on the overthrow. This time there might be an opportunity at the wicket-keeper's end. I think he has been dismissed. Yes, the finger has been raised already. It's Ilyas who is going to walk back to the pavilion. They did not need that. They had already got 2 runs. There was no way they could have come back for the 3rd. There you see. It wasn't gathered by the bowler. Then they went for the 2nd run. And this time the wicketkeeper just taking the bails off in a flash. He wasn't even in the frame. 3 wickets in this over for Lyari legends. The umpire did not even bother to refer it upstairs. Ilyas Jani walking back after scoring just 1, and it's 75 for 3. What an exceptional over that was from Sohail. Didn't concede many runs, picked up 2 wickets, and they managed to pick up another one on the last ball, courtesy of a run out at the wicket-keeper's end. Ehsan Chitta looks clearly disappointed. Well, he had the opportunity of scoring some runs here tonight for Gulshan Gohars, but he was dismissed of the very first ball. Raza Chandio has now come into bat at number 5. We have seen almost every side played at least 1 game so far in this tournament, Kanyat. Which team has impressed you a lot? Yeah, there are some superstars playing for Gulshan Gohars like Bahadur Lefty and Taimur Mirza, but apart from them, which side do you think has really got a chance of lifting the trophy at the end? Well, on the first end, if you talk about DHA Dabangs, they had really impressed me on the opening game. But if I say it, every team has equal chance to win this trophy, as it's not only about the superstars that are playing in any squad, but again, it's a day game and anybody can win and make their team win. Rana is going to start his 2nd over. He gave away 28 runs of the first over of the innings. It's an outside edge that has been taken.
What an interesting passage of play this has been for Lyari Legends. They picked up 3 in the last over. They have started this over with yet another wicket. And tell you what, it's Bahadur lefty who has now been dismissed. What a game it is changing to be. And again, it was taken a clean catch by the keeper. Bahadur was not expecting the ball to be so full. And quite a casual approach by the batter. Bahadur Ali is gone for 34 runs on 12 deliveries. 74 for 4, Gulshan Gohars. Yeah, it's 75 for 4. We just witnessed the departure of Bahadur lefty. And if you look at the replay again, he was just relying on the hand-eye coordination. There was not even a fraction of a free movement from the left-handed batter. Yes, sometimes it works when you come and talk about table cricket, but when it's a delivery that is fuller in length, Shiraz Ali, meanwhile, the new batter in at number 6, when the delivery is that fuller in length, you need to plant your front foot forwards. Even when you're looking to hit straight down the ground. You must know that better because you have played international cricket for Pakistan. Well, I think for him, he should have chosen the ball on merit. And he was going a little bit cross. Shouldn't have gone there as he had some responsibility from the squad. The 2 new batters now at the crease. Bowls a slower one outside the off stump now, Rana. There you see, that's how he lost his wicket, Bahadur lefty. And you see, he did not even move his feet. Like his back foot moved, but by that time he had already edged the ball. And his approach was to hit towards the mid-on or the mid-wicket region. But the ball was on his offside. A pickup shot on the leg side, but there is a fielder out there in the deep. A fumble will allow them to come back for the second. Now they've got themselves in a very strong position, Lyari Legends. They cannot afford to give away free runs like that. There you see Zohair Nasir, chairman of KTPL, who was also a part of Lyari Legend, was not happy with the effort down there from the fielder at deep mid-wicket. Should have been just a single, but a fumble allowed them to come back for the second. Well, clean pickups are really important if you want to go for a run out and save those singles, because here every run counts. Yeah, 9 legal deliveries now remaining in the innings of Gulshan Gohar. They still trail by 28. When the Moomers and Bahadur lefty were batting, it looked like they're going to get a very healthy lead. Slower delivery, good change up. He was once again too early into that stroke. Shiraz, the ball just hitting his hands and going softly to the wicket keeper. A little gripping, the pitch is gripping the ball a little bit. Well, that's the reason the ball is not coming on to the bat with that same pace. Yeah, we have seen some bowlers bowling into the pitch, making use of that pitch and getting some grip as well, because these table cricketers are more accustomed of playing on cement pitches, where the ball just comes onto bat so nicely with even bounce. We've seen some exceptional spells from the fast bowlers so far in this tournament. It's going to be a wide down the leg side. We saw a fifer from Majid Goli the other day. Waving the flag of Gulshan Gohar as one of their supporters. He must be very happy, not because of the way his team is performing right now, but the way the overall tournament has progressed. Still early days, it's just match number 8. Lots of excitement yet to come. But it's an achievement, a big achievement for Zohair Nasir and his entire team. Fuller getting a thickish outside edge. It's going to go past the wicketkeeper and then the short third. A very fortunate boundary this for Shiraz. Rana did nothing wrong on that ball. Well, surely it was a good delivery, and in between 2 fielders, that is one keeper and one fielder. Ooh, that was really close, but again, a great gap shot by the batter. A lucky shot, indeed. Yeah, would have been pleasing to the eye if he had managed to find the gap between the long on and long off fielder, but he somehow managed to hit it between the wicketkeeper and short third. The keeper also got a bit of deflection from his left hand, because of which the ball might deviated a bit. But still, a very good over so far, this from Rana. That's going to be another wide, and once again the ball is going to go way behind the fielder at short fine.
Might touch the boundary ropes as well. Yes, it did. Even the futsal skills could not save that boundary in the end. Well, runs are coming. That doesn't matter from where, but they have runs coming on the board. And this is very important for Lyari Legends. Again, they need to get that grip back on the ball. Although they had an extra fielder at fine leg deep at the boundary ropes, but even he couldn't stop that. Overall, it was a casual effort from the wicketkeeper as well. He did not went with full flow with both his hands. Tried to stop it with his right hand, couldn't do it in the end. It was turning out to be a decent over from Rana until that last ball, because they got 2 runs on the wide and that ball hit the boundary ropes as well. So 6 more added to the total. And that is reducing the deficit of the first innings for Gulshan Gohars. It's going to be another one. Once again, the ball has gone past the fielder at short third. I'm feeling very sorry for the wicketkeeper. He could not even say anything to the short third, because that's Zuhair Nasir standing there. Well, I don't think he's going to say anything to Zuhair Nasir. But again, the bowler has completely lost his line, and 3 consecutive boundaries on a wide delivery. Very expensive over. We were just talking about how Lyari Legends are on top at the moment. But again, Gulshan Gohars, without doing anything and getting the runs from behind the stump, are back on track. Yeah, they were trailing by 30 runs before the start of this over. They have already got 20. Majority of them have come because of the extra runs that have been given by Rana. He needs to finish off the over well now. A slower one. Good change up. Should have done that way earlier, Rana, in this over. 5 done, it's 95 for 4. Geo Super obviously being the broadcasting partner of this KTPL Season 3. Sports Media Frontier is one of the sponsors. And if we talk about the other sponsors, Defence Housing Authority, Pathways Global Education. Well, DHS City, and these are the proud sponsors of KTPL Season 3. As we all know, sponsors are so important to run an event. And we have so far been very successful with all the help of these sponsors, the DHA, DCK, and so of course it's really important for the sponsors to be involved in any big league and event. Yeah, definitely. The organizers are always the backbone whenever it comes to a big event. And we talk about sponsors, they are the pillars of every tournament of such magnitude. Vital tea as well. Although we are still waiting for our first cup of tea. Let's come back to the game. It's Shah Jahan Mirjur who's going to be bowling the last over of the innings. They just trailed by 10 runs. Gulshan Gohar, so it's a neck and neck competition so far between these two sides. It has been a roller coaster of an innings for Gulshan Gohars, because they started off very well when Bahadur lefty and Taimur Mirza were batting, but then they lost their way a bit and they lost few wickets towards the end. And the last over where they managed to score 20 runs, now they have a chance of getting a healthy lead in this last over. Slower one might be given as a wide. In fact, it has not been. Although the batter was expecting the umpire to stretch his arm, but the ball might have just moved away after pitching. The ball just moved away after pitching, but it was not a wide, and a good decision by the umpire. Kainat, you have played international cricket. How does a player feel whenever the decision does not go in your way, especially when the match is going down to the wire, whenever it's a crunch situation in any game? Well, depending on the decision, what it is. If it's not a wide, it's not a wide. I usually ask my non-striker if it was a wide, because I think we believe them more than the umpires sometimes. Slow one picked up on the leg side. It's up in the air. There is a fielder who was initially watching the ball. Well, he's still watching, but this time over the boundary ropes. A 6 to Raza, and 100 comes up for Gulshan Gohars. These are some important runs. It's for Gulshan Gohars. And again, a full swing of the bat, extending his arms
just hitting it out of the park. And the previous option was the right one by bowling it wider outside the off time. This time he just delivered in the slot for the right-hander. And it comes naturally when you are looking to swing the ball on the leg side, especially when it comes to tape ball cricket. Still trailed by 4, Gulshan Gohars. That's a good ball. It's a really good ball. This time the ball just came back in after pitching, but it was still well within the guidelines. It was a good line. Even the first delivery was on exactly the same line. And I think it's good for Gulshan Gohar that the other batters have gotten a chance to play on the ground. As we have seen previously, only Tehmoor and Bahadur were taking on all the show. Short. It has been pulled. Once again, it's in the air. Has it got the distance? I think it has. Just by the barest of margin, it went over the head of the fielder at long gone. They're trying their best to get that scorecard moving. And again, a back foot shot. Well, we have seen a lot of back foot shots in today's inning. Both the innings, actually. And it was a full-bladed shot towards the boundary. There's this strong breeze flowing across the ground as well, because of which the ball might have slowed down while it was in the air, but still just going over the boundary ropes. This time he has hit that over extra cover. Has he timed it well enough? Well, he's still running. There is a fielder who's getting underneath that, and there was no communication whatsoever. I think it was Qari Hamidullah and the other fielder, and they're going to collect another run on the overthrow. Oh my goodness, they're coming back for the another one. There might be a chance of a run out at the bowler's end. It's all happening. Finally they have managed to run a batter out. Well, such a chaos here right now. Missing that catch. It was almost a very easy catch. No, somebody has to take the responsibility. And again, both the batters on the same end, but we don't see anybody coming behind the wicket. And finally, a fielder came to do his job, and the batter was given out. Another wicket has gone down, the 5th of the night for Gulshan Gohar. Shiraz Ali walking back. It's 110 for 5. Well, talking about both these batters getting stranded at one end, we have seen that quite a number of occasions when it comes to Pakistan cricket. So the last ball of the innings coming up. Gulshan Gohar's just lead by 5. It's a full toss. Picked away on the leg side. That's going to go one bounce into the fence. Not a good way to end the innings from Shah Jahan. It was a full toss on leg stump. Arju, the new batter in, just facing his first delivery, just helping the ball on its way down the leg side. Easy pickings even for the new batter. There was no fielder down there on the leg side. So once you get a bit of bat onto it, you're always going to get some runs. So 19 runs coming in the last over from Shah Jahan. Gulshan Gohars are going to end their innings on 114 for 5. They lead by 9 runs. But I still believe it was a job well done from the bowling side. Especially because of the start that Tehmoor Mirza and Bahadur lefty provided to the batting side. If we talk about the way they started, if we can look at the highlights package of Gulshan Gohars, the way they responded to the first innings score of 105 that was put on by Lyari legends. Both Bahadur lefty. In fact, Bahadur lefty got majority of the strike towards the start of the innings, and he did not hold himself back. And as soon as Tehmoor Mirza came on strike, whenever he got the opportunity to hit the long ball, he hit them. Although he was a little silent towards the start of the innings, he could just go 24. But even in that short innings, he created a sort of impact. That's how he lost his wicket. Tehmoor Mirza, he was looking to go towards the leg side, got in the deep. S. and Chitta came out to bat at number 3, was dismissed of the very first ball. Then there was another run out at the bowler's end. They lost 3 wickets in that particular over. Bahadur lefty was the next man to go, scored 34 tonight. Then they got few runs behind the wicket keeper. The last over making sure that Gulshan Gohar ended up with the lead. That was the last ball, which was once again help on the leg side. The Gulshan Gohars did bat well for the start of the innings, lost their way a bit towards the middle stages.
साथ ये बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और गेंद बल्ले के ऊपर अगर मिडल होती है तो फिर वो बाहर ही जाती है। बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं। जिस तरह आपने बयान किया कि एक तो बल्ले बहुत अच्छे हैं, अच्छा बॉल्स भी उस तरह की नहीं जिस ज़माने में हम लोग टेप बॉल खेल रहे थे। अशरफ पठान जो कि टीम के कैप्टन हैं लियारी लेजेंड्स के लिए, ये क्रीज पे मौजूद हैं। हमारे ज़माने में बॉल जो होती थी वो नरम होती थी, इतना ट्रैवल नहीं करती, ये बड़ी हार्ड बॉलें हैं। और एक तरह से अगर आपको याद हो बचपन में छलेडा जो हम खेलते थे उस तरह की ये बॉलें हैं। दूसरे बैट्समैन हसन लेफ्टी हैं, इनफैक्ट बॉलर हैं हसन लेफ्टी जो बॉलिंग का आगाज़ करेंगे, तो वो बहुत ट्रैवल करती हैं बॉलें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इस टूर्नामेंट में अगर आप छक्के चौके देख रहे हैं तो बॉलिंग का भी कुछ अच्छा मुजाहरा आपने देखा होगा। हसन लेफ्टी जो कि बाएं हाथ से बॉल डालते हैं, और ये हैं जनाब जोहेर, इस KTPL के रूहें रवा, लियारी लेजेंड्स के लिए खेल रहे हैं आज वैसे। और पहली ही गेंद को मोड़ दिया है ऑन साइड पर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हाँ, ये बड़ी कॉमन और आम बात है यहाँ DHA मोइन खान एकेडमी में। KTPL का ये मेन फीचर है, खासा है कि बैट्समैन पहली ही गेंद से ये करते हैं जो इन्होंने किया है। ऑफ स्टंप से बाहर से गेंद को ड्रैग किया, हल्का सा बेंड किया अपने घुटने को, और गेंद विजिट कर रही है बाउंड्री से बाहर की। नजीर अली जिन्होंने छक्के के साथ अकाउंट ओपन किया है। और अशरफ लेफ्टी के अगर हवाले से मैं बात करूं, जितना लंबा इनका एक्शन है उतनी तेज बॉल नहीं डाल रही है। एब्सोल्युटली राइट। और इस बार गेंद पांव पर लगी, लेकिन 1 रन का यहां दोनों बल्लेबाजों के लिए मौका था, तो सुख का सांस लिया होगा अशरफ लेफ्टी ने कि इस बार जो है वो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं गई। हर गेंद जिसके ऊपर छक्का चौका ना लगे वो तबर्रुकी है फील्डिंग साइड के लिए। जी हाँ, वो बहुत अच्छी गेंद है और उसको वेलकम करती है फील्डिंग साइड। इवन 2 रन 3 रन भी कहते हैं ठीक है यार, छक्का चौका तो नहीं लगा। और सही कहा आपने, बॉलर्स के बचने के चांसेस बहुत कम हैं इस खेल में। और जितनी राना अशफाक की आवाज़ में बेस है, जितना इनकी आवाज़ में जनाब गूंज है, ये गूंज हमें ग्राउंड पे भी दिखाई दे रही है। गेंद जब बल्ले के ऊपर लगती है तो गेंद सीधी फिर बाहर ही जाती है। ये आपकी मोहब्बत है याया भाई। तो पहली गेंद पर छक्के के बाद अच्छी रिकवरी की है अब तक इस ओवर में अशरफ लेफ्टी ने, क्योंकि जिस अंदाज में शुरुआत हुई है लियारी लेजेंड्स की, उसके बाद अगली 2 गेंदों पर 1-1 रन। जी हाँ, जिस तरह हम दोनों ही इस बात को कन्फेस कर रहे हैं कि अच्छी गेंदें कहलाती हैं, अच्छी गेंदें, और ये ख़वातीन आपस में गुफ्तगू भी कर रही हैं और साथ साथ मैच को भी एंजॉय कर रही हैं। लियारी लेजेंड्स को कम से कम 1 ओवर में 15-20 रन तो करने होंगे राणा साहब, क्योंकि टारगेट 100+ है और सिर्फ 36 गेंदों का मामला है। जी हाँ बिल्कुल, कम से कम 100 रन की जानिब जाना होगा एक अच्छा टारगेट देने के लिए सेकंड इनिंग्स में। और इस बार बैट्समैन भी बीट हुए, विकेट कीपर भी बीट हुए, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये गेंद रेंज से बाहर है, तो वाइट बॉल का इशारा उन्होंने दिया। और इसमें वाइट बॉल के और नो बॉल के भी 2-2 रन रखे गए हैं याया, तो ये भी फायदेमंद बैट्समैनों ही के लिए है, बॉलर के लिए ज़्यादा पेनलाइजेशन है। बिल्कुल ठीक है। और राना शॉट, एक चीज़ जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि टेप बॉल क्रिकेट की अगर आप बात करते हैं तो एक आम तासुर यही है कि जी टेप बॉल क्रिकेट में कहाँ जान लगती है, लेकिन फिटनेस का अगर आप स्टैंडर्ड देखें तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है KTPL सीजन 3 में। अशरफ लेफ्टी इस ओवर में 4थी मरतबा, और इस बार गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई काफी देर हवा में रही और बहुत ही उम्दा कैच। बड़ा उम्दा कैच, आसान नहीं है अंडर द नाइट स्काइज इस तरह के कैच पकड़ना, चूंकि गेंद हवा में थी और डीप स्क्वायर लेग की जानिब आनन फानन में पहुंच गई थी। ये हम दोबारा देख सकते हैं, इस गेंद को थोड़ा पीछे पिच किया, बैट्समैन ने स्विवल किया एक टांग पे और डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को पिक आउट किया, जिन्होंने हल्का सा जंप किया और फिर ये भी बात नज़र में रखी कि कहीं मैं बाहर तो नहीं या मैं टकरा तो नहीं गया बाउंड्री से। पहला नुकसान यहाँ पर लियारी लेजेंड्स को। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है राना अशफाक, वो ये कि इसको मैं ब्लेसिंग ही कहूँगा कि गेंद काफ़ी देर तक हवा में रही और गेंद वहीं जाके गिरी जहाँ पर फील्डर मौजूद थे। बिल्कुल, कंट्री साइड्स में ज़्यादा फील्डर होते नहीं है अमूमन पहले 1-2 ओवर में, मगर इन्होंने उसी फील्डर का इंतखाब किया जो बाउंड्री पे ही मौजूद थे। तो कहीं ना यहाँ कहीं पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ग़ालिबन अंपायर इस बात को मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि क्या ये क्लीन आउट है या नहीं है। काफ़ी दूर थे वो बाउंड्री लाइन से,
बट अंपायर कवायद ज़वाबित के मुताबिक अपना काम पूरा कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एरियल व्यू मोइन खान क्रिकेट एकेडमी DHA का, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इस मैच से लुत्फानंदोज़ होने के लिए मौजूद हैं और ये बैट्समैन अब तक अंपायर की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या उनको आया रुकना है या वापस जाना है। बिल्कुल, अंपायर्स ने टेलीविज़न अंपायर को जहमत दी है कि वो ज़रा चेक करें कि ये कहीं टकराए तो नहीं बाउंड्री से। हालांकि जिस तरह आपने कहा बिल्कुल वाजे है कि वो वेल इनसाइड हैं। ये देखें अपने आप को उन्होंने बैलेंस रखा है और वेल इनसाइड हैं। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह है कि जो उन्होंने एक्शन दिया है ना, उससे ये लगा कि वो बिल्कुल कर्टन के साथ लगे खड़े हैं। हालांकि कर्टन और उनके दरमियान कम से कम आधे गज का फासला तो मौजूद है और ये रेड लाइट वैसे भी अच्छी नहीं होती। रेड लाइट का इशारा ये है कि आप खतरे में है और बैट्समैन जो कि ऑलरेडी खतरे में आ चुके थे, थोड़ी उन्हें देर लगी ये समझने में कि वो एक्चुअली आउट हो गए। तो नजीर अली का डिपार्चर हो चुका है, पहला खिलाड़ी लियारी लेजेंड्स का आउट होकर पवेलियन। अशरफ लेफ्टी जिनको पहली गेंद पर छक्का लगा था, उसके बाद एक वाइड भी इन्होंने इस ओवर में किया है। एक ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री आना बहुत जरूरी है यहां पर लियारी लेजेंड्स के लिए। बिल्कुल, जिस तरह की क्रिकेट है इसका तकाजा है कि बाउंड्रीज लगती रहें और शायकीन क्रिकेट भी ये चाहते हैं कि छक्के और चौके लगें और छक्के और चौके देखने के लिए ही वो आते हैं। तो अब रिप्लेस किया है नजर अली को दाऊद सुलेमान ने। अशरफ लेफ्टी अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे इस ओवर में 5वीं मर्तबा और वाइड होगी मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल, लेग स्टंप से बाहर और लेग स्टंप के बाहर आपके पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं, हल्का सा भी गेंद बाहर। तो जिस तरह राना अशफाक ने बताया कि ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल क्रिकेट से हटकर क्रिकेट है, इसमें 2 इनिंग की मामलात हैं और वाइड के ऊपर 2 रन है, तो 2 रन का और इजाफा, तो 4 रन तो इस तरह वाइड की शक्ल में उन्होंने दे दिए। जी, और ये बड़े कॉस्टली होते हैं क्योंकि इसमें आपको बॉल भी दोबारा करनी पड़ती है और रन बिल्कुल ही मुफ्त के होते हैं। चलो आपको छक्का भी लगे, साथ में एक बॉल तो हुई, इस पे अगर छक्का लगता तो फिर एक बॉल पे 8 हो जाएंगे। वो तो आपने सुना ही होगा ना कि मालिम अब दिले बेरहम। और इस बार आखिरी लम्हे पर अपने स्ट्रोक को चेक किया। बात इस तरह बनेगी नहीं लियारी लेजेंड्स के लिए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी होगी और कुछ रिस्क लेना पड़ेगा इनको। जी हाँ, अगर चाहते हैं कि एक अच्छा टारगेट दें और क्योंकि जो बैटिंग साइड है उसके बाद बड़े अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, तैमूर मिर्ज़ा हैं, बहादुर लेफ्टी हैं, उनको चैलेंज करने के लिए आपको 100 से ज़्यादा का टारगेट तो कम से कम देना पड़ेगा। तो इस ओवर में आखिरी मर्तबा अशरफ लेफ्टी, सुलेमान दाऊद उनका सामना करेंगे इस ओवर में दूसरी मर्तबा। और इस बार भी अच्छा बॉल, डॉट बॉल। तो पहला ओवर अपने अख्तिताम को पहुंचा लियारी लेजेंड्स का। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद अच्छा कमबैक किया है यहां पर अशरफ लेफ्टी ने, एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट भी किया। जी हाँ बिल्कुल, पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद उन्होंने अच्छा कमबैक किया। 1-2 वाइड्स उन्होंने ज़रूर की मगर फिर बल्ले से उनको कोई मजीद चौका या छक्का नहीं लगा और सबसे अच्छी बात यह हुई कि उन्होंने एक खिलाड़ी को भी आउट किया। स्पॉन्सर्स बड़ी तादाद में जुड़े हुए हैं KTPL सीजन 3 के साथ, ये आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए आप देख रहे हैं। फास्ट, वन ऑफ आवर स्पॉन्सर्स, UBL अमीन KTPL सीजन 3 के मेन स्पॉन्सर हैं। ओसाका PVC टेप, ये टेप्स की जा रही हैं बॉल्स पर। तो KTPL सीजन 3 अपनी पूरी रानाई के साथ, पूरी जिद्दत के साथ इस वक्त DHA क्रिकेट क्लब ग्राउंड मोइन खान एकेडमी में जारी है। दूसरा ओवर, पिछले कदम पर जाकर गेंद को उठा दिया, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और कैच मुकम्मल कर लिया उन्होंने। बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बैट्समैन को विड्थ जरूर दी मगर अच्छा बाउंस करने में कामयाब हुए और अपनी बॉडी से दूर खेले। ये हम देख सकते हैं रिप्ले में, अपने खड़े खड़े, और मैं समझता हूँ गेंद की लाइन में पूरी तरह नहीं है, हालांकि टेप बॉल मूवमेंट ट्रैवल कर जाती है अगर स्वीट पार्ट पे लग जाए, इसके बावजूद भी कि आपका फुटवर्क ना हो, मगर इस मरतबा गेंद जो है वो बैट के थोड़ा ऊपर ज़रूर लगी है और फिर हवा में रही, फील्डर के पास बड़ा वक्त था जिन्होंने कैच किया। इस तरह दूसरी विकेट गिर गई है और स्कोर है महज 13 और कुल मिलाकर इनके रन इफेक्टिवली 4 हैं क्योंकि 9 रन की लीड कंसीड की हुई है इन्होंने। बहुत आउट ऑफ द बॉक्स खेलना होगा। 2 ओवर में 2 विकेटों का नुकसान उठा चुके हैं। तो अब लियारी लेजेंड्स के लिए कुछ लेजेंड वाली परफॉर्मेंस जो है वो उसके मुंतजर हैं।
और कैचेस विन मैचेस। तो अब तक 7 गेंदों पर 2 अच्छे कैच मुकम्मल किए हैं फील्डिंग साइड ने। और हर गुजरती गेंद जो है वो लियारी लेजेंड्स के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करती हुई दूसरे ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए। और इस बार गेंद को उठा दिया है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे। क्या गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी या फिर, और ये अंपायर का इशारा कि छक्का। इस मर्तबा बड़ा जोरदार शॉट, गेंद बड़ी देर तक हवा में रही, ऐसा लगा कि शायद हाइट ही गेंद की है, डिस्टेंस कवर नहीं करेगी गेंद एक मौके पे पहले इंप्रेशन में, मगर नॉट ओनली इट गॉट द डिस्टेंस, इट गॉट द हाइट बट आल्सो गॉट द डिस्टेंस, और छक्का, और भरपूर छक्का। दो छक्के लग चुके हैं अब तक इस इनिंग में। और इस बार ऑन साइड पर खेले हैं, फील्डर पहली कोशिश में गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हुए, फील्डर गेंद के पीछे। और इस दौरान दोनों बैट्समैनों ने तेजी के साथ 2 रन का इजाफा किया स्कोर में। अब लगता है कि बैट्समैनों को ये एहसास हो चुका है कि एट एनी कॉस्ट उन्हें रन्स करने हैं, यही वजह है कि वो हर गेंद पे अब बैट थ्रो कर रहे हैं। छक्के के बाद 2 रन बने, फील्डर ने अपना हाथ लगाकर गेंद को पार्शली रोक लिया, जिसकी वजह से गेंद ट्रेवल नहीं की चौके के लिए। एक एक रन के लिए यहां पर दोनों टीमों के दरमियान कशमकश। और इस बार भी बात सिंगल से आगे बढ़ेगी नहीं। निस्बतन बेहतर लाइनो लेंथ के साथ यहां पर बॉलिंग हो रही है, और जहां आप बल्ले के करीब गेंद करते हैं फिर वो बाहर ही जाती है बाउंड्री लाइन के। जी हाँ, नसीम राजपूत अभी आपकी स्क्रीन पे थे, आप कमेंट्री में भी सुनते हैं उन्हें और देखते भी हैं पोस्ट मैच प्री मैच प्रेजेंटेशंस करते हुए। याया हुसैनी मेरे साथ हैं, हमारे बहुत ही सीनियर दोस्त और बहुत अरसे से आप इन्हें सुनते आ रहे हैं, और मशहूर प्रोग्राम स्कोर भी आप इनका देखते रहते हैं। निस्बतन बेहतर ओवर, गालिबन ये लास्ट बॉल थी इस ओवर की। एक गेंद अभी इस ओवर में बाकी है। जी बिल्कुल, एक गेंद इस ओवर में अभी बाकी है, और वो मोमेंटम जिसकी लियारी लेजेंड्स मुंतजर है, वो मोमेंटम अब तक राना अशफाक बन नहीं पाया है। हालांकि इस ओवर में भी एक छक्का लगाया, पिछले ओवर में भी एक छक्का लगा था, लेकिन जिस हद तक बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद जाएगी, बाउंड्री में डील करेंगे छक्कों चौकों के साथ, तभी बात बनेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई छक्के लगाने पड़ेंगे एक अच्छा टारगेट देने के लिए और प्रेशराइज करने के लिए फील्डिंग साइड को। और इस बार भी अच्छा बॉल, 1 रन तक की बात महदूद रही। तो 2 ओवर का खेल अपने अख्ताम को पहुंचा है, और सिर्फ 14 रन की लीड ले पाई है यहां पर लियारी लेजेंड्स की टीम। तो डेफिनेटली अब उनके पास 24 गेंदों का खेल बाकी बचा है राना अशफाक, और इन 24 गेंदों पर वो किस तरह डील करते हैं और किस तरह उनके बैट्समैन इस मामले को आगे लेकर चलते हैं, इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। अगली 24 गेंदें इस मैच के मोमेंटम को साबित करेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा, ये 24 गेंदें बड़ी अहम है, न सिर्फ बैटिंग साइड के लिए कि उन्हें तेज़ी के साथ रन्स करने हैं, इनको मैक्सिमाइज़ करना है, और फील्डिंग साइड के लिए इस लिहाज से अहम है कि जो मोमेंटम उन्होंने पहले 2 ओवर्स में बनाया है, ज़्यादा बाउंड्रीज कंसीड नहीं किया, कि उसी मोमेंटम को जारी रखें तो उनके बैट्समैन एक छोटा मॉडेस्ट टारगेट चेज कर रहे होंगे। मैक्सवेल वाली बल्लेबाजी यहां पर लियारी लेजेंड्स को चाहिए है। आओ देखा ना ताओ, ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे, पर रन बनने चाहिए। अशरफ लेफ्टी, और इस बार गेंद को उठा दिया है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बिल्कुल लगता है कि इन्होंने याया हुसैनी की बात फौरन सुनी और कुछ मैक्सवेल की रूह इनके अंदर जो है वो आई, और खूबसूरती के साथ ये देखें बैक फुट से ही बाएं पांव को जरा सा टेढ़ा करके गेंद को पुल कर दिया बैकफुट स्क्वायर लेग से बाहर। खूबसूरत और जोरदार छक्का। और राना अशफाक अगर आप इनको देखेंगे बिल्कुल विकेटों से लगे खड़े हैं, बिल्कुल क्रीज के अंदर ये बैटिंग कर रहे हैं।
इतने करीब हैं विकेट के कि हिट विकेट भी हो सकते हैं, मगर ये होते नहीं टेप बॉल क्रिकेटर। और इस बार 4 रन होंगे। जी बिल्कुल 4 रन। तो पहली 2 गेंदों पर 10 रन और यही चाहिए लियारी लेजेंड्स को। 29 रन की अब उनकी बर्तरी। जी हाँ, इस मरतबा भी उन्होंने पूरा बैट स्विंग किया, गो के एक तरह से बैट का एज लगा और गेंद फाइन लेग की जानिब तेजी से ट्रैवल कर गई 4 रन के लिए। और जिस तरह आपने जिक्र किया मैक्सवेल का, रन चाहिए, फाइन लेग से आए, थर्ड मैन से आए, सीधे आए, जैसे भी आए रन चाहिए और वो बन रहे हैं। पहली 2 गेंदों में 10 रन तो प्रेशर बॉलर पे। 166 के स्ट्राइक रेट से ये बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन छक्के चौके के बावजूद जोहर नसीर के चेहरे पर जो संजीदगी है वो बरकरार है, क्योंकि वो चाहते हैं इससे भी ज्यादा कुछ तेज खेलें। अशरफ लेफ्टी दबाव में और पहली 2 गेंदों पर 10 रन कंसीड करने के बाद इस गेंद को बीट करने में वो कामयाब रहे हैं। या बैट्समैन ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया, वो चाहते थे कि 3 गेंदों में 16 हो जाए इस ओवर में, लेकिन 10 पे ही बात रुकेगी। विकेट कीपर ज़रा आगे आए हैं और कुछ बात भी की उन्होंने। 2.3 ओवर के बाद 33 लियारी लेजेंड्स का स्कोर, 24 रन की बर्तरी। एपी बैटिंग कर रहे हैं, 7 गेंदों पर उन्होंने 10 रन स्कोर किए हैं। 1 छक्का 1 चौका उनकी इनिंग में शामिल है। 142 उनका स्ट्राइक रेट। अगर आप टेलीविजन स्क्रीन पर इस मैच को अपने घर में एंजॉय कर रहे हैं तो यहां पर बड़ी तादाद में लोग इस मैच से लुत्फानंदोज होते हुए। और इस बार स्लो वन किया था अशरफ लेफ्टी ने, पहले चले गए थे इसलिए वो कमिट कर गए थे और गेंद विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा। और ये वो फैमिलीज जिनका आपने जिक्र किया, KTPL UBL अमीन सीजन 3, और यहाँ पर VIP बॉक्स में फैमिलीज मौजूद हैं, मुकाबले को एंजॉय कर रही हैं। कितना जालिम खेल है कि अभी 166 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहे थे, 2 गेंदें इनसे बीट हुई और ये 125 पर आ गए। एपी 10 रन स्कोर किए हैं, 8 गेंदों का सामना किया है। 1 छक्का 1 चौका इनकी इनिंग में शामिल है। लियारी लेजेंड्स 33, 2 विकेटों के नुकसान पर। और अशरफ लेफ्टी की इस गेंद को उठा दिया है, फील्डर गेंद के नीचे है और उन्होंने इस कैच को मुकम्मल कर लिया। एक और बड़ी अच्छी गेंद बैट्समैन, क्योंकि 2 गेंद ने बीट कर चुके थे जिस तरह आपने कहा, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हुए और उन्होंने कहा कि हर हाल में मुझे इस गेंद को बाउंड्री से बाहर फेंकना है, और उस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने गलत स्ट्रोक खेला। ये देखिए लीडिंग एज लगा, गेंद कवर्स में उठ गई, फील्डर के पास बड़ा वक्त था, वो गेंद के नीचे आए, अपने आप को प्लेस करके अच्छा कैच किया। तो बड़ी अच्छी बॉलिंग, विकेट यहाँ पे गिरी है। तो तीसरा नुकसान लियारी लेजेंड्स को 2.5 ओवर के खेल में 33, 3 विकेटों के नुकसान पर। शोभान अब बैटिंग करने के लिए आए हैं। सुलेमान दाऊद तो मौजूद हैं, अब हमीद बैटिंग करने के लिए आए हैं। ये कारी हमीदुल्लाह KTPL सीजन 1 में बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा इन्होंने किया था और बड़े मशहूर भी हुए। तमाशाई बड़ा एंजॉय करते थे जैसे ही एक क्रीज पे पहुंचते थे वहाँ। लेकिन KTPL सीजन 2 में कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। तीसरे सीजन में भी तलाश में हैं किसी अच्छी और बड़ी इनिंग्स के। लेट्स सी। 10 नंबर की शर्ट बड़ी मशहूर है दुनिया में। फुटबॉल में लायनल मेसी, शाहिद आफरीदी 10 नंबर की शर्ट पहना करते थे। अब उनके दामाद शाहीन शाह आफरीदी ये शर्ट जेब तन करते हैं और कारी अब हमीद आए हैं 10 नंबर की शर्ट पहनकर और बीट किया इस बार अशरफ लेफ्टी ने। पहली 2 गेंदों पर 10 रन उन्होंने दिए थे। गालिबन वाइट का इशारा नहीं, ओवर। तो 3 ओवर का खेल अपने इख्तिताम को पहुंचा। लियारी लेजेंड का स्कोर 3 ओवर के बाद 33, 3 विकेटों के नुकसान पर। इस मैच में उनकी बर्तरी 24 रन की। और कबल इसके कि अब KTPL सीजन 3 में अगला ओवर शुरू हो, मलिक साहब के साथ फरूख कमेंट्री बॉक्स में आपको ज्वाइन करेंगे। Thank you so much, Yahya Hussaini. 3 for 3 after the conclusion of 3 overs. Looking for a momentum here, Lyari Legends. Haven't find it. This time goes across the line, does the batter. Nicely bowled by Mars. A very good evening to you, Farooq, once again. Good evening, Fala. Good evening, everyone. It has been a real struggle for Lyari Legends in the second innings.
Just 33 they have posted, and they have to play out of their skin to put something substantial on the board to challenge Gulshan Gohar. Oh, big hoik. Didn't entirely got hold of that. But the misfield allows them to go for a couple. The intentions are quite clear, but they have to find middle of the bat. It wasn't a well-timed shot. He was targeting something around square leg and deep mid-wicket. This left-armer has been quite impressive as far as bowling within the stumps. Hasn't provided much opportunities, and he also has been productive as far as wicket-taking is concerned. Yeah, they got to keep on trying. This time he thrushes it. It went through the covers, and I think it's gone all the way. Yes, it has. Nicely played. He split the field through the offside and got it in the gap for a boundary. They need more of these. Some consolation for the batsman. It was full outside the off stump and full-blooded drive through the offside, and the ball got to the fence. It wasn't a bad delivery, but it's a good batsmanship. Sign of aggression. Not necessarily using the long handle as most of these type ball batters use. Down the leg side. Has that brush his body in the way through. Umpire disagrees. Has to re-ball that. It's a wide. Wicketkeeper is not happy. He steps forward to have a chat, and umpire sent him back. And he was anticipating that ball pressure trouser. But umpire had different opinion. Yeah, umpiring has been generally very good in this competition. They've been pretty vigilant. They're all professionals. There you go, Yorker. You cannot just mostly lift a Yorker. It's almost impossible to lift a Yorker for a six throw. A great delivery. Absolutely spot on with the length. We have seen a number of fuller balls that have been productive for the bowler, but it was a genuine Yorker. It's so difficult, but they are already deep in the crease, so they cannot get back further to convert Yorkers into half volleys. It was a great delivery. Turned out to be just one in the end. Good stuff. The right point you made for the batters, going very much deep into the crease. They become very predictable for the bowlers as well. And the bowlers too adjust. Not on that occasion. This time missed his mark by a long way down the leg side, a big wide. Well, this table cricket on the greater platform is still very new, and what I expect something improvisation or some kind of unusual shots in this format as well, because the batsmen stay at the crease. They don't improvise. They don't go for the ram shot. They don't target the offside. They don't give themselves room. This time drilled hard along the carpet down to long on. It'll only be a single. They got to go for those big hits. Have not been managing to get entirely out of the screws or the elevation that they need. We should give credit to the bowling as well. Well, if you are a bowling fan, you should watch this spell. He has been immaculate with his line and length. A number of times they've praised the batsman for pick sixes, but this guy has been spot on with the line and length. And have a look at that. Impeccably remains another Yorker. Played away down to mid-wicket for another single. So it's been very intelligent bowling. And he's getting it right. That's the end of the over though. It's 46 for 3. Umpires have got a little bit of exercise to do. Even the fourth umpire
after an over or a couple of overs has to step in the ground to get those balls shuffling, because that's need of the time. The umpire was signaling the power play on that occasion. Standing umpire. Special made bats these, from a special wood. These are the special sticks that they use. My God, they hit the ball a long way with these bats. And this time it's high in the air. Somebody should get underneath it. Oh, he's dropped it. It was easy as they come, in my opinion, because he's got underneath it and in the end just couldn't grab it. Well, he completely mistimed it, and it went miles in the air. It was just a sky, and a batsman knew that it was a tough one for the fielder as well, and that is why both the batters kept running. Should have been to court. We have seen a number of great high catches taken in this competition. Good shot, straight down the ground. Is it long? Yes, it's a gigantic one. What a blow that is. Tremendous. Well, that is colossal. It's out of here. It had everything in it. The height, the distance, the power. Have a look at that again. That has got wings on it. It just kept flying. That was just like an Airbus. Right in the hitting zone on that occasion. The bowler missed the mark by a yard or so, or it's turned out to be kind of an over-pitch ball. Still a brilliant shot though. Good swing of the bat, lofted with real authority. People are definitely enjoying this contest. He goes again. That's another one. 2 of 2. This is the momentum they need. This time on the rise, outside the off stump. He got the weight and smacked it over long on. What a shot that is. He's having fun out there. He's loving it. 2 glorious shots and made a really good contact. He must have loved it. Terrific piece of batting. A mini conference is on with the bowler. Definitely enjoyed a couple of sixes on the bounce. That will definitely give him some momentum. There you see, if your family is also there in the VIP box. Down the leg side, will have to re-bowl that. And this is what the big hitting can do. Those big sixes really made Bassett, the bowler, err in line. Feeling the heat, feeling the pressure. The batsman was smart enough. He straight away moved himself. The ball missed the leg stump by some distance. The wide given. So pressure is on the bowler. After conceding a couple of half a dozens, he bowled wide. Full toss, didn't get quite hold of it, but will take a single. Very good running, very good awareness from both the batsmen. Yeah, a little bit of sloppy work in the field. Good awareness by the batters to take the second run. There you see the scorecard, 64 for 3 they are at the moment. 5th over is in progress. Shaban is not out on 32 with a strike rate of 266. And flick that away over square leg into the boundary after a couple of bounces. Vacant space available at a square leg. Lovely flick shot from Shaban. He has smashed 2 boundaries and 3 sixes. What an innings it is turning out to be from him. 2 glorious shots earlier on this over. One on the rise, one on the full, and this time just a pure flick. And nobody was out there. That would have been a sitter. But there was a man down there at mid-wicket. Taimur Mirza, he had to cover a lot of ground, but he wasn't quick enough. The ball won the race. Yeah, it was always going to go away from his reach there. Perfectly picked the gap. 68 is the score for the moment. Shaban moves to 36 with that blow, with that boundary. Nicely bowled, right in the block hole.
only will manage a single, and this is the best you can do with a Yorker. Perfect Yorker to finish the over. Such an eventful over. 69 for 3 on the board. 5 overs gone. So 69 for 3 after 5, and effectively they are 60 for 3 as they have to remove the deficit of 9 runs of the first innings and building up a total here. Shaban is going to be on strike, who's currently batting at 73. Last over is coming up. Oh, well disguised. That one never arrived for... Wonderful change of pace. The first ball of the over, Shaban was expecting a pacey delivery. It was a half tracker, but it was a really slow one. The batsman not even close. He didn't pick it up at all. So it's a perfect start, and it's a dot ball, more importantly. And now 5 to go to finish this innings. Well, I tell you one thing, Ferg, you got to be brave enough as a bowler to use the variations, because the batters are just lining up, always looking to go big. And have a look at that. He's toying with him, foxing him big time. He's not been able to pick. He can't believe it. He can't believe it, Shubhan. Once again, significant reduction in pace, but also the extra bounce surprise Shubhan. He had no pace to work with. The keeper is absolutely loving it behind the stumps. These 2 dot balls in the final over of the innings are absolute gold. Top class stuff. Top class. This time he gets the connection. We had to wait ages to get that. He does well to get it away for a boundary. Some relief for him, and he got a boundary though. He was in some sort of control, and there was a big gap out there. This time it was quite predictable. The ball came from backhand and very well placed. Full marks to Shaban for the placement. So 4 runs, still a good over, 3 to go. 3 massive sixes are required here for Lyari Legends. And this time it was a quicker one. And they have scampered through for a single, but they will not be able to complete it as we see a run out at the bowler's end. So Shaban has to take a long walk back to the dressing room as he's been run out. Yeah, once again the bowler has been rewarded. Slow one, back of the hand, extra bounce, and he wasn't in control over the shoulder height. In the end, they had to go for the run. They risked, and in the end, he has to walk back. Easy run out at the bowler's end. So Shaban goes back. Good innings from him. But most importantly, it's the 3rd dot ball of the final over. Now 2 balls to go. It was a good innings by Shaban, but just couldn't provide that late flurry which his team were looking for. Lyari Legends. Rana has walked to the center, and virtually he's going to be at the non-striker's end. Second last ball of the over coming up. He waited for that and thumped it, and nicely played. Good bit of fielding, though he's fumbled a bit, but has managed to stop it before it reaches the boundary. Good fielding in the end. Good work by Bahadur lefty. And they went for a couple of runs. Qari Hamidullah still hasn't got going. Just run a ball innings for him, and he will be disappointed with himself. He was looking for a big heave. So what an over it is turning out to be. The last ball coming up of this innings here. Some discussion. Maybe they are checking the boundary. I think Bahadur lefty did well. He saved it perfectly. Have a look at that again in the replay. This is how he put that effort. That ball really was traveling, did well to dive to his right, and when he was looking to get up, then
Just tumbled a bit, but did well to get back. Good effort in the end, saved a couple of runs for his side. Every run matters, so it was a good stop. Here you go, confirmation. The boundary saved. Last ball coming up. So jersey number 10 has to face it. Oh, another big heave, but he gets beaten altogether. What an eventful this over has been. Great bowling. Foxed him and dot ball to end the over. They've managed only 75 in their quota of 6 overs, which means that virtually they have made 66. Yes, what a splendid last over. I was waiting for the slower one. I was predicting it was a slower one, and Qari Hamidullah was too early onto the shot. He missed it. Just a sluggish innings from him. A little cameo, one big shot was required. So this last over will make the difference, and the target around 66 should not be a real problem for Gulshan Gohar, the kind of batting talent they have. Here are some of the highlights. The left-hander was on his knee, and anything down that spot on the onside, he was square, but he was caught in the deep through the offside. This was catch completed by Hassan Chitta. Downtown, a couple of big hits, and this time it was over square leg, and it was just helped on its way with the pace of the bowler. Then miscued one, and he was caught brilliantly at covers. A couple of lusty blows from Shaban just before the end of the innings, I would say, in the second last over. That was a catch dropped, but they got him out. He was run out at the non-striker's end. So it's going to be a target of 67 runs to win this match for Gulshan Gohars. And with that, we have a change in the commentary box, and it's going to be Zishan Khalid and Kainat Imtiaz to take over the commentary. Thank you so much, Falak. Yes, indeed, it's not a big target for Gulshan Gohars, considering the fact that they have got a very strong batting lineup, especially with the likes of Taimur Mirza and Bahadur lefty, who are going to be opening the batting. You can see the gentlemen on your screen making their way out there at the center. It's just 67 runs tonight, Kainat, and they have done it in the past. They have done it on 2 occasions in the first 2 games. Looks like it's going to be another easy victory for Gulshan Gohars. But as we have seen in the previous games, it's not easy to get that low total. It's quite critical for this team to be very stable on the crease while chasing this target. It's always tricky. Low totals are very tricky. Meanwhile, Ashraf Pathan was giving a clear message to his side. They were in a huddle. They were still discussing something. I still get the feeling the extra runs that they gave to Gulshan Gohars in the first innings turned out to be a difference, because Gulshan Gohars did struggle a bit, especially when they lost their openers, both Bahadur lefty and Taimur Mirza, and it looked like it's going to be difficult for them to get a lead, but still they got the healthy lead of 10 runs and they bowled magnificently well in the second innings. Well, again, a chance to see Taimur and Bahadur Ali bat, and of course many will be waiting for them to score big, but again an opportunity for Lyari legends to get them out as soon as possible and bowl as they were bowling in their first innings. Yeah, they didn't start off their campaign in a good fashion, in a good manner. Lyari legends, they suffered a defeat in their first game against Malir Malangs, and even tonight it's not a big score that they have put up against a very strong Gulshan Gohar side. There you see the captain and the star of table cricket, Taimur Mirza, having a discussion. It's going to be Bahadur lefty, the captain, who is going to be on strike for the first ball. Taimur Mirza is going to be at the non-striker's end. Left arm seam is going to start the proceedings.
swung away on the leg side. It's all along the turf and some misfield from the fielder at fine leg. But they will just get 1 run. Well, good approach by the bowler as he is making the batsman reach the ball. It was away from Bahadur Ali. Now Taimur is on strike. Let's see if he can hit big sixes to Mars. Yeah, he should be. He has been in scintillating form in this tournament, Taimur Mirza. 3 half centuries already. Highest individual score also belongs to Taimur Mirza, where he scored 25 over 21 in the first game against Johar Jawans. A low full toss once again, just hitting it gently on the leg side to pick up a single. But talking about Lyari legends, they shuffled their batting order tonight. Qari Hamidullah, we saw opening the batting for them in the first game. He came out to bat at number 5. And even in the last innings, the second innings, when they conceded a lead of 10 runs, but they were naturally swinging everything on the leg side, because of which there were so many dot balls in their innings. And this is something that they were going to be considering about. They were going to be planning about when they will come out in the next game in this tournament. Once again trying to swing it a little too hard. Will go straight to the fielder at square leg. Will get just another run. I think this innings won't be easy. As I said, low totals are very tricky, and they both will want to bat till the end to make their team win. But again, the bowling side, I would say they have been bowling very sensibly, except for that one over that went for a lot of extras. But they have been bowling really well, and they have a chance to get them out as soon as possible. Yeah, it was the second last over of that innings, which was bowled by Rana, where he gave away so many extra runs behind the wicket keeper. But in order to win this game tonight, they need to get both these batters out, Taimur Mirza and Bahadur lefty. Once again, just chipped it towards the long gone fielder. Doesn't look like they look in a hurry, both these openers, Taimur Mirza and Bahadur lefty. So far, both of them have just collected 2 singles each in the first 4 balls of this innings. Well, it is maybe because the middle order batsmen haven't had a chance to bat yet, and they want to stay on the crease for as long as possible, because this gives them a better chance on winning the game. Yeah, so far, even if you talk about the leading run scorer so far in this tournament, there have been the openers of their side. Taimur Mirza being one of them, getting an inside edge. He's very lucky that the ball did not hit the stumps. The ball went straight to Ashraf Pathan, standing at short fine. So far, what I've seen, the pitch is gripping the ball, tape ball, and it is getting difficult for the batsman to hit the ball very easily. Even for Taimur, as we know that he is quite a good batsman. Yeah, you are exactly right, because all the games have been played on that particular strip. We might see some difficulties for the batters as the tournament progresses. The pitch might slow down a bit. Taking a thickish outside edge, but the ball is going to land in front of the fielder at point. So an excellent over, this from the left arm seamer. Just 4 singles off it. Gulshan Gohars are 4 without a wicket. Once again, talking about the sponsors, Osaka PVC tapes, Polo and Basic, Purple, Pink, Daycare, Montessori, UB Lamine obviously being the title sponsors of this Karachi Table Premier League Season 3, Al Buraq Marketing, Gohar group of companies, obviously they also have a team, Clifton Popular, in this tournament. Dell Technologies, one of the leading brands when it comes to buying computers and laptops. 4 without a wicket after the first over. Both the batters getting 2 singles each in the first over. Taimur Mirza is going to be on strike. Rana Mohsen is going to bowl the second over of the innings from the gymnasium end. Once again, just 2 fielders outside the inner ring. He's going to come around the wicket first up. Starts off with a short delivery that has been dispatched on the leg side. And it's a flat 6.
from Taimur Mirza. Well, anything short will be put out of the park, and Taimur Mirza has given a clear message that anything pitched short of length, will be out of the park. And again, a very good dominating shot. That's what they need, at least 2 to 3 boundaries in every over. Yeah, Rana Mohsin should have learned the lesson from the bowler in the previous over when he was trying to pitch the ball up and a little away from the off stump. Another pickup shot. This time he has managed to hit that in the long on direction and way over the boundary ropes as well. Didn't come from the middle of this bat, but when he tries to hit them, they usually stay hit. A very powerful shot, I would say. It was a complete exceptional flick of the bat and getting it from the very low end of the bat and getting it outside the park. An exceptional shot, showing his dominance. Yeah, so all the pressure that was created in that opening over has now been released by these 2 deliveries that have been hit for towering sixes, both by Taimur Mirza. Oh, it was there to be hit once again. He missed out, Taimur Mirza. Very lucky, Rana Mohsin, otherwise that would have been dispatched for yet another maximum on the leg side. Well, every ball is really important for Lyari Legends, as every run counts at this point. The current run rate is 12. They need to get the pace running. They just need 51 runs to win this game. He needs to come back well here, Rana Mohsin. A slower delivery, chance for the fielder at short third, and that has been taken in the third attempt. It's the chairman of KTPL, Zohair Nasir, who completes that catch, and they get a big wicket of Taimur Mirza. Well, it fumbled at first, but again was taken by Zohair Mirza. Zohair Nasir. Yeah, slower delivery. He was completely foxed by the slowness of the ball, and a very good juggling catch in the end by Zohair Nasir. There you see, he fumbled a bit and took it in this third attempt finally. But a big wicket this for Lyari Legends. It's the star of tape ball cricket, Taimur Mirza, who has been dismissed. Alright, so it's Ilyas Jani who has come into bat at number 3. After being struck for 2 maximums early in this over, Rana Mohsin has come back well, and he has struck gold by removing Taimur Mirza out of the equation. But the job is not done yet for Lyari Legends. They still need to pick up more wickets. Big swing on the leg side. It's up in the air and it's over the boundary ropes. What a hit of the very first ball this from Ilyas Jani. Well, swinged it completely. And again, as I said, anything short of length or a short pitch delivery will be pulled towards the leg side. Completely pulled it. Yeah, the idea was right to go with a slower delivery, but the length wasn't right. And the pitch is definitely making the ball grip here. So whenever they're landing the ball on the pitch, it's coming slower to the batter. Just playing it gently on the leg side will get yet another single, Ilyas Jani. He'll keep the strike at the start of next over. 2 overs done. Gulshan Gohars are now 23 for 1. You can see Mr. Ghazanfar on your screen, one of the organizing members of this DHS Sports Club Moin Khan Academy. You have to go through this gentleman if you want to avail any of the services that are available at this club. It's such a wonderful facility here at DHS Sports Club. Not only you get to play cricket, but there's other activities as well that you can avail, especially if you are a member. Especially if you're a member, I would emphasize on that. But again, the atmosphere, I'll talk about the atmosphere. It's quite nice and relaxing here at DHS
Sports Club. So the left arm seamer continues. Once again, a big swing on the leg side, all across the turf. There is a fielder at deep square leg. He cuts that one off. It's just a single. Just 2 bowlers have been used so far by Lyari Legends. Obviously, he's just a third over of the innings, but he has been by far the pick of the bowlers. So he lefty gave away just 4 runs in the opening over. Had just gone away for a single in this first ball. All the bowlers who will have to bowl the remaining overs need to learn from the way the left arm seamer is bowling. He's going to bowl to the left-hander, Bahadur lefty, once again coming around the wicket. Big swing on the leg side, it's up in the air and it's into the stands. He doesn't need second invitation, especially when the ball is pitched up. And he picked this ball really early and he was completely ready for this ball to be delivered, already inside the bowler's head, and completely swinged it towards mid-wicket. Yeah, it's just a matter of time now before they chase the remaining runs. Gulshan Gohar's another swing off the hip. It's going to go straight to the fielder at square leg. He wanted to come back for the second runs, but Ilyas Jani sending his partner back. Well, it's the 8th match of this tournament already, and we haven't seen any batter trying that ram shot or the uppercut shot over the head of the wicketkeeper. Obviously, these players must be watching international cricket these days, and so many players prefer to play that shot, especially when the ball is pitched slightly shorter. That's a beautiful trophy all these 8 teams are fighting for. Well, I think not so much of the pace has been offered yet by any bowler. Swung away on the leg side, just helping the ball on its way. And I think that has travelled to Journey as well. Yes, the arms are aloft from the on-field umpire. Not good bowling. This from Sohail lefty. Well, Gulshan Gohars are getting closer and closer to the target. And again, anything pitched short or little short of length is going for a boundary for Gulshan Gohars. Yeah, he was exceptional in that first over, but he gave away just 4 runs. Given away 2 maximums already in this one. Full toss, getting a thickish outside edge. Once again, Zuhair Nasir is in action. It's going to be just a run to Ilyas. The ball has been behind Sohail Nazir, and he's fielding good. And it's a very shorter format of the game. It's so hard for the bowler to bowl every ball on exact same line and length that can be picked by the batter. They can't even afford to bowl the same delivery the whole over. Last ball of the over coming up. Once again, a full swing over, long gone. He's not going anywhere, Bahadur lefty. He's going to stay there till the end, depositing the ball in the dugout. In fact, in the pavilion, I believe. Tried to pitch it wide outside Yosa, but Sohail Bahadur lefty was waiting for it. Look at how far that ball went. 3 overs have now been done and dusted. Gulshan Gohars are marching along. With that, it's now time for a change in the commentary box. Kainat and I are going to be replaced by Falak Sher and Rana Ashfaq. Thank you so much, Zishan. Well, Taimur Mirza is gone, but still entertainment has been there. The excitement hasn't been dropped down one bit. So I've got Rana Ashfaq alongside me. Good evening, Rana. Yeah, only 67 runs to get. And there you go. He's hit that hard.
And it's one bounce 4. Before it cut over the boundary. There you see it again. He hit that one full-blooded. There wasn't any half measures in that one. Batsmen are doing a great job. And score has gone up to 48. Actually, there are no half measures when these batters try to go over the top. They really mean that they got to go all the way for the maximum. Never try to keep the ball down. This is the beauty of this type ball. And looks as if that Gulshan Gohars are on the way of a third victory on the trot. Oh, big swing there, inside edge onto the body, and they'll scamper through for a single. Batting side is very strongly poised in this match. So I think they can afford few dot balls even. And there you see the DJ playing the music, and he's also wobbling a bit. His head is going here and there. He's enjoying the music. Yeah, he's swirling with the music. Seems to be enjoying it big time. It's always good, Rana, when you enjoy yourself with your work. Nowadays, cricket is not just about scoring runs, getting wickets or taking catches, but it is also about many other things. It's about dancing, it's about music, and it's about many other things as well. Yeah, it's an entertaining stuff. And this time swung hard down to leg side, but it's only going to fetch him a single. Not entirely getting out of the meat, or didn't get the elevation as he would have liked. He meant a 6 over mid-wicket on that occasion. 50 is up. For them, 50 for 1 is the score. We are just in the 4th over of the innings. Runs coming at a very good pace. They're cruising along actually towards their target. Yeah, actually, they are going at 5th gear. Have a look at that full toss, and it's a leading edge. It's high in the air, and it's going to fall safely as well. Again, fall safely. That's amazing, isn't it? It was in the air for ages, but still nobody could come under the ball. It looked a bit bizarre to me, but fortunately enough for the batsman that no one could place himself under the ball. It was in the air for a long, long time. The gentlemen are watching this game with keen interest. Zohair, Nasir still looking very energetic, very active, very agile and very nimble. Yeah, you're right. He's completely into it. From the word go. And that's another one in the air. The batter is also not managing it to connect out of the screws. But this time around, the pace of the bowler has carried the ball all the way for 6. Would you believe that? Runs everywhere. There you see it. Oh, I think he didn't time that one as much as he would have loved, but it still travelled. It surprised me a bit. That was astonishing. Oh my dairy! It wasn't out of the meat, it was off the toe end of the bat. And again, this time it's a proper connection. It looks as if, but it's miles in the air. And again, oh, it goes down. It's all happening here. These strokes could be misleading at times. On first one, we thought he didn't time that one at all, but it still went all the way to the boundary. And this time around, one thought that it would go all the way. It was in the air for a long, long time, and it was well within the circle. But fielder didn't able to take toll of that. He dropped that one. It's just foxing the commentators all the way in the wall. At times, anyone can be misled. Kainat Imtiaz, Pakistan cricketer, Pakistan women cricketer. Oh, she is taking the tee
with great zeal. She loves tea. There you see. Come on, Kainat. Have another sip. Oh, come on. Oh, dear, oh, dear. Are you missing a cup of tea in the com box? Well, my mouth was watering seeing my fellow commentator Kainat sipping tea over there. As we see, it's going to be Shah Jahan, the senior pro. Yeah, I always call him a dinosaur of tape ball cricket. He's a big gun, no doubt about that. Outside edge, and finally he gets one in his favor, does Shah Jahan. Shah Jahan is well respected by all the tape ball players. Take a look at that one. Oh, he saw that batsman was backing away a little bit. That's why he kept it far away from him and left. He had to play it at that one at the end, and he only managed to get an edge, and wicketkeeper did the rest. Well bowled, Shah Jahan, and he's also called Ustad by most of the tape ball players. I first saw him way back in 1995, Malik, when he came to Interior, and he played over there. So he has been around for last 28, 30 years. Yeah, almost 3 decades. Spending that amount of time in cricket, it means a lot. That time just speaks for his experience. He's vastly experienced, along with Zahir Kalia, who comes from Lahore. These are the 2 bowlers who are most seniors of the lot. And they're still very successful. I think age hasn't had a lot of effect on them. VIP Gallery, UPL, KTPL Season 3 is happening with all its colors here at DHA Moin Khan Academy. It's a beautiful ground. Absolutely terrific layout. And the lightning fast outfield we have here, an absolutely lush green as well. Oh, it was a high full toss. And he was just down for the count, was the batter on that occasion. Was attempting a big hit down to the onside, but he was all over the place. No ball has been called as well by the square leg umpire. Although Shah Jahan didn't look happy with the decision of the umpire. He thought it was hit the batsman under the waist height, but I think umpire was quite right. It was above waist height, I can tell you that, yeah. And have a look at him tumbling, getting down, and then up he goes and takes the run, does well. Outside the off stump this time, spanked away, 1 bounce 4, just to the left of mid-off, nicely executed stroke. Batsman knew exactly what he had to do, and he hit that one with full authority, and disdain and some brutality was there in that stroke as well. And this match is over. They have won that match comfortably by lots of wickets. Amazing bit of technique these players possess, and a lot of similarity as well, Rana Ishfaq, in their stroke making. They tend to go very deep in the crease and then get under the ball and just launched it with all the power they have, most of these batters in tape ball cricket. Yeah, tape ball cricket is all about hitting sixes and hitting fours. And look at this. Oh, what a skills. What a terrific skills. There you see. Very tough. Can you do it, Malir? Oh, I was about to ask you the same question, because with my bald head, that stuff is not going to stick on my head. I can tell you, you have some hair on your head. But maybe there is a chance for you, Rana. Just come on, do a little bit of try. I can't do it. I can't do it as well. It is all about skills, not about hairs and bard. Quite right, Rana. Everyone is the master of his own skills. As we see some of the highlights, TM start the innings with a bang. He was in the air, and this time miscued one, and a good catch at the 3rd attempt taken. This was hooked away down to square leg for the maximum. Left-hander came and joined the party with a big heave. It was a swivel this time over fine leg, and left-hander again with the big heave. We have seen quite a few lusty blows in this innings, and this time it was Shah Jahan who took the wicket of the left-hander.
and he was spanked away through the mid-off region. That was the winning shot. So that's all from the commentary box. We will take a short break and we'll come back with the presentation ceremony.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोइन खान क्रिकेट एकेडमी DHA कराची से UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीज़न 3 मैच नंबर 8 की प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि तालियां होनी चाहिए आज के जो मैच की दो टीमें थीं, गुलशन गोहर और लियारी लेजेंड्स के लिए। और आज के मैच में जो कि मैच नंबर 8 था, यहाँ पर गुलशन गोहर का मुकाबला लियारी लेजेंड्स के साथ था और इस मैच में कामयाबी हासिल की है गुलशन गोहर की टीम ने 8 विकेट से। आज इस मैच के लिए हमारी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हमें ज्वाइन कर रहे हैं राहिल कुदवाई साहब और फवाद वीरानी, रिप्रेजेंटेटिव UBL अमीन, और उनके साथ मौजूद हैं अवैस लोधी, जनरल मैनेजर सेल बदर एक्सपो। उसके अलावा हमारी प्रेजेंटेशन पार्टी में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस शाहू, गुलशन गोहर के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, और शिराज उमर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं लियारी लेजेंड्स को। इस मैच में जहां 8 विकेट से कामयाबी हासिल की है गुलशन गोहर की टीम ने लियारी लेजेंड्स के खिलाफ, कई अच्छी परफॉर्मेंसेस हमारे सामने हैं। दाऊद ने 26 रन स्कोर किए, बहादुर अली ने 34 रन स्कोर किए और शुबान ने 41 रन स्कोर किए। बट हमारी ज्यूरी ने डिसाइड किया है आज के मैच के बेहतरीन खिलाड़ी, मैच नंबर 8 UBL अमीन कराची टेप बॉल लीग सीज़न 3, 2 विकेट 22 रन देकर और 2 विकेट 21 रन देकर और मैच में मजमूई तौर पर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। गुलशन गोहर के मास खान आज के प्लेयर ऑफ द मैच। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा राहिल कुदवाई साहब से कि वो आपको मैन ऑफ द मैच शील्ड पेश करेंगे। राहिल कुदवाई मास खान को। ₹5,000 का कैश प्राइज है और फवाद वीरानी साहब UBL अमीन के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद हैं, वो मास खान को आज के मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का ये अवार्ड पेश करेंगे। आइए मास, थोड़ी सी बात हो जाए आपसे। मास, टेप बॉल क्रिकेट में तो हर कुछ बैट्समैन के लिए है, तो बड़ा क्रेडिट जाता है आपको कि आज आपने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है। कितना मुश्किल होता है टेप बॉल में यहाँ पर बॉल डालना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है यार, कंडीशन सही थी और नमी भी नहीं पड़ रही थी, तो बस हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, 2 गेंद अच्छी हो गई, तीसरी गेंद बीट हो गई, फिर भी दिल धक धक कर रहा होता है कि यार छक्का ना लग जाए, चौका ना लग जाए। यार बाउंड्रियाँ तो लगती है बॉलर को, पर माशाल्लाह सब सपोर्ट करते थे। तैमूर भाई, तारिक हारून भाई हो गया, बहादुर भाई तो सपोर्ट करते हैं बहुत, इस वजह से कॉन्फिडेंस मिलती है। वेल डन, बहुत शुक्रिया आपका मास खान। आज के प्लेयर ऑफ द मैच UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग मैच नंबर 8 के मास खान। और इस कंपटीशन में बहुत सारे इनामात भी हैं और फैन ऑफ द मैच का अवार्ड आज लेने के लिए आ रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा फैन ऑफ द मैच अवार्ड देंगे यूनुस शाहू और उनके साथ शिराज उमर, जो कि गुलशन गोहर और लियारी लेजेंड्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और आज के फैन ऑफ द मैच का अवार्ड इबान आमिर को जाता है। आइए इबान। शुक्रिया। और आज का ये तीसरा अवार्ड बेस्ट कैच ऑफ द मैच, और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा GM सेल बदर एक्सपो अवैस लोधी साहब से, और बेस्ट कैच ऑफ द मैच गुलशन गोहर के तैमूर मिर्जा के लिए। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लूजिंग टीम लियारी लेजेंड्स के कैप्टन से कि वो आएँ और हमसे कुछ बात करें। लियारी लेजेंड्स के कैप्टन, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? आप जीत नहीं सके, बट अभी टूर्नामेंट ऑन है। बिल्कुल, बस पहले इनिंग में जिस तरह से हमने रन किए हैं
तो एक टाइम पे लग रहा था कि हम 20 रन लीड ले जाएंगे, लेकिन हमारे एक्स्ट्रा करने की वजह से जो हमने गलती की, हमने अपनी लीड भी ख़त्म की और 9 रन की लीड उनको दे दी, तो जो हमें बाद में मतलब ये कि मुश्किल हुई उसकी वजह से। तो आगे कोशिश करेंगे कि हम गलतियां ना करें और कम बैक करें टूर्नामेंट में। ओवरऑल किस तरह आप देख रहे हैं कि टूर्नामेंट तो बैट्समैनों का टूर्नामेंट है, लेकिन अब इस टूर्नामेंट में बाउंस बैक कैसे करना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बैट्समैनों का टूर्नामेंट है, जो अच्छा बॉलर होगा वो बचाएगा भी और बचाए भी हैं। जैसे हमारा सोहेल लेफ्टी बॉल कर रहा था या राना मोहसिन, तो इसी तरह माज लेफ्टी ने उनकी तरफ से बड़ी अच्छी बॉल की, जो रिदम में होगा वो बचाएगा। बाकी ये कि प्लान है, आगे सोचेंगे और टूर्नामेंट को एंजॉय भी कर रहे हैं। बस ये कि 2 मैच हम हार चुके हैं, कोशिश करेंगे कि कम बैक करें और अपनी टीम को दोबारा ट्रैक पे लाएं। कोई बात नहीं, हार्ड लक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। लियारी लेजेंड्स के कैप्टन हमारे साथ मौजूद थे और अब मैं विनिंग टीम गुलशन गोहर के कैप्टन से गुजारिश करूंगा कि वो आए और कुछ बात करें। गुलशन गोहर के कैप्टन, जिनकी टीम ने आज 8 विकेट से कामयाबी हासिल की है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, एक और कामयाबी आपकी टीम ने हासिल की है। तो इस टूर्नामेंट में क्या देख रहे हैं आप टूर्नामेंट में आगे अपनी टीम के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तीसरा कंसेक्यूटिव हमने विन किया है और आगे यही प्लान है, सेम रहना है कि जो भी मैच है बस उसी पे रहना है कि इंशाल्लाह अच्छा विन करना है और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। तो उम्मीद थी कि इस टूर्नामेंट में इब्तिदा में ही मैचों की जीत की हैट्रिक मुकम्मल करेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी कम्बिनेशन है, बहुत बैलेंस साइड है, तो उम्मीद है यही थी कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे और पहले सेमीफाइनल को क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद फाइनल के लिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका गुलशन गोहर के कैप्टन, जिनकी टीम ने आज 8 विकेट से कामयाबी हासिल की। अपनी टीम की कामयाबी पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीज़न 3 और मैच नंबर 8 की यही थी हमारी प्रेजेंटेशन सेरेमनी। अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और आपको वापस स्टूडियो लेकर चलेंगे।
ladies and gentlemen, welcome back once again to DHS Sports Club Moin Khan Academy. We are ready for the second match of the night. Now, this one is going to be interesting because it's going to be played between Malir Malangs and Johar Jawans. At one place, we have Malir Malangs, who won 2 matches out of the 2 that they've played. On the other hand, we have Johar Jawans. They've also played 2 matches, but they've lost both of them. We are ready for the toss. I have both the captains here with me. Leading Malir Malangs is the captain Dawood. Pathan. Leading Johar Jawans is the captain Syed Nasir, along with match referee Naeem Ahmed. Right, gentlemen, I guess Dawood Khan is flipping the coin. Let's get on with it. Here it goes. KTPL is the call. It's Badar Expo. Badar Expo it is. Dawood Khan has won the toss. Dawood, क्या करने का फैसला किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम पहले बैट करेंगे. बैट करेंगे. जच रहा है आपको पहले बैट करना. पहले बैट करते हैं, तगड़ी बैटिंग करके अच्छा टोटल लगाते हैं, प्रेशर में डालते हैं सामने वाली टीम को. जी बिल्कुल, 2 मैच जीत चुके हैं. पहले बैटिंग में ही जीते हैं और बाद में जो है थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है, इसलिए फर्स्ट बैट. सोच के आए हुए सारे मैचेस जीतने, कोई नहीं हारना. इंशाल्लाह कोशिश तो यही है. चलें दाऊद, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच. बैटिंग करने का फैसला किया आपने. राइट, सैयद नासिर से भी हम बात करेंगे. सैयद नासिर, लंबा टूर्नामेंट है, काफ़ी सारे मैचेस हैं आपके पास. 2 मैचेस जीत गए, लेकिन हर दिन एक नया दिन होता है. आज जीतने के अज़म से उतरेंगे? इंशाल्लाह जीतेंगे आज इंशाल्लाह. और कोई चेंजेस हैं आपकी टीम में? चेंजिंग बस एक बैट्समैन ज़्यादा किया है और ऑलराउंडर को वो करके बैट्समैन 7 कर दिए. ठीक, राइट सैयद नासिर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच. थैंक यू. All right, ladies and gentlemen, the word from the center is Malir Malangs have won the toss and decided to bat first. We'll take a break here and we'll come back with live action.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. And once again, we welcome you all. A brand new match coming up. UBL Amin KTPL Season 3. Johar Jawan will take on Malir Malangs. Second match of the contest. Earlier, Gulshan Gohar registered a heavy victory over Lyari Legends. Perfect setting here in DHS Sports Club, Moin Khan Academy. Both umpires are making their appearance in the middle. And once again, we expect plenty of fireworks. We saw not only the fireworks of the bat, but also some tremendous bowling from the bowlers of both sides. Jawad Ali and Siptan Raza, the on-field umpire, officiating this match. Johar Jawans is still searching for a win, whereas Malir Malangs have won both their games, so they must be confident to continue their winning streak. So fielders are taking their position, and the comm box I have been joined by Kainat. Welcome. Thank you so much. Again, the last game was quite exciting. We thought somebody else was going to win, but somebody else did. And we're expecting some good game from this one as well. And batters are going on to the field to start this play. Dawood was very confident at the time of toss. He was very clear. He opted to bat first straight away. And he wants to put big total on the board to apply some sort of pressure on the bowling side. That's the lineup. Syed Nasir is the skipper of Johar Jawan, Umar Farman, Saddam, Basit lefty Jangi, Sheri, Mohit Shahraza, Aribal ki Falak Pasi. They added one batsman. Malir Malangs led by DK, Imran, Majid Kohli was brilliant in the last game. Fazal Afridi, Ali Chota, Aziz Ahmed, Ubaidur Rahman, Kalim Shaji and Meetlem Abbas. That's the lineup of both sides. Well, we have quite a few match winners in both the squads. Let's see who will be the man of the match in today's game. DK, Dawood Khan, what a tournament he's having, not only with the bat. We can't forget 2 blinders he picked up at mid-wicket boundary in 2 consecutive balls. He's a brilliant fielder as well. And Syed Nasir is marching his troops. So there will be a traditional field set. Wicketkeeper followed by his short third and short fine leg and mid-off inside the circle. Mimran is a partner, is waiting at the non-striker's end. The batsmen need to take advantage in the first few overs and field restrictions will be applied. So we all set here for the new match, the match number 2 of today. Malir Malangs will take on Johar Jawans. First ball coming up. Here he goes, good swing of the bat. Straight away he made his presence. It's high and handsome, and that has been disappeared. My word, what a good strike that is. What a start from Dawood Khan. Well, the ball was completely on the juiciest spot of the pitch and completely was hit with great dominance by the batter. Good swing of the bat. It was a pitch outside the off stump. He could have struck towards long on, but he opted that square leg region because he lifted that intentionally over a square leg fielder. It was a great swing of the bat with a lot of power and flair. Down the leg side, straight away ball under pressure, missed the radar. But it was a missed shot actually. It could have gone for a 6 because it was completely on the leg side. Missed opportunity by the batter. And Saddam Shah, the bowler from Johar Jawans. His first ball was put out of the park. 8 runs so far. It's a good start from
Dawood Khan. We all know him for his power hitting. Flat, hard, nobody's out there. One bounce into the boundary. What a shot that is. It didn't time as much he would have liked. He was aiming for a 6 again, but the ball landed just inside the boundary. Struck really hard indeed. Well, he's pitching on the good length areas, which is much easier to hit, rather than being shot off very full to the batter. Saddam has decided to go round the wicket after getting a couple of doors. 12 of the over so far straight away. Just 2 balls have been bowled. Outside edge gone. Is he gone? We have to wait for the umpire signal. Yes, finger goes up. And DK is not a happy man. He suggested that he hasn't hit it, but we saw some kind of deviation. The Johar Jawans, they are absolutely delighted. We have to wait and see. It was almost on the wide line. Could have been a wide if not touched by the bat. But given out by the umpire. And again, a loss for Malir Malangs. Maybe such an unfortunate way to go. Maybe the ball hits some kind of surface. But we saw a clear deviation. He is absolutely furious with the decision. He off to a great start. 1-6 on a boundary. And he has to walk back. He goes for 10. 12 for 1. Some relief here for Johar Jawans. Dangerous customer. Dawood Khan has been walked back. So he chased the wide outside the off stump. Kaleem is the next man in. Wicket falls in the very first over. Such an interesting decision. Swing and a miss. That was so close to the off stump. A wild swing. So change of angle has worked here for Kaleem. Straight away after conceding a boundary and 6, he decided to come round the wicket and he got a wicket. Wasn't the best of ball outside the off stump. And now Kaleem missed a big shot here. It was a wild swing. Wasn't in a position to make any sort of contact here. Good sound of the bat. Is it long enough? Yes, more than enough. That is gigantic from Kaleem. Either it's a wicket or it's a 6 by Malir Malangs. Again, the juiciest spot of the pitch, the good length area, which is the most easiest to hit when you're hitting. He went big, extended his arms towards the mid-wicket region, and the ball went out of the park. On that occasion, he couldn't find the nagging line, the nagging angle. It was pretty much in the zone, wide outside the off stump. Played on the leg side, missed the radar again. Well, I think all the leg side deliveries are almost a free hit. If you get that right, you'll get a boundary, probably a 6 if you elevate it right. But nevertheless, it was a wide delivery and got 2 runs. Missed it. Low full toss just outside the off stump. Dot ball to finish the over. 20 for 1. For 1 on the board. Mimran
Now, for the first time, he will face the delivery. The solitary wicket fell of Dawood Khan, DK the skipper. 1-6 and 4, he got out. Was chasing outside the off stump, and then Kaleem came in. He smashed a gigantic 6 here over long on. Sherry is sharing the new ball. Mimran was quite impressive in the last game. Let's see what he has to offer the team today. Good strike, good strike. First ball over long on. 6 more. This shot was only hit by the wrist power. And again, that good flick of a wrist. Good shot. Thank you very much from Imran. That was pitch outside the off stump. Juicy half volley, not much pace behind it. And he deserved to be punished. He's off the mark in style, Mimran. Outside the off stump, clearly outside the off stump. Once again, some exercise for the umpire. The bowler is under pressure as the first ball was hit for a boundary. Some discussion is going on. Syed Imran is having a chat with his bowler, Sherry. Certainly, he must be talking about the change of length. And now he's going round the wicket. That was the decision. Full toss, worked away. Nobody's out there. Should be a boundary. Chase is on. Ball wins the race. And no ball has been given as well. So, free hit will be awarded. It's not always easy to bowl round for a right-hand bowler. And again, it was shown that he did not pitch the ball right and was almost a low full toss towards the leg side. And as I said earlier, leg side is almost a free delivery. You're still concerned about the overstep. What I saw in the replay was quite marginal. Very hard to say anything. But no ball has been given, and umpire signaling is a super hit. It's a free hit now. That's the big opportunity for Mimran. Good strike on the rise, smoked it. He's got everything. He's got the height, he's got the length. And it's dropped. Again, a chaos. No calling by the fielders. See, high catching is so important in this game. Because catches win matches, and if you lose one, you get the better chance to hit big again. Fielder had a lot of time, but he missed it. 2 men were converging. Leading edge could be out. Who wants the 3 men are converging this time? Should be taken. It's dropped. They made a mess of it. So Imran gets alive again. Well, I see no one learning, nor the batter or the fielders. There's no calling between the fielders. It's so important to call before you go for the catch, especially because of the ball is swinging in the air. 2 drop catches. Mimran can make them pay here. Got a feel for the bowler. Once again, some discussion is here. The round the wicket decision turned out to be good, but it wasn't supported by the fielder. 2 drop catches. Mimran missed it. Could be out. Is it off the bat? Landed safely. Pay for the leg run out here, and they are coming back for 2 as a result of overthrow. That throw was not needed as the batter was already inside the crease. I think there is a loss of motivation from the bowler as 2 catches were dropped in the same over of the same player. That was quite impressive in the last game. Mimran can be a key player for Malir Malangs.
There's a man down there. Better ball, Fuller outside the off stump, and that worked in the bowler's favour. Imran was trying to get some sort of land to work with. It's high in the air. It's got a lot of height. And this time he has got the distance as well. Width provided, beautifully played. 6 to finish the over. Once again, it's a huge over for Malir Malangs. 46 for 1. Malir Malang showing their dominance and the way they want to play throughout the tournament. Again, it was a massive 6 by Mimran. 40 for 1, 6 overs. That's a commercial, polo and basic and purple pink. JK Montessori, QBL Amin, they're the prime sponsor of this competition, KTP Season 3, Pakistan Businessmen Association. That's also one of the sponsors, Al Burak Marketing. Gohar group of companies is also they own one team, Al Muntazir Garden. The other housing scheme, Dell Technologies, Desert Sound, and Jubilee Bean once again. So plenty of sponsors. Straight Life is one of them. A change in bowling now. The left arm bowler Farman will bowl over number 3 here. So good start for Malir Malangs, 46 for 1. Mimran is on 20, Kaleem on 6. Both the batsmen have struck maximums here, 3 sixes in this partnership. Round the wicket. He goes for it, he waited, and what a good shot that is. It has gone many a mile, my word. What a good strike that is, and welcome to the crease, Farman. Well, if it's not a variation, it should be right on the spot, but it was not. Again, completely in the region of the batter. And Kaleem completely getting pitch of the ball and hitting it outside the park. Swing and a miss this time. Slight appeal, but no response from behind the stumps. It was close to the off stump as well. He tried to heave once again, Kaleem. Going good so far for Malir Malangs. They should be happy. It's 2 overs and 46 already. Supporters of Malir Malangs are absolutely elated that their side is off to a flyer here. After a loss of DK, the momentum is still with them. Kaleem and Imran are showing some power hitting here. Swing and a miss once again. Good comeback after conceding a maximum. Change of pace as well. We saw the ball movement off the pitch, and Kaleem wasn't even close to make any sort of contact. So half a dozen followed by a couple of dots. If he had played on the merit of the ball, this could have gone over extra cover. But again, not every shot can be played towards mid-wicket. The bowlers are getting smarter by the minute. Yes, he's an experienced campaigner. He came back well. Pulled away, gone! Good catch! The batsman can't believe it. Kaleem, he smashed it pretty well, but picked the man to the perfection at his square leg. Close to the umpire and no mistake whatsoever. So Farman finally has got the breakthrough. He struck it well. Well taken. It was a tough one. It surely was. It was going away from the fielder. Actually, the fielder was going away from the ball. But again, it was a good catch taken at the end. It was completely planned, I would say, as Kaleem was already playing every shot towards the leg side. And this helped the bowler to get him out. $52 for 1.
2 wickets have gone down here. Kaleem is the latest victim. Very unusual the way he got out, because we don't see the batsman gets out at inside the circle. Swing and a miss. Good over. After conceding a maximum, he has come back superbly, Farman. 2 dots, wicket, and once again a dot ball here. This angle is working for him very well. He's also taking some pace off. Bahadur is the next man in. Missed it again. Dot ball again. He was trying to pick up a single, but his partner Mimran denied. What an over. 52 for 2. The sponsors we have for this competition: Dishan Salim Zaki, Sindh Police, Muller and Fibs of the Air, State Life, Insurance Corporation of Pakistan, Badar Expo Solution. And this is KTPL Season 3. UBL Amin, Islamic Banking, the prime sponsor. Qadri Associates, the another sponsor, Sana Noor. $52 for 2, 3 gone. Mimran on 20, Ubaid who just came in. He has yet to open his account. Now it's over to Danish in the com box. चार रन हासिल किए यहाँ पर मिमरान ने अपनी टीम के लिए बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। अब तक इन्होंने यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन में एक बार फिर देखें जोरदार अंदाज में स्लैश किया था, ऑन साइड पर खेले और सीधा गैप में खेले। ज़्यादा बड़ा गैप था नहीं यहाँ पर। कॉम बॉक्स में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राना अशफाक। मिमरान ने जो रोल निभाया अपनी टीम के लिए, इसको मज़ीद बढ़ाना होगा और लंबी बैटिंग करनी होगी। 2 विकेट नुकसान पर 56 रन ऑलरेडी यहाँ पर उनकी टीम बना चुकी है। मलीर मलंग ने अभी तक 2 मैचेस खेले हैं, दोनों जीते हैं। ये तीसरा मैच है उनका। राना अशफाक का शानदार परफॉर्मेंस रही है मलीर मलंग की। बहुत शुक्रिया दानिश अनीस, बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं। एक मैच तो बहुत आउटस्टैंडिंग जीते वो लीड कंसीड करने के बाद, जो कि आसान नहीं होता। जैसे कहते हैं दे मेड अ कम बैक फ्रॉम द एडवर्सिटी एंड इट्स अ साइन ऑफ अ चैंपियन। मिमरान ने 13 छक्के लगाए थे एक मैच में, कुल मिलाकर दोनों इनिंग्स में, और इस मरतबा गेंद को खेलने में कामयाब हुए ऑन साइड पे, मगर फील्डर मौजूद हैं। बाउंड्री पे 1 रन मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी कभी कभी लगता है। कभी तो ये होता है कि बॉलर्स बिल्कुल ही डोमिनेट कर रहे थे। कल हमने एक 5 विकेट हॉल भी देखा, एक 4 विकेट हॉल भी देखा, लेकिन उसके बाद कभी कभी लगता है कि बिल्कुल ही बैट्समैनों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बॉलर्स के लिए भी चांसेस हैं। दानिश, चालाकी का बड़ा किरदार नजर आया है राना अशफाक का। खास तौर पे टेप बॉल क्रिकेट की जब बात की जाए तो सिर्फ पेस सुप्रीम नहीं होती। अगर आप वेरिएशन करते हैं या अपने लेंथ को वेरी करते हैं, उसमें चेंजेस लाते रहते हैं, तो आप ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। गेंद को खेलने तो ऑन साइड पे गए थे, गेंद गई ऑफ साइड पे। जब तक स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री पे गेंद को रोका जाएगा। 2 रन दौड़कर बैट्समैनों ने पूरे किए और लेग बाइस का इशारा अंपायर का। देखें, ये भी थोड़ा सा हैरान कुन है क्योंकि टेप बॉल में कोई पैड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट उसके बावजूद अगर बॉडी से लग के गेंद जाती है तो लेग बाइस के रन है। ये डग आउट है मलीर मलंग्स का। यकीनन अब तक इनकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी और शानदार रही है। इंतहाई मुतमईन डग आउट है। और मलीर मलंग की सबसे अच्छी बात यही है कि किसी एक प्लेयर पे इन्हिसार नहीं करते। उनकी टीम के मुख्तलिफ प्लेयर्स मुख्तलिफ ओकेजन्स पे अपनी टीम के लिए मैच विनिंग नॉक्स खेलते आए हैं। यही वजह है कि ये टीम अभी तक टॉप पे नजर आ रही है। ये बड़ा अहम पॉइंट आपने रेज किया है कि डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए आपको। ओह, इस मर्तबा बड़ा जोरदार खूबसूरत शॉट, फ्रंट फुट पे आए, ओवर पिच गेंद करना किसी गुनाह से कम नहीं है। टेप बॉल में आगे गेंद की और ये
इनके लिए किसी खुशी से कम नहीं जब छक्का चौका लगे इन्होंने अपना ढोल पीटना शुरू कर दिया। इससे पहले जब अटेम्प्ट किया था सद्दाम ने यॉर्कर लेंथ तो बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में एग्जीक्यूट किया था, लेकिन इस बार हल्की सी चूक हुई, हल्की सी लेंथ मिस कर गए और मिमरान ने पूरा फायदा उठाया इसका। जोरदार अंदाज में ग्राउंड से बाहर बॉल। एक और ऊंचा शॉट मिमरान का। मिमरान खतरनाक मूड में है, लेकिन फील्डर का मूड जो है बहुत ही फ्रेंडली है। बड़ा याराना लगता है इनका, लगता है इन्होंने ये कैच जो था वो ड्रॉप किया है। एक बार फिर हवा का अमल दखल नजर आया है यहाँ पर, क्योंकि फील्डर एक तरफ सोच रहे थे कि बॉल शायद ट्रैवल कर जाएगा, फिर थोड़ी सी हवा ने धक्का दिया बॉल को। यहाँ पर आप नोट करेंगे बॉल जाते जाते बाउंड्री लाइन के अंदर आ गया, बहुत ऊंचा गया, टॉप एज लगा था। मिमरान बड़े जोरदार अंदाज में बल्ला घुमाते हैं, सही अपने आप को प्लेस नहीं कर पाए बॉल के नीचे। 68 पे 2, 4 ओवर्स पूरे। अशफाक का ये भी बड़ी खुशाइंद बात है कि अंपायर अपना किरदार निभा रहे हैं। इस पूरे या इवेंट को बहुत प्रोफेशनल अंदाज में ऑर्गेनाइज कराया गया है। अंपायर्स भी डिसिप्लिन की जरा से भी खिलाफ वर्दी बर्दाश्त नहीं करते। जहां टाइम वेस्ट होता है, इवन प्लेयर्स पानी भी पी रहे होते हैं, तो उनको फौरी गेम वापस स्टार्ट करने को कहते हैं। अच्छी बातें हैं ये, बहुत अच्छी बात है। और अंपायर्स की जॉब बड़ी टफ है, थैंकलेस है। और देखें कि अंपायर कभी कभी विद इन द रूल्स भी सब कुछ कर रहे थे, उसके बावजूद भी उन पर क्रिटिसिज्म होता है, तो वन शुड स्पेयर अ थॉट फॉर द अंपायरिंग। और देखें कि टाइम आउट मैथ्यू को दिया गया अकॉर्डिंग टू द रूल्स, वो ठीक था, बट देखें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। उसमें यकीनन बांग्लादेश ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया था, दैट्स द अदर थिंग। मगर अंपायर्स ने जो महसूस किया, जो फील किया विद इन द लॉ, उन्होंने फैसले किया, बट दे स्टिल गॉट क्रिटिसाइज्ड। तो ये अंपायरिंग जो है एक तो आसान काम नहीं है, बी ये है कि ये इसमें कोई शुक्रिया नहीं है। 15 डिसीजन अच्छे करें, कोई एक हो जाए, आफ्टर ऑल यू आर ह्यूमन, तो फिर हम जैसे लोग ही दांत तीखे करके बैठे होते हैं और तनकीद करते हैं। ये उन दोस्तों की तरह है जिनसे कभी कोई दोस्त खुश नहीं होता लेकिन वो फिर भी दोस्ती निभाते हैं। वो था ना कि दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला। क्या कहें कितने मुरासिम थे हमारे उससे, वो जो एक शख्स है मुंह फेर के जाने वाला। क्या बात है। फरमान 5वें ओवर के साथ, और इस गेंद को हिट आउट किया, मगर गेंद कुछ टप्पे खाती हुई जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की जाने। फील्डर ने भरपूर कोशिश की वहां पर, लेकिन लगता है कि कामयाब नहीं हुए। एक नहीं 2 फील्डर से वहां पर जो कोशिश थे गेंद को रोकने के लिए, मगर गेंद फिर भी बाउंड्री से बाहर। चौका। फरमान ने खासी गैर मामूली बॉलिंग की है अपनी टीम के लिए। पहले ओवर में 1 विकेट लेकर सिर्फ 6 रन दिए थे। ये दूसरे ओवर की पहली ही बॉल पे उनको 4 रन पड़े, वो भी फील्डर की थोड़ी सी आप देखें नी फंसा ग्राउंड में। टेक्निक आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते टेप बॉल क्रिकेट में, जहाँ तक फील्डिंग की बात आती है। बिल्कुल आपने सही कहा। यूबीएल अमीन KTPL सीजन 3 ज़बरदस्त अंदाज में DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी में इस गेंद को ऊंचा खेले, बैकफुट पे जाके पुल किया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग से बाहर एक बड़ा छक्का। इमरान के पास ऐसा लगता है बहुत टाइम होता है, हर बार जब शॉट खेलते हैं बड़ा संभल के अपनी बॉडी को बैलेंस रख रही है। देखिए एक बार फिर बैलेंस बड़ा जबरदस्त था उनका, जोरदार अंदाज में शॉट खेले। हालांकि काफी तेज बॉलिंग हो रही है राणा साहब, उसके बावजूद देखिए कितना टाइम है इमरान के पास, जल्दी स्पॉट कर लेते हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं दानिश के, ये बहुत जल्द लाइन और लेंथ को पिक करते हैं और रिफ्लेक्सेस इनके बहुत तेज हैं। ही गॉट अ सुपर्ब रिफ्लेक्सेस। इस मरतबा भी ऑन साइड पे खेलने गए थे, मगर इस मरतबा मिडल ना कर पाए, गेंद ऑफ साइड में गई और डॉट बॉल। तालियां बजा रहे हैं ये सपोर्टर इनके। बिल्कुल मैनेजर थे ये जौहर जवान के, और आज मैच से पहले मेरी इनसे बात हो रही थी। मैंने इनको याद दिलाया कि आपने 2 खेले हैं, दोनों हारे हैं। कहने कोई नहीं, अभी आगाज है, आगे आगे देखिए। जी हाँ, इफ्स एंड बट्स होते हैं किसी भी बड़े स्पिरिट भी होना चाहिए। सॉरी टू कट यू ऑफ राणा साहब। नहीं ऑफ कोर्स स्पिरिट तो होना ही चाहिए, और स्पिरिट के बिना तो जो है वो जाहिर है कि मैं समझता हूँ फिर फजूल है। इस गेंद को हिट किया, लेकिन गेंद आगे गिरेगी फील्डर के मिड विकेट पे। साउंड बैट से जरूर बरामद हुआ, मगर स्वीट साउंड बहरहाल को नहीं था। अगेन एफर्ट बॉल था ये फरमान की जानिब से। उन्होंने देखा कि ये दोनों बल्लेबाज काफ़ी अग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं, तो इस बार उन्होंने बॉल को लाकर जोर से पटका,
एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया और एक्स्ट्रा पेस भी जनरेट की, जिसकी वजह से टाइम नहीं कर पाए इमरान। 5वें ओवर में 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यकीनन पहला हदफ जो इनके जहन में होगा मलीर मलंग्स के, वो 110-105 रन होगा। लेट्स सी वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। ये न सिर्फ पानी हाथ में लिए बैठे हैं, बल्कि इनकी ख्वाहिश ये है कि जल्दी से ओवर ख़त्म हो तो अपने किसी साथी को दे के भी आए। इस मरतबा एज हुआ है फील्डर गेंद के नीचे और गेंद को ग्रैब किया अपने दोनों हाथों से। इस तरह ये एक और विकेट। फरमान की यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए कम है। अच्छे स्पॉट पर बॉल को गिराया और आप देखें बॉल पड़ने के बाद आउट भी गया है, बाहर भी स्विंग हुआ है। आप देखें सीम से, यहाँ तो इस एंगल से नजर नहीं आएगा, लेकिन इसी वजह से डिसीव हुए यहाँ पर उबैद और टॉप एज लगा। अगर हम फ्रंट ऑन रिप्ले देख सकें तो आपको क्लियर मूवमेंट नजर आएगा यहाँ पर फरमान की बॉल में। उबैद रहमान 1 रन बनाकर आउट। MM 78 पे थी। अगर इसी औसत से बैटिंग करते रहे जिससे अब तक की है तो 113 तक पहुंचेंगे। फजल बैटिंग करने के लिए मैदान में आ रहे हैं। मिमरान वेल सेट हैं, 42 रन उन्होंने 16 गेंदों पे किए हैं और अभी भी इस इनिंग्स की 7 गेंदें बाकी हैं और उनमें से मिमरान की कोशिश और ख्वाहिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेलें और उनको मैक्सिमाइज़ कर सके अपनी टीम के लिए। देखने वाले सोच रहे होंगे 6 ओवर में 113 रन, यकीन जानिए ये भी सिर्फ मुनासिब टोटल ये है इन मैचेस में। बिल्कुल सही कहा। ओह, इस मरतबा इशारा आएगा वाइड बॉल का, 2 कीमती रन बनेंगे। जी हाँ बिल्कुल, 113 रन एक ज़माना था जब वकार और वसीम खेल रहे थे, हम वनडे मैच जीत जाते थे 113 रन बनाकर। ये सिर्फ ख्वाबों में बना करते थे लेकिन अब हकीकत में आपके सामने रोजमर्रा की बुनियाद पर बन रहे हैं। मुख्तियार है नए बैट्समैन। जी हाँ, मुख्तार छच्छर अच्छे स्ट्राइकर ऑफ द बॉल हैं। मिमरान एक एंड पे मौजूद हैं। फरमान का ये दूसरा ओवर है, 17 रन दे के 2 विकेटें। बड़ी बेहतरीन बॉलिंग, मगर इस मरतबा फाइन लेग बाउंड्री से बाहर राउंड द कॉर्नर गेंद को पुल किया और ढोल वालों के लिए एक मरतबा फिर मौका कि अपने ढोल को खूब पीटें। जरा सी चूक हुई यहाँ भी फरमान से, थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ हो गया जिसकी वजह से जगह मिली, टाइम मिला यहाँ पर बैटर को कि पूरे हाथ घुमाकर बॉल को वहां खेलें जहां वो खेल सकते थे। मुख्तियार अगर मिमरान का साथ देते हैं तो यकीनी तौर पर मलंग्स का अच्छा स्कोर बन जाएगा। अब प्रोजेक्ट स्कोर थोड़ा सा कम हो गया लेकिन 1 ओवर बाकी है। जी हाँ, आखिरी ओवर का खेल बाकी है और मिमरान चूँकि स्ट्राइक पर हैं तो उम्मीद करेगी उनकी टीम मलीर मलंग्स के कम से कम 20-25 रन का ओवर वो खेलें, जिसके लिए वो केपेबल भी हैं। प्रेडिक्शन टाइम राना अशफाक, कितने छक्के आएंगे इस ओवर में? 3 डे बॉल में तो ऐसी वाली प्रेडिक्शंस होनी चाहिए। 3 आप क्या कहते हैं? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 50-50 चल रहा हूँ मैं। जहांगीर खान आखिरी ओवर करेंगे जौहर जवान्स के लिए, बड़ी जिम्मेदारी है इन पर। अब 3 तो मैंने कह दिया, आप या 4 कहें या 2 कहें। शायद आप मुझसे पहले पूछते तो मैं भी 3 ही कहता बट आप बाजी ले गए। बट चले मैं 4 कहता हूँ क्योंकि मिमरान स्ट्राइक पर मौजूद हैं और जबरदस्त खेले। Here we go, फर्स्ट बॉल और इस गेंद को हिट कर दिया ऑन साइड पे और गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। छक्का तो नहीं लेकिन चौके से आगाज। इमरान कह रहे हैं आप लोगों ने छक्के की लगाई थी, मैं तो चौके लगाऊंगा। चलें 3 छक्कों को 5 चौकों में बदल दें। I'll take that any day। बहरहाल जस्ट किडिंग। अगर कोई बॉलिंग साइड का सपोर्टर में सुन रहा होगा तो वो कहेंगे कि बॉलर के लिए भी कुछ कहें भाई, बॉलर के पास मौका है कि उनको आउट भी कर सकते हैं। और यकीन जाने आप लोगों के साथ साथ हमारी भी आदतें बिगाड़ दी हैं इन बैटर्स ने, इतने छक्के लगे हैं। इस मर्तबा गेंद को हिट किया एंड इट हैज गॉन ऑल द वे। नहीं हो सकी गेंद चूंकि फील्डर मौजूद थे बिल्कुल बाउंड्री पर। और अभी हम बात कर रहे थे बॉलर के लिए कि बॉलर भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गेम से बाहर हैं। उन्होंने विकेट हासिल किया है। इन फॉर्म मिमरान की 46 पे आउट हुए। सोच सही थी मिमरान की, 17 गेंदों पर 46 रन मिमरान बना चुके थे। आखिरी ओवर था उनकी टीम के लिए और उनको बड़े शॉट खेलने थे।
बहुत शानदार कैच लिया है यहाँ पर, छलांग लगाई, हवा में पकड़ी बॉल, जबरदस्त रिफ्लेक्सेस। इमरान 46 रन बनाकर आउट, 90 पे 4। कहानी जिस तरफ जा रही है ऐसा लग रहा है हम दोनों ही गलत साबित होने वाले हैं। आपके तो अभी भी चांसेस हैं, मुझे सही साबित होने के लिए चारों बॉलों पर 4 छक्के दरकार हैं। अपनी ही प्रेडिक्शन पर डाउट होने लगा है मुझे। That's what cricket is all about. ये तो क्रिकेट की खूबसूरती है। अजीज अहमद कांदड़ो बैटिंग करने के लिए आए हैं। फौरन उन्होंने अपना कांदा दिखाया और उन्होंने इस गेंद को ऊंचा खेला है, खेलने की कोशिश की, इनफैक्ट खेल नहीं पाए और किसी न किसी तरह से एक लेग बाय का रन लेकर स्ट्राइक रोटेट की उन्होंने। डे बॉल क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू होता नहीं, लेकिन अंपायर का दिल कर रहा होगा वो इसको भी आउट दे दे। प्लम होता अगर एलबी की खेल रहे होते हम तो। जहाँ एंड हु नोस के आने वाले किसी वक्तों में एलबीडब्ल्यू रख लिया जाए। पैड नहीं तो क्या हुआ, है तो लेग भी 4 विकेट ना, टांग तो इनकी भी आगे आ सकती है। और इस मरतबा खेलने गए और गेंद के विकेट कीपर को आज बड़ी अच्छी बॉलिंग। तो देखें ना कि इसमें सोचा जा सकता है। बिल्कुल लोअर फुल टॉस थी इस बार जहांगीर की जानिब से और ये अच्छी लेंथ है एटलीस्ट इस टाइम पर, बिकॉज मुख्तार को अगर आप देखें बहुत हाई बैक लिफ्ट से बहुत दूर से बल्ला लेके आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है उनके पास। जहांगीर बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा, नो डाउट। इस मरतबा इस गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑन पोजीशन पर और गेंद बाउंड्री से बाहर, 6 रन। इस बार तैयार थे मुख्तार, ऐसा लगता है हमारी बात सुन ली उन्होंने। इस बार बैक लिफ्ट भी कदरे कम थी, बल्ला वहीं से लेके आए जहां से उठाया। जबरदस्त फन का मुजाहरा। यहाँ पर ढोल जब बजाते हैं ढोल वाले तो सर के ऊपर टिकाना, इसको क्या कहना, जिस मटकी को, बड़ा मुश्किल है जो उन्होंने सर पे टिकाई हुई है। और साथ साथ वो हरकत भी देते हैं अपने जिस्म को, पूरे बदन को। एक्सीलेंट वर्क बाय देम। मुख्तार छछर 12 रन पे नॉट आउट है मैच 3 गेंदों में। इस मरतबा भी गेंद को खेलने में कामयाब हुए, गेंद टप्पे खाकर फील्डर के पास। यहाँ अंपायर इशारा कर रहे हैं डेड बॉल का, बिकॉज जब बॉलर बॉल कराने आ रहा था उसी वक्त अंपायर ने वेट कह दिया था, हमें आवाज़ भी आई थी। बॉलर उसके बावजूद उनके लॉ को, उनके इशारे को ब्रेक करते चले गए किसी तूफानी गाड़ी की तरह। एक ट्रेन जब फुल स्पीड से भाग रही हो तो उसको बीच रास्ते में रोकना खासा मुश्किल हो जाता है। जंजीर तो बिल्कुल नहीं खींचनी चाहिए वरना फाइन भी हो सकता है जनाब। जा सैयद नासिर जौहर जवान के कप्तान भी खुश नहीं थे, बट होता वही है जो अंपायर कहते हैं। जहांगीर को ये आखिरी बॉल दोबारा करनी पड़ रही है और बड़ा जोरदार शॉट, मुख्तार छछर यू ब्यूटी, वाइड ऑफ मिड ऑन, एक और छक्का। व्हाट अ वे टू फिनिश द इनिंग्स। आखिरी 2 गेंदों पे 2 छक्के लगे, 103 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए मलीर मलंग्स ने। मुख्तार ने भी 4 गेंदों पर 18 रन की जारहाना इनिंग्स खेली, अपना किरदार निभाया भरपूर अंदाज में। बिल्कुल यही बात हम इससे पहले कर रहे थे। इमरान अभी तक ज़्यादातर जिम्मेदारी उठाते आए थे अपनी टीम के लिए, लेकिन आज वो आउट हो गए या मुश्किल वक्त पे आउट हुए, तो मुख्तार ने बेड़ा उठाया और नैया पार लगाई अपनी टीम की। बिलाशुबा मुख्तार ने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया है। 4 गेंदें वो कुल मिलाकर खेले, 3 सिक्सेस उन्होंने हिट किए और अपनी टीम के स्कोर को काफ़ी स्टेबिलिटी फराहम की। कितने आए? एक ही आया ना छक्का? 2 छक्के, 2 छक्के। मैं करीब आप जीत गए। आप तो नहीं जीते तो कर हम दोनों ही नहीं, 3 छक्के नहीं लगे। जीत जहांगीर गए। वेल डन बाय हिम। ये हम हाइलाइट्स इनिंग्स की देख रहे हैं, भरपूर छक्के चौके लगे, विकेट्स भी गिरी। ये एक बहुत ही जोरदार हिट थी, ये आउटसाइड एज, विकेट कीपर का बड़ा शानदार कैच। देन बैट्समैन ने स्ट्रोक खेलते ही इशारा कर दिया कि छक्का हो गया है। ये मिसड्यूड शॉट था और साथ में कैच भी मिस हुआ। काफ़ी अच्छे स्ट्रोक्स रहे, बीच में ज़रूर कुछ कैचेस गिरे, कुछ विकेटें भी आईं, लेकिन फिर आखिर में मुख्तार छछर ने बड़ा अच्छा फिनिश किया इस मैच को और 4 गेंदों में 3 छक्के। पिक ऑफ इनिंग्स अगर हम देखें तो इमरान की उम्दा इनिंग्स थी 46 रन।
जौहर जवान्स दूसरी जानिब के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन पैचेस में अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया. एट द सेम टाइम बैटर्स रन्स पे रन्स लगाते चले गए और एक बार फिर जैसे कि KTPL में होता है छक्कों की बरसात नजर आई हमें. जी हाँ, ये सूरत हाल है यहाँ DHA मोइन खान एकेडमी में. अगली इनिंग्स शुरू होने को है और जिशान और FS मलक आपको ज्वाइन करने के लिए आएंगे कमेंट्री. Thank you so much, Rana Ashfaq. Yes, indeed, it's a very good batting performance by Malir Malang. Finally, they managed to score 103 in their allotted 6 overs. It was looking a little difficult, especially when Mimran was dismissed in the last over. But somehow they managed to score 18 runs in the last 3 deliveries, and now they have put up a respectable total on the board. What do you reckon about that, Palak? Yeah, Zishan, it's been a very good total, but let's see, as both of the openers are making their way to the middle, how they go about the job. Malir Malangs winning the toss, opting to bat first and posting a total of more than 100 runs is always more than acceptable in this type of game. Well, it's a very crucial game for Johar Jawans, considering the fact that they have lost their first 2 matches, and in one of the games they were just supposed to chase down 72, which they couldn't. And they lost that game by a big margin. They lost it by 36 runs. Now that is considered a big margin, especially in tape ball cricket. Yeah, they bowled brilliantly in that game, North Nawabs. They absolutely bamboozled them. One would have thought that they would have gone on to chase those 70 runs, but it was just amazing display of bowling. Arguably one of the best bowling display in this competition so far that we have witnessed. Yeah, they were hitting the right channel, but it's all going to depend on how these openers operate for Johar Jawans. Obviously, it's going to be an uphill task, because not only they're going to have to reach 103 first, then they will have to score a few more runs to have an extra lead for the second innings. And on the other hand, Malir Malangs obviously will be riding high in confidence, because they have already won 2 games. So their bowlers know how to restrict the opposition, especially when they have put up runs on the board in the first innings. Well, Zishan, the problem for the opening batters in this type of game, in the shortest version of the game, is that you have to keep going at a very good pace, and with that you have to make sure that you don't lose your wicket as well, because you cannot just simply afford to left the job to your other partners, because whoever is there at the middle has got to make sure that I'm here and it's my job, I've got to do it in the best ways. You see, Syed Nasir, the captain, has come out to open the batting. He's going to be facing the first ball of the innings. And his partner at the non-strikers end, Basit lefty. Now, he has had a mixed bag so far in this tournament. He scored a few runs in the first game, couldn't score runs in the second game. As an opening batter, I think it's very important that not only you get a good start, but you convert that into a big score. Something like Taimur Mirza has already done at least thrice in this tournament. But I tell you one thing, it doesn't take much of time, to get back into form. For these batters, they are all very dangerous. As we see, Majid Gholi will start the proceedings. He was one of the pick of the bowlers yesterday night, picked up 5 wickets. How often do you see a fast bowler, especially playing tape ball cricket, ending up picking up a 5-wicket haul? He's going to be starting the proceedings. He's going to be bowling the first over of the innings. Now, he has got runs to play with. He can afford to experiment. But the primary job is going to be to pick up wickets. Started off with a slower delivery, which wasn't picked by the right-hander. Now I'll keep mixing it up, and we will keep testing these batters, is Majid Gholi. He's got plenty of experience, and he knows his limits. He's known as Gholi, so it's pretty obvious that he has pace. So he will definitely mix it up and make the batters think. That is for sure.
Yeah, he was simply sensational in the previous game because not only he picked up 5 wickets, but he also did not give away many runs. He just conceded 17 runs, Majid. So he knows the art of bowling with tape ball. He has been exceptional so far in this tournament for Malangs, and that is one of the reasons why they have won the first 2 games. Once again, slightly slower, this time outside your stump. Good change up this from Majid. Well, it is intelligent bowling, I would say, because he knew that the batter was trying to make room and then stayed away from him and bowled it just inside the tram line. Good, intelligent bowling by MG. Yeah, although he was looking to give himself room by moving away from the line of leg stump, still he was looking to swing that on the leg side. Now we have seen that the fielding side usually do not place a fielder deep on the off side, so you can play over extra cover. Might be given as a wide. The Johar Jawans are going to get off the mark with 2 extra runs. A little unusual than normal. In the first 2 deliveries, they're off the mark, and that too with the help of wide. Mostly we have seen, Zishan, in this competition, the teams have started their account, have opened their account actually, with a 6, with a maximum. Yeah, even Nasir must have come out with a similar intention. So far, the execution has not been on point. But yeah, you can expect that from both these openers, especially when you're looking to put pressure back onto the bowling side. You need to get few boundaries right from the word go. That sets the momentum for the remaining batters to come if they lose wickets. Once again, outside the off-stump, this might be given as another wide. Yes, it is. Overcompensating on that occasion. Previous one was down the leg side. This time 2 wide outside the off-stump. Yeah, the idea was right, but direction wasn't so. He was trying to stay away. They are still trailed by 103 runs. Still no runs off the bat. Slower one, this time drilled down the ground. There's a fielder down there at long on. It's just going to be a run. Yeah, didn't get the elevation as he would have liked on that occasion. But he gets off the mark, does Nasir, the captain. And the left-hander, for the first time in this over, will be on strike. It's pretty obvious that with the left-hand, right-hand combination, always the fielding sides are at the receiving end if the batters are able to rotate the strike. But it's not only about rotation of strike as well. Here in tape ball, you got to keep on hitting those boundaries as well, which seems to have dried up in this over at least. Yeah, 2 fielders deep on the onside are at deep mid-wicket and long gone. That's where the batters have preferred hitting whenever they're looking to play those big strokes. Shot. This time he has managed to pull it. He has connected that well enough. That's going to run away for 4 down towards fine leg. Yeah, it's pretty hard to adjust for a bowler against the left-hander. He was bowling nicely, I would say, though he bowled a couple of wides to the right-hander as well, but always pretty tough job. Have a look at that. It was in the hitting zone. It was on the leg stump. Idea was right again, but the line wasn't. Yeah, true. The idea was definitely right because he was looking to surprise the batter with an attempted bouncer, but that didn't bounce as much as he was expecting it to. In the end, ending up giving a boundary. Swung away on the leg side. It's flat, it's hard, and it's all the way for 4 again. That fielder at deep mid-wicket did not have much distance to cover. Still, how well did he time that? Well, I tell you what, that has almost been speared away. On the leg stump, have a look at that. That is smeared away. 1 bounce 4. It went like a rocket to the boundary. Best part about that shot was, once again, it was an attempted slower one. He waited for it. So 2 boundaries in the last 2 balls of this over. 1 ball still remaining. Got off to a decent start, Majid Kohli, but now just losing his plot slightly. He's still going to come over the wicket to the left-hander. Mid-wicket has been asked to move a little squarer. A swing and a miss this time. The ball just hitting the body.
Good end to the over. This from Majid Goli. A dot balls 13 without a wicket. Johar Jawans. There you see this telecast of UBL Amin KTPL Season 3 is being broadcasted in more than 84 countries. Not only in Asia, but people in Africa, people in UAE, even people in America and North America, even Canada. They can watch this telecast live on multiple platforms, on their TV screens or on their phones. Yeah, there are many ways you can join us if you're not here in Karachi. Wherever you are in the world, this telecast is going worldwide. So 13 of the first over. They still trail by 90. The good thing is that they haven't lost a wicket as of yet, Johar Jawans. Just get the feeling it's the must-win game for Johar Jawans. Because we have seen that in the past as well. Ali Chota is going to be bowling the second over. We have seen that in the past when a side loses first two games. They just do not gain that momentum and they just kept on, losing the games. Because the opposition also targets you. They target your weakness and then they plan accordingly. At the moment, it's all responsibility on Ali Chota to back that performance by Majid Goli, who started the innings brilliantly. 13 runs on any day, I would say it's acceptable in tape ball cricket. And one of the reasons why Malir Malangs might have decided to bat first is because of the fact that Johar Jawans couldn't chase down in the second innings. In fact, in both the games, they couldn't chase down the target. Starts off with a fuller delivery that has been launched over mid-wicket. And I think that has gone all the way for six. Yes, the arms are allowed from the on-field umpire. Oh, son, you can't bowl there. It was in the slot. And he has really belted it hard with all the power he has. It went a country mile. He looks so relaxed out there, Nasir, just chewing his gum and making his bat do the talking. Good option. Was there an outside edge? It was not guarded by the wicketkeeper, but I just get the feeling the ball might have hit his shoulder. Yeah, comes back with a beauty afterwards, belted hard to mid-wicket. Have a look at that again. Nicely executed bouncer, surprised him, and he was all over the place. He never was in control of that attempted hook. Yes, indeed, he took his eyes off the ball. Still remember he was being disturbed in that first game, Nasir, and one of the spectators were putting up a light on his face. Outside the off stump, too wide. Two more added to the total. Actually, it's the fact that not only Nasir, quite a few batters we've witnessed that got those flashing lights going in their eye lines, in their sighters. I don't know, was it predominant or was it deliberate from the spectators, or whatever it wasn't good. We had a couple of pauses as well during this season 3. Maybe some of those fans wanted to get noticed by these star players. He goes straight. It's up in the air. Long on is trying to get underneath that. And that has been taken. Big wicket this for Malir Malangs. It's Nasir, the captain, who is going to be walking back. Well, I tell you what, the height of the ball even surprised our cameraman there. He wasn't sure too where that gone. It went into the moon, but not long enough. It was well caught. Those catches, look at that. It was a steepler coming down, and he grabbed it. It was the skipper under the ball, safe as a house. Nasir walks back after scoring 7. It's 21 for 1.
It's 21 for 1. We just witnessed Dawood Khan taking a very good catch. We have seen few drop chances as well, but Dawood Khan has been simply exceptional, especially when it comes to catching in the outfield. Yeah, apart from his batting, this is the one other aspect of the game he's known for. One of the best fielders in this competition. Shah Raza makes his way to the middle. The new batter for Johor Jawans at number 3. Number 3 is a very important position. I can tell you one thing, because in cricket ball, we see the best players come to bat at number 3. Starts off with a short delivery, once again beating the batter. Ball just hitting the body and ends up being a dot ball. Time to go towards Hina Didar, who is out there in the sidelines. Football thrill is going on at the DHA Moin Khan Academy, but with me on the sidelines are some fans, and Dr. Nauman Qureshi is joining me on the sidelines with his family. Assalamu alaikum. So, बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसे हैं सर? Enjoy कर रहे हैं टेप बॉल प्रीमियर लीग? Enjoying it. Very nice atmosphere, good venue, अच्छा माहौल है. Season 2 में भी support कर रहे थे, Season 3 में भी हैं. This time with the family over here, and the little one is enjoying herself. बिल्कुल सर, लोग आपको सुनना चाहेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा माइक ऊपर करें ताकि जो व्यूवर्स हैं वो आपकी बात सुन सके और ये जान सकें कि प्रीमियर लीग में किस तरह की रौनक लगी है क्रिकेट की. नहीं, it's very nice family entertainment. बड़ा अच्छा म्यूजिक है, entertainment drums हैं. क्रिकेट तो अपनी जगह है ही exciting. We're enjoying it with the family. Very nice environment family के लिए, and Karachi needs entertainment like this. Yes, definitely. मैं आपके मिसेस से भी बात करना चाहूँगी. यहाँ फीमेल फैंस भी हैं और आपको क्रिकेट पसंद है? किस तरह एंजॉय कर रही है क्रिकेट? Definitely, it's a very good experience and it's a very good environment. Yes. I really appreciate it because like this events, they doesn't happen that much in Karachi. How do you see the arrangements made for the fans? Very nice. Yes, and they're very safe and secure. That's the best part of it. We have this little fan as well. She's crying. Why are you sad? Oh, okay. So we have different fans here. They are happy. They are enjoying the Premier League. But now let's go back to the commentary box. Well, thank you so much, Hina. While you were talking to one of the family, we just saw 2 magnificent hits from the right-hander, and the last one was absolutely smoked over the side screen. Well, look at that. It's always treat to watch if you are a spectator. Never as a bowler. Tell you what, he can hit the ball really hard. With those 2 sixes. Yes, indeed. Shah Raza has made his intentions pretty clear. They might have lost their captain early on, but they're not going to die wondering. That's what they should do as well, because they're not reaching as low total. It's 103 they're supposed to get. And not only 103 they're going to be targeting at, they're going to be looking to get some more runs to add to the lead in the second innings. It's a good decision by the captain Dawood Khan to continue with Majid Gholi, because he's been in very good form and he's bowled the first over brilliantly. It was economical on the base of the competition, 13 runs. And it will be up against the left-handed Basit. As a fielding side's captain, Falak, what do you think? How many runs will a captain be satisfied from his bowlers at the end of the over? Well, anything, under 15 in this type of competition, in my opinion, is going to be acceptable. Yeah, because we have seen that previously in this tournament. Khurram Chakwal managed to hit 38 runs in the first over. Dawood Khan, in fact, when Malir Malangs were playing their first game, scored 34 in the first. Starts off with a good Yorker, just wide outside the off stump. Did not allow Basit to get underneath to the pitch of the ball. That was a very good length. I mean, it was right there up on the block hole. It's almost impossible to get underneath that type of length. So if he has the courage to bowl persistently in that type of area, he's going to be very effective. And so far, he's been effective, I would say, is Majid Gholi. Yeah, wonderful anticipation this from Majid Gholi, because he was expecting Basit to go over the leg side boundary. That's why he bowled it wider outside the off stump. And it gets a little difficult to fetch that ball that is pitched way outside the off stump. But Shah Raza has already hit 2 maximums in the previous over.
And as a batter, he's going to be looking to target the star bowler of the opposition. Once again, foxed by a slowness of the ball. Excellent change up this from Majid. Some mind games being played here between the bowler and the batter, Falak. You're right, but the batter on that occasion didn't have the idea about the line of the ball, had a wild swing at that, and he was never going to catch that. So, as a batter, yes, it's obviously the fact that you got to go after the bowling, but on the other hand, you got to pick your line, pick your length to hit the ball as well. You got to know and understand your strengths and your weaknesses as a batter. Yeah, I'll have to wait for the ball to come closer to his bat, especially when the bowler has delivered a slower one. Good Yorker, a really good Yorker. There is nothing he could have done about that, apart from a single that he collected towards long gone. Well, I like one thing about Majid Kohli, that he hasn't been predictable one bit. He's bowling outside the off stump, he's been changing his length as well, and he's been at the batsman all the time. It looks as if that he's playing with the mind of the batter. So he's a very intelligent operator. Just get the feeling he waited till the last moment, Majid Kohli, because in the previous delivery, Shah Raza was just shuffling across the crease. He moved a little wider outside the off stump, and that's why he targeted the boots of the right-hander. The captain, in fact, Basit lefty is now on strike. Just 3 runs. In fact, just 2 runs have been scored in this over. He bowls a low full toss, and that has been tongued over mid-wicket. They were looking for it, and Basit has delivered one. Now, that is the problem with this game, really. All of a sudden, you bowl a full toss, and there is no mercy, no respect for you. No matter if you are goalie or not, you are going to get belted hard. There you go. It's a fire, but this time from the bat of Basit. And it goes many a miles out of the ground for the maximum. That's why we say tape ball format is so cruel for the bowlers. And what does he do? He comes out with a perfect delivery. The margin of error is so minimum. You bowl 2 good deliveries, you do not get hit for runs. As soon as you lose your line and length, you get hit for 6. Osaka cricket tapes are being used to wrap these tennis balls that are being used here in KTPL Season 3. And I'm very impressed by the quality of the tapes as well, because when we used to play tape ball cricket in the streets, whenever we used to start hitting boundaries, the tape used to come off. But so far, I haven't seen that in any of the game in this tournament. Well, there has to be quite a bit of elasticity in the tape to keep that ball in play, because if there is no elasticity, the tape won't last long on the ball. Another swing. It's high and it's handsome. Second maximum of the over. And not a good way to finish off the over, this from Majid Kohli. Well, what a way to end the over. Have a look at that again. It was in the slot and it went many a miles. That's a big heave, really. A gigantic blow to finish the over in style. Have a look at that. Left-handed slog reminds me of big Chris Gale. Yeah, he used his bottom hand on that occasion to get the elevation and the distance behind that one. With that, it's 47 for 1, and it's going to be time in the change in the commentary box. It's going to be Farooq Riaz. Now it's going to be changing the commentary box, and I'm going to be replaced by Farooq Riaz alongside Kainat Imtiaz. Thank you very much, Falak and Zishan Khalid. 47 for 1 after 3 overs. Malang posted 103, and they're chasing this score at the moment. After that, the things will be set for the remaining 2 innings here. So far, so good. Pretty much even-Steven situation of the match. Shaw on 13 of just 5, Basit on 21 of 7. And what do you make of this start from Johar Jawans, Kainat? I'll say we cannot decide anything
just after the first inning. And we have Faisal Afridi, new bowler from Malangs. Malangs is quite a good side, and they have a chance to bounce back at any moment. Yes, indeed. It's still the same field position. The short third and short fine. And we have backward point here inside the circle. Deep mid wicket. Extra cover. He goes for it. Good swing of the bat. And look at that. That's gone many a mile. What a good strike that is. Absolutely muscled by Shah. Faisal did bowl on the right area, but again it was in the zone of the batter. A little bit of shot. And went back on the back foot and hit it over the top. Smashed it on the rise. And what a good strike that is. Good swing of the bat. He gave us everything to generate this power. And he deserved to get a distance, a real distance here. Number of gigantic sixes we have seen, and number of muscular blow from the batsman we have seen here. Fazal, the left arm quickie, and he's a good strike bowler, there's no doubt, but sometimes he leaks runs. Shah is not a strongly built guy, but he's off to a flyer here. His strike rate is over 300. I think Shah is going to hit straight now because he is asking for the spectators to move from there. And yes, indeed, Fazal is quite a good bowler. But again, he will have to get the line he needs. Good shot, good shot. Flick of the wrist. That is extraordinary from Shah. That is even better from him. 12 runs of the first two balls. Pressure straight away on Fazal. What an outstanding shot it was. Just flicking its wrist. It was a complete wrist shot. And a great, powerful one. Absolutely, just a flick of the wrist and pure power, pure skills from Fazal. These shots are more appreciated compared to the muscular shots. He applied his skills to the perfection here. He has to change his length for sure. Fazal is trying to find a block hole, but he is not getting the length right. Once again, swing of the bat, pulled it well along the carpet. Just one on this occasion. Some relief for the bowler. Well, sometimes when the batter is in charge, no line or no length can disturb the batter. And yes, right now, Shah was the batter who was able to put the ball wherever he wants to. Dugout is quite happy, but they know the job is not done yet. Still, they are halfway down. 15 balls to go to finish this innings, and they are around 43 runs short. So it is quite manageable for them to get some lead here. So any lead of 10 or more than 10, that will be really handy for the man in red, Johar Jawans. The first target will be to reach 103. Swing and a miss, full outside the off stump. He missed it completely. Wicket was offered. He was trying to drag it from outside the off stump towards the onside. It's turned out to be a dot ball. But the good thing was he did not throw his arms towards the ball only. His body was almost there. Also shifted from the pitch a little bit too. Piece of advice for Basit from Shah. It is turning out to be a good partnership. So 21 of 8 for Basit. Still is playing with a decent strike rate here. Big full toss, missed it. I think that hurt his finger. It doesn't seem to be all right. It's a big blow. High full toss. That smashed his ribs, in fact. He needs some attention here. It doesn't look okay out there in the middle. Well, sometimes tape ball can be dangerous too. But not too dangerous to be broken.
But yes, it was a full toss completely missed. I think it's inside edged. That's why it hurt a little bit more. Tennis was a tape was it's all right, but it can hurt you. It was a pacey delivery, and luckily he didn't fall over the stumps. The ball smashed his ribs here. He seems to be okay now. He won't leave the field, I guess, because he has got his bat back, and now we're close to be called a no ball as well. In fact, there's no ball given. In fact, he has a free hit signal. It was just above the waist height, and definitely smashed the ribs here. So rightly called a no ball. Will he take the revenge? I hope he's okay. 15 runs of the over so far. It's high. He has connected. Is it long enough? Oh, well caught, but it doesn't matter. It's a free hit. A couple of runs have been taken here. But it was a good shot. Well, straight is always usually the safest option. And I've seen it. Whenever it's a free hit, it's a catch. And when they don't have a free hit, it's mostly dropped. Chance should be taken. Gone. Certainly gone. Wicketkeeper covered the ground to his left. In the end, a simple catch for him and some relief and consolation for Fazal. He is struck here for his side, Malir Malangs, and Basit has to go. Not at all from the middle of the bat. Completely missed it and hit on the bottom. An easy catch for the keeper, and Fazal finally got his revenge. 23 for Basit lefty, 64 for 2 on the board. .64 for 2 on the board is Johar Jawans versus Malir Malangs. A much needed breakthrough here, picked up by Malir Malangs. A decent partnership has finally come to a close as Omar is an axeman in. He's also a left-hand batter. Let's see what he has to offer. For Johar Japan, still 2 overs to go. And they still have to get to that 103 mark. He has to attack right from the word go. Just 12 balls to go, and they are still away from 100. The man on screen, Shah, has been quite brilliant. He has showed great power hitting ability. You can see the score 26 of 8. And now Bahadur Rahman, the right arm fast, will bowl over number 5 of the innings. You have seen a number of fuller balls have been pelted for 6, but great exhibition we have seen from the bowlers who changed the pace, who took the pace off and to fox the batsman. And because normally the tape ball players are not habitual to deal with the slow ones, the slow bounces, anything outside the off stump with the massive reduction in the pace. Pulls it, catcher is a cry, gone, oh good catch, it's Dawood. He's safe as a house. Pulled it well, and Shah has been dismissed. It's a big wicket. Well, it was a good shot by Shah, but again taken an excellent catch by Dawood. It was a diving catch, especially because it was so flat that made it difficult. And again, running towards his left and catching the ball. It's always difficult. Lovely catch.
He had to move to his left, he's judged it well, and it's a precious wicket. Dangerous Shahraza has to walk back. 26 of 9 to his name, 64 for 3. Johar Jawans. Falak Bashir is the next man in. He's also very capable. Has come out of the middle after the fall of Shah. Perfect start from Ubaid. He hasn't timed it well enough. Could be out. It's in trouble. But the ball landed safely. Coming back for the second. Could be out. Could be out here. Fumble by the fielder. And a couple of runs have been taken. It's all happening in this over. The ball landed in no man's zone. And 2 runs in the end. Good running between the wickets. Well, again, this is also important. Every run counts. You need to have at least 2 runs if it's going to the boundary. He was in no position, completely surprised by the bouncer here. In the air, goes over offside. Glorious shot. 1 bounce over extra cover. Well, it was a beautiful shot. Always a beautiful shot when you hit it over extra cover. Again, excellent on the merit of the ball. Always good to watch any cover drive, any uppish cover drive or extra cover drive here. Outside the off stump half volley. And smashed it on merit here. Into the boundaries in a flash. Once again mistimed it. No chance to come back for 2. Every ball is important. Every run is important. And again, these next 2 balls are important for Johar Jawans to keep the scoreboard moving. So both fresh pair of legs are out there. So not many balls are left. So both are certainly capable. The right and left hand combination can do the job, and then they can take their side beyond 100. Flick of the wrist. Is it long enough? Somebody is positioning himself and got him. Good catch. Good catch. Umar goes out first ball. Good catching by Malir Malangs. The bowlers are not exactly on the right spots, but the fielders are, and helping the bowler get those important wickets for Malir Malangs. It was not a very well balanced shot, and in the end was caught halfway to the boundary. Umar went for 0. 71 for 4. So wickets keep falling here for Johar Jawans. Umar was the latest victim. He flicked it, he was caught comfortably, well inside the boundary. Now Moiz has come out of the middle. Syed Nasir, the skipper of Johar Jawans, mentioned they have added 1 extra batsman here. Exactly for these kind of situation to keep scoring runs. First ball for Moiz. Big full toss, could be out. Oh, dropped. Dropped here, Mimran, who has been extremely safe behind the stumps. Is it a no ball? A no ball given by the umpire. That is interesting, and Malangs players, they cannot believe it. Well, I can't believe it too. But again, I was expecting this to be a catch. And he got easy. The keeper got easy, even though had no run. But, well, yes, it was. It was almost. Actually, not almost, but it was
over the waist height. It's definitely a no ball. A free hit for Johar Jawans. Big bonus here for Muiz. The drop catch of a no ball. Now a free hit here for Muiz. Pitched up, struck it well, over long on, not quite. Good work. Good tag team work here at long on. Good to run out. The throw is wide. It's all happening in this over. Finally, the eventful over has come to a close. 5 gone. Johar Jawans 75 for 4. $75 for 4 here, Johar Jawans. And there is the boundary check. It seems to be okay. Well, Canada Pakistan women team won the second match on a trot on New Zealand tour, and they made a history here. So it must be a proud moment for you as well. Well, I can't even express how happy I was to wake up to this news that Pakistan won both the games. And again, it is a great honor right now to be representing Pakistan team here. And of course, the team is performing exceptionally well throughout, especially when it comes to bowling side. They're very composed, and this is the beauty, actually, that this is happening right now in New Zealand. First match they won by chasing, second match they won by defending. So great all-round show by Pakistan women team. Over number 6 about to begin here. Outside the off stump, and why Falak was trying to chase it. It was a huge wide outside the off stump. It's wide will go in the favors of Johar Jawans. Again, this 6 balls are important for Johar Jawans to get at least to their mark first and then to get lead. Maybe he was aiming to get a 6 over backward point. Certainly plenty of power required because it wasn't a very pacey ball. Ali missed the radar. So it starts off with the wide. Final over. Oh, missed it. Missed it. Better line, better result. Falak retains the strike. Is not interested to get off strike here. Falak seems to be interested in taking the strike. I think he's planning to go big and take that chance himself to score those runs for Johar Jawans. Plenty of encouragement for Ali here, who is into his second over. 1 for 20 in his first over. Smashed high in the air. Somebody is getting in the ball. Dawood Khan once again. Got him. He's an exceptional fielder. He doesn't miss many. It was a high catch. He kept his cool. In the end, no mistake whatsoever. Falak has to walk back now. Well, indeed, he was so well balanced and already underneath the ball. And this was so important. Again, every wicket is important for Malir Malangs. They want to go ahead with that lead already in the next innings. He's a magnificent fielder, Dawood Khan. Falak goes 77 for 4. 7 to Falak here. $77 for 4. Ali starts off with the wide and then a dot ball followed by a wicket here. He has been rewarded for being consistent with his line. And good catch again by Dawood Khan. 2 other guys were coming, but they left everything for Dawood because he's got the safe pair of hands. He called, yes, before coming underneath the ball, and that is important, the calling when you're fielding, especially under lights, because
you'd never know where the other fielder is. Low full toss, smack down the ground. Could be gone. Oh, wicket falls again. Good catch. He was on a hat-trick, Ali. They smashed it down the ground, and this catch wasn't an easy one. The fielder made it look so easy. It wasn't an easy catch, it was a running catch, forward running catch. Always difficult because you never know where the ball is going to land. It's more about the anticipation when it's a running catch. And again, an excellent catch in the end. The catching so far has been brilliant. Arif Palki went for 0, 77 for 6. Ali's on a hat-trick now. It's turning out to be a strong finish from Malir Malangs. The bowlers have done well to keep Johar Jawans away from 100 score. 103 they posted in the first innings, Malir Malangs. So any lead will help them a lot to register a victory. Syed is the next man in. Remember, Johar Jawans haven't off the mark on the points table. Full toss, mistimed, he's got the height. Somebody should catch it. Oh, dropped. Hat-trick missed here. A sitter has been dropped. Well, dropped from in between the hands. And the bowler does not seem happy at all. Because it was a hat-trick ball, and what do you expect? You don't expect the fielders to not be on your side. Well, hat-tricks are always remembered. It was a certain opportunity, full toss, and missed it. Is it TK or somebody else? Same fielder who picked up a catch, Majid Goli. It was much easier. Well bowled. Yorker on off stump. No run. Well, Ali is bowling exceptionally well. Not a single ball was the same. Every ball was different, a different variation. Either a Yorker or a fast ball or a slow bouncer. Well, the idea of adding extra batsmen hasn't worked for Johar Jawans. Moise 2 of 4, Syed 3 of 1. They kept losing wickets here. And this final over has been excellent. A real difference creator. Last ball of the innings. Big full toss. He's got the height. Will this be taken? Gone. Dawood Khan once again safe as a house. 4 wickets for Ali. And Johar Jawan innings has come to a close. 80 for the loss of 7 wickets in 6 overs. And that is how the last wicket fell. Full toss. And comfortably taken. Well, yes, I would say Malir Malangs have been exceptional in the field, except for a few dropped catches. But they will go with the lead, Malir Malangs, in the next innings. Moise went for 2. Johar Jawans are 80 for 7 in 6 overs now. The lead of 23 will be a healthy one for Malir Malangs, and they are in a commanding position to register their 3rd victory in a row. Whereas Johar Jawans, they have to perform really well now to bounce back. They missed the opportunity, especially in the last over. They really struggle to get boundaries and sixes. So discussion is going on. Time for the highlights of Johar Jawan innings. Pulled away for 4, the first boundary of the innings. And pulled away again to the onside. That went miles in the air, and finally it landed beyond the rope. Another high shot, plenty of high shots we saw. And a good catch by the first catch of Dawood Khan of the innings. And then a smash from Shahraza, who played beautifully. And there's a smack down the ground. Good clean strike.
shot from the left-hander here. Absolutely muscled away over long on. Then flick of the wrist. Top shot. Shot of the innings to me. And then caught by keeper. Held the outside edge. Mimran did well. And then catch taken by Dawood Khan. Superb catch. And it was the catch again. First ball duck. Comfortably held. This is where they lost some sort of momentum. Once again, high shot. And it's turned out to be an easy catch. Dawood Khan once again was a catcher. And full toss. Caught again at long off. That put the bowler on the hat-trick chance. And then the final wicket fell. And the last ball of the innings, Dawood Khan picked up another catch here. Great catching. Now back live here. That's the scorecard we have. 7 for Nasir, Basit got 23, Shah got 26, and after that no real contribution. In the end, with the help of 12 extras, they posted 80 for the loss of 7 wickets. Magnificent performance from Ali, 4 for 25, 9 for 27 for Majid Goli, 1 for 17 for Fazal, and 2 for 11 from Ubaidur Rahman. And it's time for the break, and after the break, we will come back with the second innings of Malir Malangs.
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी से, जहां पर यूबीएल एमीन केटीपीएल सीज़न 3 के मुकाबले जारी हैं। और ये दोनों अंपायर्स आपकी स्क्रीन पर जो इस तीसरी इनिंग्स को इस मुकाबले की ऑफिशिएट करने के लिए तैयार हैं। मलीर मलंग्स अपनी दूसरी इनिंग्स खेलेगा। 23 रन की सबकत उन्हें हासिल है पहली इनिंग्स की बुनियाद पर। और मुझे ज्वाइन किया है कमेंट्री बॉक्स में नसीम राजपूत ने। खुशामदीद। थैंक यू राना अशफाक। और मलीर मलंग्स की टीम ऑलरेडी 2 मैच जीत चुकी है और डीएचए दबंग को भी हराने में कामयाब हुई। और इस मैच में जौहर जवान्स के खिलाफ 23 रन की लीड भी हासिल है उन्हें, तो फिर फेवरेट दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त कुछ डिफरेंट करना होगा इस वक्त मलीर मलंग्स के इन प्लेयर्स को जो इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, रोकना होगा कम स्कोर के ऊपर। एक बड़ा मुश्किल टास्क होगा यहाँ जौहर जवान्स के लिए। बिल्कुल, क्योंकि 23 रन की लीड उनके पास ऑलरेडी है और अगर वो 100 रन भी मजीद बनाते हैं 6 ओवर्स में तो 123 एक बड़ा टारगेट देने में कामयाब हो सकेंगे। ये दोनों ओपनर्स जो दौड़ते हुए जॉग करते हुए मैदान में दाखिल हो रहे हैं और यकीनन ये टेप बॉल का फॉर्मेट है, 6 ओवर्स के मुकाबले हैं। बहुत ही खूबसूरत और उम्दा ये मोइन खान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड है और साथ साथ यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है डीएचए का वो इंतहाई कूल, काम एंड कलेक्टेड है। और यहाँ से समंदर भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो लोग न सिर्फ ग्राउंड में आकर खेल को एंजॉय करते हैं बल्कि एक सी व्यू का व्यू भी आता रहता है। ख़ासतौर पे जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ से हम सी व्यू का भी एक व्यू देख सकते हैं। ये दोनों बैट्समैन जो इस इनिंग्स का आगाज़ करेंगे और यकीनन ये चाहेंगे कि 23 रन के साथ साथ मज़ीद अच्छे रन बनाकर एक अच्छा टारगेट दिया जाए। रना, अगर हम बात करते हैं डीके की, दाऊद खान फ्रंट से लीड किया उन्होंने, क्रूशल मौके पे जाके अपनी टीम के लिए रन्स स्कोर किए और इसी वजह से उनकी टीम 2 मैचेस जीतने में कामयाब हुई, क्योंकि इमरान की भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही। लेकिन ये दाऊद खान पठान कैप्टन ऑफ मलीर मलंग्स फ्रंट से लीड किया इन्होंने अपनी टीम को, जिसका फ़ायदा अब तक हमने देखा कि पिछले 2 मैचेस जीतने में कामयाब हुए और डिफेंडिंग चैम्पियन डीएचए दबंग को भी हराया, जो इनकी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जब कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट करते तो दूसरे खिलाड़ी फिर ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक हो जाते हैं और दाऊद खान ने यही किया है, लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। और जिस तरह आपने जिक्र किया डीएचए पे इनकी फतह बहुत बड़ी थी डीएचए दबंग्स पर, क्योंकि 40 रन की लीड कंसीड करने के बाद कम बैक करना, फिर एक बड़ी टीम को हराना अपने आप में एक बड़ा कारनामा है। मैं समझता हूँ इनका मोराल बहुत बुलंद है। और दूसरे बैट्समैन इमरान हैं जो बड़े आउटस्टैंडिंग फॉर्म में चले आ रहे हैं और इस मैच की पिछली इनिंग्स में भी उन्होंने 46 रन किए हैं। बिल्कुल, मिमरान की ज़बरदस्त फॉर्म है और पिछला मैच आपको याद होगा डीएचए दबंग के खिलाफ मिमरान के रन थे जिन्होंने जिताया। सद्दाम शाह जौहर जवान्स के लिए कैसा आगाज़ फराम करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा अच्छा आगाज़ यहाँ जौहर जवान्स के लिए। पहली बॉल इस इनिंग्स की, जोरदार स्विंग किया अपने बल्ले को, मगर गेंद और बैट के दरमियान मुलाकात नहीं और गेंद गई विकेट कीपर के पास। मजीद ऐसी गेंदें करनी होंगी अगर एक छोटे रन्स पर रोकना है इनको। ऑलरेडी बोर्ड पर 23 रन दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट इनिंग लीड की सूरत में, तो जितनी डॉट बॉल्स होंगी वो प्रेशर क्रिएट करेगी मलीर मलंग्स पर। और 2 मैचेस हार चुके हैं जौहर जवान, एक टीम 2 मैचेस जीत चुकी है, एक टीम 2 मैचेस हार चुकी है, तो उनके लिए मस्ट विन गेम है ये जौहर जवान्स के लिए। बिल्कुल, और दूसरी जानिब मलीर मलंग्स चाहेगा कि वो अपनी विनिंग स्ट्रीक बरकरार रखें, जौहर जवान चाहेंगे कि वो अपना खाता खोलें पॉइंट्स टेबल पे। और इस गेंद को ड्राइव करने में कामयाब हुए, ऑफ साइड में गेंद गई रेगोशेड होकर और 1 रन इस दौरान बन गया। हालांकि फुल टॉस गेंद मिल गई थी यहाँ दाऊद पठान को, लेकिन मेरे ख्याल है वो बॉलर को थोड़ा सा चेक कर रहे थे। पहली इनिंग में भी ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर सके थे, तो चाहते हैं, ऐसा लगता है कि वो विकेट पर क़याम करें ज़्यादा से ज़्यादा। और वैसे भी क्योंकि 23 रन की बर्तरी है उनके पास, तो सोच रहे हैं कि अगर 1-2 बॉलें मैं देख लूँ, आराम से भी खेलूँ, तो शायद कुछ ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। सद्दाम शाह अच्छे बॉलर्स हैं। इमरान बड़ी हिट मारने गए थे, लेकिन यॉर्कर लेंथ पर ये गेंद था ब्लॉक होल्ड में, जिसकी वजह से डिसीव किया अपने पेस से सद्दाम ने इमरान को। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि सद्दाम ने अब तक बेहतर बॉलिंग का मुजाहरा किया है जहाँ तक इनकी टीम का ताल्लुक है। ये दोनों हजरात में से एक जो है वो चाय पीने में मसरूफ़ है, जबकि दूसरा बड़ी गहरी सोचों में गुम है। नॉट क्वाइट श्योर क्या सोच रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं। बहरहाल लोग यहाँ आते हैं, मुकाबले को एंजॉय करते हैं, ढोल की थाप सुनते हैं। इस
बार बड़ी हिट मारने की कोशिश, टाइम प्रॉपर नहीं कर सके थे, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर चूंकि सर्कल में थे इसलिए 4 रन हासिल हुए। यहाँ प्रॉपर टाइम नहीं किया था दाऊद पठान ने, लेकिन लकी रहे कि 4 रन मिले। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ना तो डीप मिड ऑन था ना लॉन्ग ऑफ था, फील्डर मिड ऑफ पे थे, ये हम देख सकते हैं। बिल्कुल मिसक्यूट किया उन्होंने, और मिड ऑफ का खिलाड़ी सर्कल के अंदर था, वो गेंद के पीछे भागे ज़रूर मगर फिर रोक ना सके और चौका मिला। ये गेंद रोकनी चाहिए थी नासिर को, टीम कैप्टन है जौहर जवान्स के, फील्डिंग होनी चाहिए थी। बिल्कुल बेहतर एफर्ट हो सकती थी और कम से कम वो 2 रन अपनी टीम के लिए सेव कर सकते थे। एक रन कीमती है। सद्दाम की अच्छी बॉलिंग को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इस बार बहुत ही अच्छा कनेक्शन, गैप हासिल करने में कामयाब हुए डीके, 4 रन हासिल किए। बड़ा खूबसूरत शॉट, इस मरतबा कोई सोच विचार नहीं, कोई दूसरा थॉट नहीं दिया इस गेंद को उन्होंने, ऑन साइड में गेंद को स्विंग कर दिया, राइट अप इन द स्लॉट जिसे कहना चाहिए बॉल थी, और डीप मिड विकेट पे कोई था भी नहीं, तो एक आसान चौका। बहुत ही अच्छी गेंद सद्दाम की, इस बार तेजी करना पड़ेगी दोनों बैटर्स को, और 1 रन बनाने में कामयाब हुए, और ओवर थ्रो की वजह से एक मजीद रन हासिल हुआ। यहाँ पर इस तरह की फील्डिंग अफोर्ड नहीं कर सकते जौहर जवान्स। इस तरह पहला ओवर मुकम्मल हुआ 12 बगैर किसी नुकसान के। मलीर मलंग्स इफेक्टिवली 35 रन उनके हो चुके हैं और अभी भी 5 ओवर्स बाकी हैं। क्योंकि पहला ओवर बेहतर किया और आखिरी गेंद पे थ्रो अच्छा नहीं था फील्डर का, जिसकी वजह से 1 रन भी बना और फिर दूसरा रन भी बना ओवर थ्रो की वजह से। कहीं ना कहीं फील्डर्स को काफ़ी जांफिशानी के साथ फील्डिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी फील्ड में। बिल्कुल, यहाँ पे 2 इनिंग की वजह से चांस होता है हर टीम को, और हमने पिछले 2 मैचेस देखे डीएचए दबंग अगेंस्ट मलीर मलंग्स 40+ रन्स की लीड लेने के बाद हार गए थे। उससे पहले एक और मैच हुआ था कि जहां 20+ रन्स की लीड लेने के बाद भी शिकस्त हुई थी। तो ये कोई बहुत ज़्यादा रन्स नहीं है, अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा मलंग्स को। फरहान बॉलिंग के लिए हैं, जौहर जवान्स के लिए क्रिक्वेस्टा एंड्स है। बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरी इनिंग्स की खूबसूरती यही है कि आपके पास एक मौका है, और ऑलरेडी जो मैचेस हैं उनमें से 2 मैचेस लीड कंसीड करने के बाद टीमों ने जीते हैं, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कम बैक करने के पूरे चांसेस मौजूद हैं। और ये भी अगर कंटेन कर पाएँ इनको 110-12 तक टारगेट का जहाँ तक ताल्लुक है तो मौका रहेगा। स्टंप से बाहर गेंद लाजमी तौर पे वाइड बॉल ही होगी, और वाइड बॉल में डबल पेनल्टी है। इस यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में 2 रन होते हैं वाइड की सूरत में। ये वो चीज़ है जिससे अगर बॉलर अवॉइड करे तो बहुत सारे रन्स बच सकते हैं। चलो ठीक है, चौके छक्के आपको पड़ जाते हैं, बैट्समैन भी अच्छे खेल रहे हैं, मगर ये तो बॉलर की सीधी अपनी गलती है कि वो वाइड के 2 रन कंसीड करते हैं, नो बॉल करते हैं तो 2 रन कंसीड करते हैं, बॉल दोबारा करते हैं, कभी कभी एक बॉल पे 8 रन बन जाते हैं, कभी कभी तो 13। बिल्कुल, ये टेप बॉल में रन जिस रफ्तार से बनते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त मंजर होता है। और इस बार इनसाइड एज, मिमरान की बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए फरमान। मिमरान इनफॉर्म बैटर जो अब तक जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, मलीर मलंग्स के लिए क्रूशल विकेट हासिल की यहाँ फरमान ने। बड़ी उम्दा गेंद कॉर्नर ऑफ द क्रीज से गेंद की बिग इनसाइड एज, और गेंद जाके टिम्बर पे टकराई और बेल्स डिसलॉज हो गई, और उसके बाद खुशी का इजहार किया और कहा यह है आपके डगआउट का रास्ता, और जा रहे हैं मिमरान 1 रन बनाकर, और बड़ी कामयाबी जौहर जवान्स की। बिल्कुल, अब तक के इनफॉर्म बैटर हैं मिमरान। मलीर मलंग्स की फतुहात में मिमरान का बड़ा नुमाया रोल रहा है, और ये बड़ी क्रूशल विकेट जौहर जवान्स ने हासिल की है। अब देखना ये है कि किस तरह मजीद विकेटें हासिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको आउट करना जो मेन हर टीम के 2-3 बैटर्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी। हाँ, ये भी बड़ी वैलिड बात है कि टीमों के पास ऐसा नहीं कि नंबर 8 नंबर 9 तक कोई बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, क्योंकि उनको पता है 6 ओवर्स का मैच है, तो 3-4 जो खिलाड़ी हैं बड़े अहम हैं। अगर आप अप फ्रंट उनको आउट कर लें तो फिर कम रन बनते हैं, जो हमने देखा है। कलीम बैटिंग के लिए है, राइट हैंड बैटर। बहुत
बहुत ही अच्छी बॉलिंग फरमान की जानिब से। सिर्फ एक रन हासिल हुआ। एक रन मेरे ख्याल है बहुत ही बड़ा बोनस होता है किसी भी टीम के लिए। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि एक रन भी किसी डॉट बॉल से कम नहीं है इस फॉर्मेट में। एक या दो रन इवन, 2 रन का मतलब है अगर हर बॉल पे आप 2 रन दें 12 रन, और 72 रन कोई बड़ा स्कोर नहीं है 6 ओवर्स में। इस फॉर्मेट में रन्स बनते हैं 100, 120, इवन 141 रन भी यहाँ बने हैं। लेकिन ऐसा भी हुआ कि माजिद गोली ने एक मैच में 5 विकेट हॉल हासिल किया, इरशाद ने 4 खिलाड़ी आउट किए, तो विकेट्स भी गिर रही हैं। बहरहाल देखते हैं कि अब यहाँ पर जौहर जवान्स आगे किस तरह की बॉलिंग करते हैं। इस बार थोड़ी सी अपनी लाइन को मिस किया था, जिसका भरपूर फायदा उठाया डीके दाऊद खान पठान ने। कैप्टन ऑफ मलीर मलंग्स 4 रन हासिल किए। बिल्कुल, इस मरतबा लेग स्टंप पर ड्रिफ्ट कर गए, स्ट्रे हुए, और बैट्समैन बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया डीप फाइन लेग से बाहर। इजी पिकिंग्स थी उनके लिए, चौका। अच्छा ओवर किया था अब तक फरमान ने, लेकिन एक लूज बॉल ने कहीं ना कहीं उनका मोमेंटम जरूर तोड़ा होगा। स्ट्रॉन्ग कमबैक फरमान का। इस बार अंदर आती हुई गेंद थी, गो की फुल टॉस थी, लेकिन ब्लॉक होल्ड में तकरीबन थी, जिसकी वजह से रिस्पेक्ट देना पड़ी कलीम को। बिलाशुबा फरमान बड़े पेनिट्रेटिव लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मौके नहीं दे रहे। इस मरतबा बैट्समैन जो थे क्रैम्प हो गए थे स्पेस के लिए, उनके पास इतना मौका नहीं था और हरडली उन्हें बैट नीचे लाना पड़ा। मलीर मलंग्स के डगआउट का मंजर। फरमान बड़े अच्छे अंदाज में बॉलिंग कर रहे हैं और उनके कैप्टन को उनसे उम्मीद भी यही है कि अगली 2 गेंदें भी अच्छी करें और पहला ओवर अच्छे नोट पे फिनिश करें। इस बार आउट होने का खतरा, फील्डर गेंद के नीचे, और यूं कलीम की इनिंग का खात्मा इस ओवर में फरमान ने ये दूसरी कामयाबी दिलाई है जौहर जवान्स को, और स्ट्रॉन्ग कमबैक यहां जवान्स का। 2 इनिंग्स का फॉर्मेट अपना रंग दिखा रहा है KTPL सीजन 3 में, और एक और ऐसा मैच होने जा रहा है, लगता है कि हो सकता है। ये हम देख सकते हैं आखिरी डिसमिसल ऑन साइड पे खेलने गए, बिग लीडिंग एज लगा और फील्डर के पास भरपूर मौका था कि गेंद के नीचे आए। उन्होंने अपने दोनों हाथों में गेंद को कैद किया। इस तरह एक और विकेट गिरी 20 रन पे। अब 3 खिलाड़ी आउट हो गए और कलीम 1 रन बनाकर आउट हुए। अभी 2 ओवर मुकम्मल नहीं हुए हैं और 2 विकेटें गिर गई हैं और बोर्ड पर ज्यादा रन्स नहीं है, तो इसका मकसद है कि 23 रन की लीड कंसीड करने के बाद जौहर जवान्स ने जो कमबैक करना था वो जरूर कर लिया। अब इसको मेंटेन कैसे करते हैं ये देखना होगा। दूसरी जानिब मलीर मलंग्स को किसी एक बैटर से बहुत अच्छी बैटिंग दरकार है। उनके कप्तान दाऊद पठान अब भी क्रीज पर मौजूद हैं। जी हाँ, और मुख्तार बैटिंग करने के लिए आए हैं, जिन्होंने पहली इनिंग्स में बड़े अच्छे छक्के लगाए थे और इनिंग्स को बड़े हाई नोट पे फिनिश किया था। 4 गेंदों पे उन्होंने 18 रन स्कोर किए थे। अब उनका इम्तिहान है, क्योंकि फरमान 2 खिलाड़ी इस ओवर में ऑलरेडी आउट कर चुके हैं। ओह, बहुत अनलकी रहे यहाँ पर के लेग स्लिप में खड़े फील्डर के बहुत ही करीब जाके कैच गिरा, वरना ये तीसरी कामयाबी इस ओवर में लेके जाते हैं। वेरी वेल बोल्ड फरमान। 8 रन 2 आउट अपने पहले ओवर में, जिसने कमबैक कराया जौहर जवान्स को। 2 ओवर के बाद 20 पे 2, वेल बोल्ड फरमान। अब नसीम इफेक्टिव स्कोर जो है वो 43 है, यानी 43 रन हैं। 24 गेंदें बाकी हैं। अगर ये 40-50 रन मजीद कंसीड करते हैं अगली 24 गेंदों पे, तो इसका मतलब है कि इनसाइड 100 से कम का टारगेट जो है वो मिलेगा और वो चांसेस होंगे कि उसे चेज भी कर सके। रना हमने देखा है कि 100 रन का टारगेट तो बहुत ही ज़्यादा अचीवेबल होता है। 90-100 रन अचीवेबल होते हैं, लेकिन उससे ऊपर जब टारगेट जाता है चौथी इनिंग में वो थोड़ा सा दुश्वार हो जाता है। हमने देखा DHA दबंग और क्लिफ्टन पॉपुलर के मैच में बहुत करीब चले गए थे क्लिफ्टन पॉपुलर, लेकिन मैच फिनिश नहीं कर सके। तो चौथी इनिंग खासी प्रेशर में खेलना होती है,
तो जितने कम रन्स में जवान्स रोकते हैं उनको फ़ायदा होगा। और मलीर मलंग्स जो रन्स करेंगे अपनी बॉलिंग पे भरोसा रखें, क्योंकि माजिद गोली बहुत फॉर्म में। बिलाशुबा इस बात में कोई शक नहीं, माजिद गोली ने तबाहकुन बॉलिंग की थी पिछले मुकाबले में। और इस बार अच्छा कनेक्शन, लेकिन बाउंड्री के हाथों में थामे गए। इस तरह दाऊद खान पठान, बहुत ही बड़ी विकेट यहाँ जौहर जवान्स ने हासिल की, मच नीडेड विकेट। फील्डर्स की खुशी का ठिकाना नहीं। इस गेंद को अच्छे अंदाज में एक तरह से फ्लिक किया था, मिडिल हुई गेंद, मगर उन्होंने पिकआउट किया एक फील्डर को जो कंट्री साइड्स में मौजूद था, और साइड ऑन दौड़ते हुए कुछ टेरिटरी कवर करते हुए बड़ा उम्दा कैच। और मायूस कुन अंदाज में डीके लौट रहे हैं 16 रन बनाकर। 20 पे 3 मलीर मलंग्स पर प्रेशर। यह है यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के एक इनिंग में आप लीड लेने के बाद बहुत आसान होके ना बैठें, बल्कि आपको दूसरी इनिंग में भी उसी तरीके से परफॉर्म करना पड़ता है। और ये ग्रेट लिविंग लेजेंड जावेद मियादाद का कॉन्सेप्ट था। जावेद भाई ने ये मशवरा दिया था कि एक इनिंग के मैच नहीं होने चाहिए, 2 इनिंग में एक इंटरेस्ट जनरेट होगा। और वो दिखाई देता है कि जब हमारे मुल्क के टॉप क्लास बैटर्स को भी मौका होता है कि वो 2 बारियां लेंगे, उनके जो फैंस आए हुए होते हैं वो देख रहे होते हैं। उबैद बैटिंग के लिए हैं बहुत ही मुश्किल कंडीशन में। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा उनका आइडिया था जो वर्क कर रहा है, और इस कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग को दूसरी लीगों से अलग भी कर रहा है एक तरह से, क्योंकि दूसरी लीग्स हम देखते हैं कि एक ही इनिंग्स पर मुश्तमिल होती हैं, और यहाँ 2 इनिंग्स का फॉर्मेट है। अबादुर रहमान अब आए हैं, देखते हैं वो किस तरह अपनी इनिंग्स का आगाज़ करेंगे। सद्दाम दूसरा ओवर कर रहे हैं और अच्छी गेंदें सद्दाम की जानिब से। इस बार भी एक ही रन हासिल कर पाएंगे दोनों बैटर्स। बहुत ही अच्छा कंट्रोल दोनों टॉप बॉलर्स ने अपनी टीम को दिया है और प्रेशर जनरेट करके रखा है। बिल्कुल पूरी तरह से दबाव डाला है। हालांकि दाऊद खान बड़े अच्छे बैट्समैन, निमरान बड़े अच्छे बैट्समैन, और ख़ास तौर पे उनके आउट होने के बाद अब मुख्तार के कांधों पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस बैट्समैन है। उन्हें खुद मुख्तार बनना होगा यहाँ। और इस बार थोड़ी सी खुद मुख्तारी जरूर दिखाई मुख्तार ने, और सामने की जानिब जोरदार छक्का। जी और देखें क्राउड को, सायरन सुने, ये लोग बहुत कुछ अपने साथ लाए हैं इस मैच को एंजॉय करने के लिए। ये देखें क्रीज के कोने से आगे गिराई हो, ये गलती है। इतने बड़े बड़े बैट, फ्लैट ट्रैक और फिर ओवर पिच, ओह गुंजाइश नहीं है, छक्का लगेगा। और जो सेलिब्रेशन दिखाई देती है मलीर मलंग्स की, जो आप अभी स्क्रीन पर भी देखी, ये जफर अब्बास जो टीम ऑनर है, उनके दोस्त, उनके सारे लोग आते हैं और एक अलग ही जश्न होता है। और 2 मरतबा उनकी टीम मैचेस भी जीत गई पिछले दोनों। ज़बरदस्त, और आज भी वही तवक्को कर रहे हैं और बाकायदा साजो सामान साथ लेके आए एंजॉय करने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए। मुझे याद है वेस्ट इंडीज़ में एक दफ़ा हसन जलील साहब से बात हो रही थी, वो वहाँ थे। उन्होंने कहा राना साहब यहाँ तो लोगों के पास लकड़ी, थाली, जो चीज़ हाथ में आ जाए वो बजाना शुरू कर देते हैं। स्टंप से बाहर गेंद, 2 रन वाइड की सूरत में हासिल हुए। और यहाँ पर KTPL सीज़न 3, यूबीएल अमीन KTPL सीज़न 3 अपने तमाम रंगों, तमाम कलर्स के साथ DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी में जारी। तीसरा कामयाब एडिशन। हेड्स ऑफ टू जोहर, नसीर और उनकी पूरी टीम, और हमारे तमाम स्पॉन्सर्स के भी हम मशकूर हैं जिन्होंने स्टेप इन किया है, इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सरशिप दी है और इस टूर्नामेंट की खूबसूरती और रानाई में 4 चांद लगाए। और अच्छी गेंद यहाँ सद्दाम की। दोनों टॉप ऑर्डर बॉलर्स ने अपनी टीम का कमबैक कराने में नुमाया रोल प्ले किया, और अब तक खुल के नहीं खेलने दिया है यहाँ मलीर मलंग्स को। और जो एफर्ट दरकार थे राना, वो एफर्ट दिखाई दिए। बिलाशुबा इस बात में कोई शक नहीं कि बहुत उम्दा बॉलिंग। मुजम्मिल अथर, जौहर जवान्स के टीम ऑनर, जो अभी तक टेंस में, हालांकि उनकी टीम कमबैक कर गई है। ये अब तक सोचो विचार में मसरूफ हैं क्योंकि 2 गेम्स हारे हुए हैं। और लेग स्टंप से बाहर गेंद, 2 रन्स का और इजाफा। आप सुन सकते हैं बहुत सारे सायरन्स।
रना आप देखिए इस ओवर में सिर्फ 7 रन बने थे, लेकिन 2 वाइड बॉल्स कंसीड करने की वजह से मजीद रन्स बने। ये हमारी बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की टीम, ओवैस लोधी, बिलाल, अर्श, नसीर साहब और ये मैनेजमेंट का हिस्सा है और बड़े अच्छे अंदाज में ये मैनेज कर रहे हैं तमाम चीज़ों को। आखिरी बॉल से पहले 4 वाइड के रन्स दे दिए यहाँ सद्दाम ने, जो एक मोमेंटम बना हुआ है उसको ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ, अपनी उम्दा कारकर्दगी पे एक तरह से पानी फेरने की कोशिश है इन खुद की कि 4 रन ये दे। बिलफर्ज इस गेंद पे छक्का लग जाए सपोज तो 10 रन पे एक गेंद जो है फिनिश होगी। हालांकि 7 रन पे 9 रन पे फिनिश हो रही थी वो। जी हाँ, पूरा ओवर जो है वो बड़ा अच्छा जा रहा था। तो ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी सोच विचार की ज़रूरत है बॉलर्स को कि ख़ास तौर पे लेग स्टम्प से बाहर जब भी आप भटकेंगे तो बड़े चांसेस हैं कि वो वाइड ही हो। इस बार सद्दाम की गेंद गाइड करने में कामयाब हुए स्क्वायर लेग की जानिब, फील्डर गेंद को नहीं रोक सके। इस तरह 4 रन हासिल हुए और आखिरी गेंद अगर हम देखें तो फिर 8 रन बन गए उसमें। जी हाँ, ये KTPL की खूबसूरती है कि एक गेंद पे 8 रन भी बनते हैं, एट टाइम्स 10 रन भी। लेग स्टम्प से बाहर स्ट्रे कर गए और चौका लग गया और 3 ओवर्स के बाद 37 हो गया स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। और तब्दीली हो रही है हमारी कमेंट्री टीम में, आ रहे हैं फलक शेर और जिशान खालिद। Thank you so much, Rana. 37 for 3 after 3. As you could see, you can watch this telecast across 84 countries through different platforms, through Africa, Willow TV in Canada, America, Sub-Sahara, Sahara, and obviously Geo Super, providing all this production all the way from Karachi. I've got Zishan with me. Zishan, it's looking pretty even, Stevens. Indeed, Falak. In fact, I think Johar Jawans right now are on the top of the game because not much runs have been scored by Malir Malangs. Yes, they were leading by 23 runs at the start of this first innings, but the fact that they have lost 3 batters, and we are talking about top 3 batters who have done bulk of the scoring so far for them in the tournament, all of them are now back in the dugout, so it's not going to be easy for Ubaid or Mukhtiar, although they did sort of gain some momentum in the last over, but still, I still believe Johar Jawans can grab this game from the scrub of the neck. And continuing in his merry way is Farman, the bowler. His partner Saddam wasn't that bad, just giving away a little bit of extra runs towards the end of the spell in the last over did Saddam. But it's been a very good display of bowling, one should say, because they've picked up 3 important wickets of the batters who were looking pretty dangerous, and they've been managed to stop the scoring rate to some extent as well. That is more than acceptable. And this time, it's a connection. He has bludgeoned away over cow corner. That is a majestic 6. Just look at how wide that ball was outside the off stump. Still, he managed to hit that towards the longest side of the ground over mid-wicket and hit that comfortably over the fence. That was some hit. Yeah, he chosen the longest part of the ground and he really needed to middle that. And boy, did he middle that. Full toss this time. Ubaid doesn't manage to get under it. A little bit of misfield at corner. It's all happening there. Falak Bashir even at the boundary couldn't gather the ball properly. Well, I get the feeling a little bit of dew is there. So maybe a little bit of slippery stuff is going on. That's why these fielders are not able to grab the ball properly. Yeah, definitely dew does play its part, especially at this particular venue, because it gets a little slippery, especially when the fielders are running around in the outfield. There you see even the bowler is trying to dry the base of his shoes with that towel that has been placed at the start of his run-up. Johar Jawans are well within a chance of restricting the opposition on a low score. Again, didn't get the timing on that occasion. So we'll take a single and that will bring
Mukhtar on strike, who too is in very good form. I think it was a very good decision from the captain of Johor Jawans to stick with the bowlers that have bowled well previously in this game. Farman and Saddam, they have bowled well in this partnership. We talk about partnership between the batters, but it's the partnership between the bowlers that are bringing Johor Jawans back into the game. Twice in this tournament, we have seen a side having a lead, ended up losing that game. Is it going to be the case here for Malangs? Well, still, lots of overs remaining in this game. Player to miss. Well, you were talking about the bowlers' partnerships. Who can forget the partnership between the great Ws from Pakistan, Wasim Akram and Waqar Yunus, Curtly Ambrose and Courtney Walsh? Those were the partnerships. And to a certain extent, between Sean Pollack and Makarvin Tini, and obviously Glenn McGrath and Brett Lee, there were quite a few partnerships. Those have to be remembered as this game goes on. Well, you're missing out a name. Sean Pollock used to bowl magnificently well alongside Alan Donald, who had serious pace whenever he used to charge in, especially in those wickets of South Africa, which does offer so much bounce for the pace bowlers. Outside edge and grabbed gladly by the keeper. He says thank you very much, and typical celebrations of Farman. He's amongst the wickets tonight. It's third for him. 2 for Saddam and now 2 for Farman. Once again looking to hit that a country mile. All he managed to do was to get an outside edge and taken by the wicket keeper. And he's very satisfied now. The bowler Mukhtar has now been dismissed, walking back after scoring 10. It's 46 for 4. Malangs are 46 for 4. Aziz Ahmed has come out to bat at number 6. Someone needs to play a blinder here for the batting side. They still need tons of runs to put up a respectable total on the board, although they are still leading by 69. But the way they have bowled so far, Johor Jawans, doesn't look like that they are in a mood of giving away any extra runs tonight. And obviously, by bowling that well, at the moment, the momentum is definitely with the bowling side. As we see, Jahangir Khan has got the ball in his hands to bowl the next over, second last over of the innings. And it will be Ubaid facing him. From a different angle, a different strike, and it's gone all the way. That's brilliantly hit. Did not miss the length by much, Jahangir Khan, just by a few inches. Then look at that shot up jam from the right-hander. It went flat and over the boundary ropes. Straight like an arrow. You just can't hit straighter than that. Right over the head of the bowler. Well, fast bowlers don't like get hit over their heads. Let's see what's going to be the response from Jahangir Khan. Ubaid is looking good though. He goes again. This time it's even bigger. That's out of here. See you later. Come on, son. I need a piece of it, says the batter. Once again, it was in the slot and outside the off stump. He got the room he was waiting for. He freed his arms and hit it comfortably over long off. Back-to-back maximums. Then he thumbed that down the ground. It went a long, long way. And he's enjoyed it, really. Seems to be in a serious mood. Oh, this time doesn't quite get hold of it. Inside edge, a dot delivery. But definitely there is an intention that this guy is absolutely going to take him to the cleaners, is about. Yeah, Johor Jawans now sense an opportunity because the two bowlers who are bowling well are bowled out. The new bowler, Jahangir Khan, is bowling his first over, so obviously he's going to be under some nerves. And Malangs batters are making full use of that. And as soon as he has missed his lane on 2 occasions, he has been dispatched over the boundary ropes.
Yeah, on paper, he's a slightly lesser bowler. You can't underestimate anybody here. But if you bowl like that, you're going to travel all night along for these type of gigantic blows. Well, 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 that was a skimmer. 3 big hits on 3 different regions of the ground. This time it was length outside the off stump. He still managed to hit that over mid-wicket. Each 6 being bigger than the previous one. Well, it looks as if he's in competition with himself to hit bigger 6s in this over. And he goes again, this time doesn't get the elevation, will be a single. Well, a ball before that 6, Zishan, was struck by Ubaid was just an incredible hit. He took it from outside the off stump. It was on about 7th or 8th stump, and it was a good length. How did he manage to get under it and smack it over mid-wicket? Unbelievable. Boy, these guys can bat. Yeah, exactly. Both these batters are expecting pace from Jahangir, who hasn't shown any variation so far in this over. Outside the off stump, will have to re-bowl. Aziz Khandro is facing now. He has been just watching the action from the other end and enjoying the onslaught from his partner. And now, after a little bit of consultation between both of these batters, Khandro will be facing his first delivery yet again. He's got the best seat in the house, watching all the action from the non-striker's end. Yeah, at times it's the best scene just to stay at the non-striker's end. Yeah, that's a good delivery. Oh, he's made a mess of it. That is not acceptable at any level. That is not going to do any word of good to his bowler. And they got the perfect result in the last ball of this over. They got 2 runs. That means Ubaid is now going to be on strike at the start of next. After 5, it's 69 for 4. $69 for 4 after 5, and there you see the VIPs in Harun Rashid, Mushtaq Mohammed, the great captain of Pakistan, Tausif Ahmed, the big names of Pakistan cricket. Kainat Imtiaz also alongside Pakistan women cricket team's player, our fellow commentator. Have a look at that towel, managing, just trying to keep their boots as dry as possible, these bowlers. So definitely an indication there is a lot of dew. Sherry, the new bowler, given the responsibility to finish off the innings now. And there you go. Welcome to the arena. Wow. These guys are absolutely merciless. These are very valuable runs towards the end of the innings for Malir Malangs. Once again, Sherry missing out his length, bowling it wide outside the off stump and short. There's nothing much you can expect from the batter who has been in such destructive mood. And he's hitting them and clearing the boundary by a long way. He's going big. This time he goes over cover. This won't go all the way. But I think it's trickled over. Yeah, it has trickled over eventually to the boundary. Didn't carry it on the full, but a boundary nevertheless. Yeah, another evidence that there is dew falling at this ground. The ball just skids along the turf. The fielder tried his level best to chase that one, but it was the ball who won the race in the end. There you see, once again, the VIPs fully involved into this context. Oh, slurring pace maybe well disguised. A rare dot delivery. Yeah, change of pace this time from Sherry. Might have been a leg cutter that just pitched and moved away. There you see Zohair Nasir, the chairman of Karachi Table Premier League, is having a word with one of his guests. And our fellow commentator and Pakistan women cricketer Kaina Simtia sitting alongside them. We've got Harun Rashid, Tausif Ahmed, Mushtaq Ahmed as well. 3 balls now remaining in the innings. Oh, he's hit that hard, but it's only going to be a single.
Oh, they look for two. Here's a trouble, and he gets out on the non-striker's end. Well. It's all happening here. I would say he's sacrificed his wicket because they are into the last over, but there was never a run. Yeah, as soon as he struck that, he wanted to come back for the second one, but it went straight into the hands of that fielder, and there was a slight mix-up. He wasn't expecting the throw to come as it has, and he was definitely looking at the fielder, but by that time it was a little too late for the batter. A wicket falling down in the last over. A bit of an anti-climax to this innings of Malir Malang. They've lost yet another wicket, 4 down with 80 runs on the board. Received a round of applause from the dugout, did Ubaid, because he's played a blinder here towards the end of the innings and made sure that their lead once again now has been stretched above 100. So it's going to be a match. That will take some chasing, really, when they came out to bat. Shaji, the new batter in at number 7 for Malir Malangs, with just 2 balls now remaining in the innings. Well, they still lead by 102. That's a significant lead for Malir Malangs, and that is only because of the fact that they have managed to score some valuable runs in the last 2 overs. Kandro is going to be on strike. He goes downtown, he goes flat, and he goes all the way. 1 bounce 4. That was a skimmer, a lusty blow. Yeah, it was almost a perfect delivery, but look at how deep he is inside the crease, and that almost carried all the way for 6 as well. Still a very good result, this from Malir Malangs. Another boundary. Yeah, it was as straight as an arrow. He's really thumped it down the ground. Would love to finish things off in style as well. Shaji is the batter on strike. And this time he's got the length but couldn't get the elevation as he would have liked. It's going to be a single. They will look to get another one, but it's not there. Another run out, just a couple of run outs towards the end of the innings. Yeah, they had no other option left. He was looking to get a boundary of the last ball, hit it all across the turf towards the fielder on the leg side. He wanted to come back for the second run, but it was an easy run out at the wicketkeeper's end. So they could only score 1 run in the last ball of the innings, which means Malir Malangs are going to finish off at 85 for 6. Well, credit to the fielders of Johar Jawans as well for executing those run outs towards the end of the innings. But they've managed 85 for 5 in their 6 overs. A roller coaster ride this innings for Malir Malangs, because in the first 3 overs they could only manage to score 37 for the loss of 3 wickets, but they have managed to score 48 in the last 3, which means now they have got a healthy lead. Here are some of the highlights. This is how he started, did Pathan. Saddam Shah was picked for a couple of boundaries, and then he was knocked over inside edge onto the stumps. A boundary to fine leg, a miscued one, and there were 3 of them converging. One of them took the catch at the slip cordons, and a good catch at deep mid wicket as well. Saddam Shah was picked for another 6 here, this time over mid-off, and it was a big blow over cow corner, outside edge, and another wicket went down by the bowling of Furman, and another big heave. We have seen quite a few this night. Just towards the end of the innings, Ubaid with those big hits, and a couple of run-outs were executed just towards the end of this innings. Have a look at that again. Yeah, this performance from Malir Malangs showed that they have got the ability of making comebacks. They have done it in the past as well in this tournament, and even tonight when they were in all sorts of trouble at 3 wickets down really early in this innings, they have still managed to score 85 in their 6 overs.
That means the opposition, that is Johar Jawans, that are going to be needing 109 in their allotted 6 overs to win this game, which is going to be their first victory if they can manage to chase that target down. But tell you what, it's not going to be easy for the batting side. It will definitely take some chasing. 109 in the 4th innings, never easy. No matter which place you are playing, which version of the game you are playing, 4th innings is a 4th innings. So there will be a pressure, and the other thing is that they haven't registered their victory as yet as well. So it will be a gigantic task to chase this target as both of the openers are making their way to the center. And with that, we are going to change the commentary as Rana Ashfaq and Farooq are lining up to take you through for the next 3 overs. Thank you very much, Falak and Zishan. Johar Jawans needing 109 runs to register their first ever victory in this KTPL Season 3. Let's see if they can chase it down. On the other hand, Malangs will look to have their 3rd victory in a row under their belt. They've got a very good bowling side, particularly Goli bowled extremely well in the previous match. Let's see what he's going to come up with. And I've got Farooq. Farooq, welcome again. Thank you very much, Rana. The final innings of this game, and so far we have seen great stuff, great batsmanship from the man in green, Malangs. They are certainly on the driver's seat as they have posted a big score, and they have to climb a Mount Everest. Syed, Nasir, the skipper of Johar Jawans, he has to fire up to earn a first victory for their side. Basit left, who played well in the first innings. He has to step up as well. He has to play a blinder today to help his captain. He's someone who can play big strokes right from the word go, and who can play big innings as well. This is Majid Goli, who already has taken a fifer in this tournament. The very fine bowler. He knows his limitations fully well. He knows where to pitch the ball at what batsman and what to do against the certain batters. The first 2 overs are so important that will set the tone of this run chase. Field restrictions is being applied for the first 2 overs, and they have extra margin to go over the infield and convert boundaries into 6. So it's all set here for the final innings here. Umpire signals, let's play, gentlemen. The last innings of this match is getting underway here. Here's Majid Goli steaming in. And first one is hit back, and hit back with the power over wide long on for a massive 6. What a way to start the proceedings. What a magnificent shot. What a shot that is. Outside the off stump, he waited for the ball, just a touch, slow one, and he didn't swing his bat early. And what a good blow that is. Right off the middle. He's got the height, he's got the length. Lovely start. He gets that away. Wide of the fielder at fine leg, and it raced away in an eye flash. Runs have started to flown. Boundary here after a 6. Leg side full toss. There was a man down there, but it's comfortably cleared. He knew straight away. Syed Nasir, there was no protection. Not the best of timing, but it's what's good enough to at least pick up 10 of the first 2 balls. Nasir is looking in a relentless mood at the moment. 109 is the target, and they've already scored 10 of first 2 balls. He goes again, but fielder is there. Who doesn't make any mistake at the long on boundary? Majid Goli is saying, you hit me a 6, then you clobbered me a 4. Now it's my turn, and go back to your dugout. Look at that. It's Dawood Khan, who was so busy as a catcher, and once again he's got the opportunity. No mistake whatsoever. An easy chance for his standard. A cameo is over. 10 of 3, 10 for 1 on the board. Johar Jawans. This over has been a mixed bag so far for Majid Goli. And there you see the spider or the drone camera. Our production team is doing a terrific job
And this picture is being taken by the drone camera. Let me tell you that. Cricket has been modernized through this technology. Geo Super's production team doing a terrific job here. They are showing you every possible angle of the ground, every possible angle of the game. Early exit for Syed Nasir, who didn't strike well enough and was caught just inside the boundary. It was flat, but not high, not long enough. Shahrazad, who played a blind in the first innings, is in good form too. Majid Kohli certainly got his tail up after taking a very vital wicket of Syed Nasir. Now he's going to bowl to Shah. There you see, wicketkeeper standing back. He has short third man on his right. He has short fine leg on his left. Outside that off stump, batsman bent his knee. Did try to heave it away onto the onside, but it has been called wide. Couple of good runs. The target is over 100, so there is some sort of pressure on Johar Jawans, and they have lost the previous 2 games. So there is always an element of risk in every ball with them. But one thing for sure, there will be some entertainment for the audience. A precious dot ball. I thought for a while, and I thought he would give it a wide, but it wasn't the case really. It wasn't a good delivery from him. He got away with that. Shah could have put away over fine leg. There was no protection, and that is why he was absolutely livid with himself. A waste of an opportunity. He's going to get one. Will he going to get the second? No, he won't. So he's quite happy with the single. He gets off the mark, and strike is given back to Basit. This is the trophy these all teams are playing for, and of course they're going to get prize money as well. This is not the only thing what they are playing for. They're playing for money as well, and they surely will get. For that race, the competition is on. Johar Jawans, they are in search of their first win. Basit is taking strike. And straight away, he goes bang over long on. That's a good hit right out of the screws. Wow, what a shot. He absolutely belted away outside the off stump. He took it from outside the off stump, and what a powerful strike that is. Enormous strike from Basit. Over finish on a high note. Although they lost a wicket of their skipper, that is some strike. 19 for 1 after the end of the first over. Now they are requiring 90 runs more for the victory in 30 balls with 9 wickets intact. So far they haven't done any batch. I think they started off innings well with a 6 and a boundary, but Majid Kohli made a comeback by taking the wicket of Syed Nasir, but then Basit lefty finished the over on a high note by smashing him over wide long on for a massive 6. 90 to get of 30 balls here, so they have to clip the striker of 300 if all the batters if I talk about. And the bowlers of Malangs, they have to be careful as well as giving extras is concerned, and also they have to be disciplined as far as length is concerned. Half volleys won't be got away with that. Ali Chota has been given the responsibility to share the new ball. Ali Chota doesn't mean that he's 9 or 10 years old. Chota is his nickname, and Shah tried to hit that one onto the onside.
He didn't make any contacts. That one pitched a bit back, then it took off a little bit. Not only the half volley, but also the half striker can be punished. And here, Ali is very lucky that there was no contact whatsoever. So it's not a kind of a start Shah was looking for. 1 of 3. We've got good spectators in watching this match here at DHA Sports Club. Another good delivery from Ali Chota. Ali Chota must be saying to the batsman, "मैं छोटा सा एक लड़का हूं पर काम करूंगा बड़े-बड़े." He bowled a couple of dot balls. He's absolutely frustrated with himself. Shah, 1 of 4. He's a far better player than this. He's struggling with his boots as well, I think. "19 for 1. 90 are required of 28 deliveries. The required run rate is creeping up all the time. It is almost 19 per over at the moment, or even 20, because 2 dot balls have been faced by the batsman." Another good delivery. This is very, very nice piece of a bowling from Ali Chota. It is turning out to be an absolute defining over of the innings. And we see a number of times the batsmen tend to lose their form. He was so brilliant in the first innings, Shah, and he's really struggling. He's playing like a tail-ender here in this innings. 2 of 5. Would you believe it? And this is the gloomy dugout. Again, they feeling that they are little behind of the game. 89 runs required of 27 balls. Not an easy task at all. Asking rate is creeping up with every dot ball. Now left hand Basit has come out of the middle. 6 of 1. Lot is depending on him. Very well bowled. This is seriously a terrific piece of bowling. Ali Chota doing wonder for his team. They are certainly feeling the pressure, and that is why they are unable to connect anything. The first Shah and now Basit, who missed it, and 3 dot balls in the over and just single conceded. Top class stuff this from Ali. Will he finish on a strong note? There you see the drone camera again. Ali Chota hardly putting a foot wrong here. He's doing a terrific job. It has to be appreciated. Yes, they are appreciating it. This is great bowling. Outstanding stuff. Pace is not everything. He's also taking some pace off. He's bowling on different length. He has kept the batsman guessing. But he's struggling with his shoes though, but still bowling well. Something is stuck in his one of his shoes, or in both the shoes. The best thing is he hasn't conceded wide or no in this over. It is some kind of rarity in this competition. Thank you for coming, gentlemen, and thank you for watching. They are smiling away. Oh, come on. This time it is going, and gone out of the boundary. What a magnificent stroke. Right out of the screws again. That was in the radar, and he punished that away. Absolutely tonked that. What a good shot. That is low full toss, and he smashed it way back. Some consolation for the batting side. Still a good over. 26 for 1 after 2. They're still in this game. 83 runs could be chased in 24 deliveries. Although average has gone over 20 per over. Almost 21 runs per over. But it is gettable in tape ball cricket. Nowadays even it is gettable in international cricket. Basit lefty is showing some credentials, showing some cuts, showing some bravery, playing gallantly. He's got 12 or 4 deliveries, struck a couple of sixes, and both were big and long.
Today is slightly warmer, slightly humid, and you saw the players and umpires taking drink. But still a great conditions for cricket here. And this format has its own beauty because it's so important to show your mental compatibility, mental strength as well, because batsmen have to show their fitness, physical fitness as well as mental fitness to stay in the game. Shah got to put his foot on the accelerator now because he has scored just a couple of runs out of 5 balls that he has faced. So he's struggling, his strike rate is well below par. We've got to press the accelerator right from this ball. Majid Goli coming in from the far end. And Shah has given this a go. And given this a go beautifully. I think it bounced once before it get over the line. 4 more. He wasn't in real control, but nevertheless he's got a boundary. Nobody was out there. So some luck he needed, and he saw straight away whether there is any protection or not. The mid-wicket fielder covered a lot of ground, but placement was good. On the first bound ball, travel over the boundary. So decent start of the over for Shah. Run a ball 6 for him. 79 to be made of 23 balls. This one is played away onto the onside. He take 1. This is all what he's going to get. As he starts running, pupils start saying goalie, goalie, goalie. It is lightning atmosphere. He got a lot of fans on his back, the Majid Goli. Yes, a well-known name in table cricket, and he has to deliver. So far, he hasn't been bad. 1 for 24. Just 4 balls to go to finish full quota of 2 overs. It's very important for Jawans' perspective. Bassett should take maximum strike here. 12 of 4 to his name at the moment, and is ready to launch a big shot again. KTPL Season 3 being watched throughout the world. It's Jio Super's production. Bassett has lofted him over long off. What a beautiful shot. Umpire is lofting his arms for signalling, and that's a terrific stuff from Bassett. He's keeping this game alive for his team. Absolutely. Wit provided, and he absolutely slammed it down the ground. Lovely shot. Straight as an arrow. There was nobody out there, but it didn't matter because it cleared the boundary by a long way. Lovely shot. He's the man in form. Will he continue in this fashion? He smashed the ball straight down the ground with the horizontal bat. Wow. I would love to say it's short, yeah. 37 for 1 they have gone up to. Still requiring 72 runs for the victory in just 21 balls. He has swung it away and swung it away in the air and cleared the boundary by a big margin. Bassett left a little beauty. This game is alive. Crowd is going crazy here. Wow, what a batsmanship that is. Once again, he was in complete control, dropped the ball short and picked it up from outside the off stump. Good swing of the bat, good swing of his body, and it traveled into the trees. Sensational stuff. Oh, big wild shot at that one. He cropped at that one, I would say, trying to flock that away over wide mid-on, didn't succeed. Had it been contacted, had the contact been made, that would have sailed over the boundary or would have sailed out of the ground. Every dot ball is important for both sides. It's still a good over for Johar. Jawans, 17 of it. Will he get the third 6 of the over? He gets that away and gets that away into the gap. Straight down the ground for 4. What a nice way to end the over. Bassett not only scoring runs but also keeping his team alive in this match. What a shot that is. Hard and flat. Absolutely spanked it. He's the guy who has kept the hopes alive. There was a protection at long on and long off, but there was no chance whatsoever. Straight as an arrow. 47 for 1.
47 for 1 is the score, and now we have change in voices. Zishan will be with FS Malik, and I would love to hear them in Urdu. बहुत शुक्रिया राना इशफाक, आप बेताब थे हमारी उर्दू कमेंट्री सुनने के लिए, तो हमने भी स्टेप इन कर लिया है। जबकि बॉल थमाई गई है अली छोटा को, इनके कांधों पर भारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ऑन स्लॉट जो है पिछले ओवर में जीशान देखा है कि लेफ्ट हैंडर जो हैं बासित, उन्होंने कोई रहम नहीं दिखाया। इस दफा बड़ी हिट लगाने गए थे यहाँ पे शाहरजा, लेकिन कनेक्ट नहीं कर सके। सिर्फ एक ही रन से यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा जॉर्ज जवान्स को। जी हाँ, 17 रन बटोरे थे पिछले ओवर में, और हमने 2 बड़े छक्के देखे थे जो बासित लेफ्टी के बैट से निकले थे। अब तक इतने रन नहीं बना सके हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन उनको पता है कि बहुत ज़रूरी मैच है आज इनके लिए जीतना और एक मोमेंटम गेन करना, क्योंकि 2 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं आज इनके लिए। बासित बड़े बासलाहियत बैट्समैन है, और पिछले ओवर में उन्होंने अपनी सलाहियत मनवाई भी है, और उनकी टीम जौहर जवान्स जो है वो इसी किस्म की तवक्को करेंगे कि ये टिल द एंड अपनी इस ऑन स्लॉट बल्लेबाजी को जो है वो जारी रखें। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए, अली छोटा काफ़ी तेज़ गेंदबाजी करते हैं, और तेज़ गेंदबाजी के साथ साथ जब बासित इस किस्म के मूड में है तो थोड़ी सी अक्लमंदी भी दिखानी पड़ेगी यहाँ पे बॉलर को। फुल टॉस बॉल, जोरदार हिट लगाना चाहते थे, इस मरतबा कनेक्ट नहीं कर पाए। एक और डॉट बॉल और अपने घुटनों पर बैठ गए हैं। देख लें, बहुत ज्यादा तवक्को कर रहे थे कि इस गेंद पर उन्हें शायद विकेट भी मिल सकती थी। जी हाँ, लो फुल टॉस थी, अंदरूनी किनारा लिया था बैट का, और हमने कितनी दफ़ा देखा है अंदरूनी किनारा लेने के बाद बॉल स्टंप्स को भी जाके हिट कर जाती है। अली छोटा ने काफ़ी नपी तुली बॉलिंग की थी अपने आगाज़ में, एक ही रन दिया था शुरू की 5 बॉलों पे, लेकिन आखिरी गेंद पे एक छक्का खाया था इन्होंने बासित लेफ्टी के बैट से। कोशिश करेंगे कि उसी तरह की बॉलिंग करें अपने इस आखिरी ओवर में। जी हाँ, बहुत ही कम अरसा में इन्होंने बहुत नाम बनाया है, और अब्दुल हकीम से इनका ताल्लुक़ है, ज़िला खानेवाल। दाएं हाथ के बॉलर हैं, अपनी अगली गेंद के लिए तैयार अपनी बॉलिंग के निशान से। इस मर्तबा छोटी गेंद कर दी थी और इसको सजा देने में कामयाब हुए हैं। जिस तरह चाह रहे थे उस तरह कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 4 रन जरूर मिले हैं। जी हाँ, पिछली गेंद काफी बेहतर थी, लेकिन इस दफा काफी पीछे गेंद गिरा बैठे और लेग स्टंप पे थी, इसको पुल किया। हालांकि नजरें नहीं थी बॉल पे जब वो पुल करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी इतना कनेक्शन मिल गया था कि यहाँ पे 4 रन हासिल किए बासित लेफ्टी ने। एक सनसनीखेज मुकाबला जारी है मलीर मलंग्स और जौहर जवान्स के दरमियान। इस चौके के साथ अपने 50 रन भी मुकम्मल किए बैटिंग साइड ने, 52 एक विकेट के नुकसान पे। यहाँ बहुत ही अच्छी फाइट यहाँ पे दिखा रहे हैं, खास तौर पर बासित लेफ्ट हैंडर 109 रन के ताकुब में। इस मरतबा हवा में, ये हवाई बॉल है और देखना होगा कि 3 फील्डर नीचे आ रहे हैं और गेंद फिर जाके नो मैन्स लैंड में गिर गई है। काफी देर हवा में रही थी गेंद, लेकिन फील्डर्स चूंकि बहुत डीप हैं, इस वक्त सिर्फ बाउंड्रीज ज्यादा रोकने पे उनका फोकस है बजाय इसके कि विकेट हासिल करें। इस वजह से ये गेंद जो है वो नो मैन्स लैंड में जा गिरी। जी हाँ, काफी देर बॉल हवा में रही और अगर आप नोट करें, माजिद गोली थे डीप मिड विकेट पे और दाऊद खान थे लॉन्ग ऑन पे। अगर दाऊद खान चाहते तो कैच तक लपक सकते थे, लेकिन क्योंकि माजिद गोली ने शायद कॉल कर ली थी, इसीलिए बॉल दोनों के ही बीच में जाके गिरी। एक बहुत अहम विकेट यहाँ पे हासिल हो सकती थी मलीर मलंग्स को, लेकिन किस्मत की देवी साथ दे रही है बासित लेफ्टी का। जी हाँ, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव क्रिकेट में कहा जाता है, जो कि काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। जब आप एंटरप्राइजिंग स्टफ से खेलते हैं, दलेरी के साथ खेलते हैं, तो यकीनन किस्मत भी आपका साथ देती है और चीज़ें जो है वो ज़्यादातर आपके फेवर में ही जाती हैं। सिर्फ किस्मत से नहीं, यहाँ पे भरपूर मेहनत भी करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को अगर इस हदफ के करीब करीब पहुंचना है तो।
मेहनत की बात की जाए तो कोई कमी नहीं है, जिस किस्म की स्ट्रोक खेल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे हैं यहाँ पे। लॉन्ग ऑन के हाथों कैच थमा बैठे और टिपिकल सेलिब्रेशन, अली छोटा की टिपिकल सेलिब्रेशन डिजर्व भी करते थे। और ढोल की थाप जो है वो भी आप सुन सकते हैं ग्राउंड से बाहर। ग्राउंड से बाहर आवाम का जो वलवला है वो भी दीदनी है। यहाँ काफी आगे गिरी हुई गेंद थी। अली छोटा अपने मखसूस अंदाज में बासित लेफ्टी को पवेलियन की राह दिखाते हुए कलाइयों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन सिर्फ 34 रन बना के ही पवेलियन लौटे हैं। और इसी तरह दूसरे विकेट का यहाँ नुकसान उठाया है जौहर जवांस ने। चौवन रन के मजमूई स्कोर पे दूसरी विकेट का यहाँ पे नुकसान उठाया है जौहर जवांस ने। और जिस तरह की नपी तोपी बॉलिंग अली छोटा और माजिद गोली ने की है, काफ़ी क्रेडिट मोहम्मद समी को भी जाता है, जो कि इनके डगआउट में रेगुलरली मौजूद हैं और अपना तजुर्बा इनसे शेयर कर रहे हैं। फलक बशीर आने वाले नए बल्लेबाज। जी हाँ, टेप बॉल क्रिकेट पाकिस्तान में ये वाहिद खिलाड़ी हैं जो मेरे हम नाम है। रहीम यार खान से इनका ताल्लुक है, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, मोर ऑफ बैटिंग ऑलराउंडर। इनकी बैटिंग जो है वो ज्यादा मशहूर है इनकी बॉलिंग की निस्बत। अली छोटा जोरदार हिट लगाई है और अपनी अनाउंसमेंट की है, लेकिन यहां पे एक और कैच पकड़ने में कामयाब हुए दाऊद पठान। फिर से हमने देखी वो टिपिकल सेलिब्रेशन। अली छोटा की स्लॉट में थी गेंद, पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि बाउंड्रीज भी यहां पे बहुत बड़ी हैं, तो क्लियर करना बहुत मुश्किल। ये देखें टिपिकल सेलिब्रेशन, गालिबन पवेलियन की राह दिखाते हुए फलक बशीर 0 रन पर आउट, 0 बनाने के बाद आउट। जी हाँ, अगर दाऊद खान की अगर हम बात करें तो सिर्फ बैटिंग ही नहीं बल्कि अपनी फील्डिंग की बदौलत भी काफ़ी अहम किरदार अदा किया है इन्होंने मलीर मलंग्स के लिए। तीसरी विकेट का यहाँ पे नुकसान उठाया जौहर जवांस ने। फलक बशीर अपनी पहली ही गेंद पे बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे, लेकिन बदकिस्मत रहे कि दाऊद खान लॉन्ग ऑन पे मौजूद, और हमने आज तक कोई भी इनको नहीं देखा कि इन्होंने कोई भी कैच गिराया हो इस टूर्नामेंट में। उमर आए हैं नए आने वाले बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं ये भी। अब जीशान अगर देखा जाए तो इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो गई है यहाँ पे जवान्स के लिए। 54 पे 3 आउट हैं, 2 ओवर्स का खेल बाकी है और यहाँ पे अभी भी 55 रन इन्हें स्कोर करने हैं अगर ये मुकाबला अपने नाम करना है तो। यहाँ मशतक यही बात करते हैं कि एक ओवर, एक अच्छा ओवर बॉलर की तरफ से और मैच का पासा पलट सकता है। आप देखें अली ने सिर्फ 6 रन कंसीड किए और 2 विकेट्स चटखाने में कामयाब हुए। उबैद रहमान आने वाले नए बॉलर, दाएं हाथ से गेंद करते हैं। यही ना हमारी प्रेजेंटर चैटिंग में मसरूफ, एंजॉय कर रहे हैं तमाम क्रिकेट लवर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं ग्राउंड में। यकीनन KTPL सीजन 3 से एंजॉय होते हुए, और इस मर्तबा पीछे पड़ी हुई इस गेंद को खूब सजा दी है। स्क्वायर लेग बाउंड, कनेक्शन लाजवाब था और इस बार फिर एक लाजवाब कनेक्शन देखना होगा। गेंद जाएगी यहां लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का। शाह रजा ने हार नहीं मानी है, उनको अभी भी लगता है कि वो अपनी सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को जीत की राह पे लेके जा सकते हैं। बहुत एलिवेशन और उससे भी ज्यादा दूर जाके गिरी इस दफा बॉल। जी हाँ, स्लॉट में मिल रही हैं इनको गेंदें और देखना भी गवारा नहीं किया, उन्हें पता था कि मिडल कर दिया है और ये छक्का ही होगा। बड़े कॉन्फिडेंस, बड़े एतमाद के साथ बल्लेबाजी करते हुए यहां पे शाह रजा। इनका इनफरादी स्कोर 20-10 गेंदों का अभी तक इन्होंने सामना किया है और अपनी टीम की उम्मीदें जो हैं उनको अभी तक जिंदा रखे हुए। और फिर से जोरदार हिट लगाने गए थे ऑफ स्टंप से बाहर, डॉट बॉल, बहुत कीमती डॉट बॉल ये।
जी हाँ, शाह रजा इस उम्मीद से थे कि अंपायर शायद इसको वाइड बॉल करार देंगे क्योंकि काफ़ी ऑफ स्टंप के बाहर थी, लेकिन एक अच्छा इंतखाब किया यहाँ पे उबैद ने, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद की और बहुत आगे गिराई। शाह रजा को कोई मौका नहीं दिया कि वो पिच के अंदर आ सके और बड़ी हिट लगा सके इस दफ़ा। और शॉट मिस करने के बाद अपने आप से काफ़ी नाखुश भी दिखाई दिए। ऐसा लग नहीं रहा कि वो 109 के हदफ तक पहुँच सकेंगे। अब तक इस टूर्नामेंट में 2 शिकस्त का सामना कर चुके हैं और जिस तरह से हालात हैं ऐसा लग रहा है कि तीसरे मैच में भी उनको खाली ही हाथ जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें बॉलर को भी क्रेडिट देना चाहिए उबैद को, 2 छिक्के लगने के बाद वापसी करने में कामयाब रहे हैं, 2 डॉट बॉल्स और 1 सिंगल। और फिनिश अच्छा नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्लॉट में कर दी है गेंद और सफर किया है दूर का। यहाँ पे एक और छिक्का इस मर्तबा उमर ने अपने हाथ खोले हैं। जी हाँ, ऑफ स्टंप के काफी बाहर लेकिन काफी आगे गिरा बैठे उमर, अपनी पहली ही गेंद खेल लेते हैं और देखें कितना दूर जाके खेले हैं। लंबे तरीन छक्कों में शुमार होगा इस छक्के का जो उमर ने अपनी पहले ही गेंद में लगाया है। जिशान, हमने इस टूर्नामेंट में बहुत छिक्के देखे हैं लेकिन जो लेफ्ट हैंडर के बल्ले से निकलती है शॉट वो काबिल दीद होती है। 5 ओवर्स के इख्तिताम पर 73 पे 3। ओके सर। फजल आफरीदी को थमाई है गेंद जी और 36 रन दरकार हैं आखिरी ओवर में। शाह रजा को हर बॉल बाउंड्री के बाहर फेंकनी होगी अगर ये मैच जीतना है तो। फजल आफरीदी पहले ही बॉल को भेज दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री की जानिब, लेकिन इनफ लेग्स नहीं थी, क्लियर नहीं कर पाए। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ने में कामयाब। एक और विकेट गिर गई है और यहां पर बहुत ही मुश्किल होती हुई इक्वेशन, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जी हाँ, जोन में बॉल मिली थी और इंतखाब भी अच्छा था। स्क्वायर लेग के ऊपर खेलना चाह रहे थे लेकिन प्रॉपर टाइम नहीं कर सके और एक अच्छा कैच यहाँ पे स्क्वायर लेग के फील्डर की जानिब से। तो इसी विकेट के साथ मजीद उम्मीदें दम तोड़ती हुई यहाँ पे जौहर जवान्स के लिए। शाह रजा 14 गेंदों पे 21 रन बना के पवेलियन लौटे। 4 विकेट के नुकसान पे जौहर जवान 73 रन। इसके साथ ही चलते हैं डाउन स्टेयर्स, देखते हैं हिना के साथ कौन है। Thank you so much. So only 1 over is left for the final decision of today's second match, which is being played between Johar Jawans and Malangs. But with me on the sidelines is Mohammad Rehan Iqbal, CBC board member. Thank you so much for joining us, sir. अस्सलाम वालेकुम। किस तरह enjoy कर रहे हैं? बहुत अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत अच्छा इनकरेजिंग मैच हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है ये मैच को देखकर। इंटरेस्टिंग मैच है और काफ़ी स्पॉन्सर और काफ़ी अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है, देख के बड़ी खुशी हो रही है। Yes, definitely. Well, टेप बॉल क्रिकेट लीग है और दिस इज द 3rd सीजन और सारी अरेंजमेंट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट का मैच, ये फाइट, ये कंपटीशन किस तरह लग रहा है आपको? बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा फाइटिंग मैच हो रहा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ग्रीन वाले जो हैं टीम मलीर मलंग्स जीतेगी इंशाल्लाह। यस, डेफिनेटली। वो अपने लास्ट 2 मैचेस भी जीते हुए आए हैं और आज भी काफ़ी ज़बरदस्त फाइट नज़र आ रही है। साथ साथ इससे पहले भी सीजन आपने ज्वाइन किया है, यहाँ पर आए हैं? मैं आज फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ और मैं काफ़ी इनकरेज हुआ हूँ देखकर और मेरी ख्वाहिश है कि जो रेजिडेंट्स हैं फेज़ 8 के और डिफेंस के वो भी आएँ, पार्टिसिपेट करें, देखें, क्योंकि ये क्रिकेट को हम लोग सपोर्ट करेंगे, यंगस्टर को सपोर्ट करेंगे। तो ये मेरा मैसेज है तमाम रेजिडेंट्स के लिए, खुसूसन डिफेंस के और फेज़ 8 के। तो ये लोग आएँ, मैच को देखें और इनकरेज करें स्पोर्ट्स को और क्रिकेट को। बिल्कुल ज़रूर आएँ और फैंस और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और यहाँ तौसीफ साहब और बड़े बड़े प्लेयर्स आए हुए हैं, जावेद मियादार साहब और ये सारे हमारे लेजेंड्स हैं जो आए हुए हैं। तो हमें भी आना चाहिए और देखना चाहिए। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं। की टीम के एफर्ट्स के हवाले से क्या कहेंगे? इंटायर टीम ने काफ़ी एफर्ट्स किए माशाल्लाह से। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इवेंट किया इन्होंने और बहुत अच्छी स्पॉन्सर और चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किए इन्होंने। चलें जी, वेल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द साइड लाइन्स। एंजॉय करें मैच को एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द कॉम बॉक्स।
बहुत शुक्रिया है ना। और इस मरतबा देखा है ड्यूरिंग द इंटरव्यू एक सिंगल आई और एक डॉट बॉल, जिसका मतलब है कि आफरीदी जो है उन्होंने अपनी लाइन पकड़ी है और बहुत ही उम्दा बॉलिंग जो है वो जारी रखते हुए। और ये मैच ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, बस जो रस्मी कार्रवाई है वो बाकी है, 2 गेंदें बाकी। जी हाँ, अपने टारगेट से नहीं चूके। फजल काफ़ी फ्रेश थे, पहला ही ओवर करा रहे थे अपनी इनिंग से और आखिरी भी था। 36 रन थे इनके पास बचाने के लिए और बिल्कुल भी जोन में बॉल नहीं दी। पहले ही गेंद पे शाहरज़ा की बड़ी विकेट हासिल करके काफ़ी एतमाद मिला होगा इनको और उसी को यहाँ पे कैरी ऑन भी किया है। सिर्फ 2 रन ही दिए हैं मजीद 3 गेंदों पे। इस मरतबा उठा दिया है, बहुत देर की मेहरबान आते आते। यहाँ फील्डर वहां पे मौजूद थे मिड विकेट पे, वो इसने कलाइयों का इस्तेमाल करके बॉल को उठाया और 6 रन बटोरे। जी हाँ, छिक्का जरूर लगाया था लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। स्ट्रोक की दाद जरूर देनी पड़ेगी बल्लेबाज को। और फिर से यहाँ पे कवर्स में खेल दिया है और गेंद जा रही है बाउंड्री की जानिब। यहाँ पे भी चौका मिल जाएगा लेकिन मैच जो है वो हाथ से निकल गया है यहाँ पे और जौहर जवान्स जो हैं वो मैच हार चुके हैं। जबकि बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दाऊद पठान एंड कंपनी की जानिब से, जितनी इनकी तारीफ की जाए कंप्रीहेंसिव विक्ट्री इन द एंड। जी हाँ, 3 आउट ऑफ 3 फॉर मलीर मलंग्स। इस दफ़ा भी अपने टारगेट का दिफा करने में कामयाब हुए हैं और 24 रन के बड़े मार्जिन से यहाँ पे कामयाबी समेटी है। उनके मद्दा और उनके फ्रेंड्स ग्राउंड में जाते हुए यकीनन आज एक खुशी का समा होगा मलीर मलंग्स के लिए। एक अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब हुए थे और उसका बखूबी दिफा भी किया और जितनी तारीफ इनकी बॉलिंग की जाए उतनी ही कम होगी। फजल आफरीदी ने बहुत अच्छा आखिरी ओवर कराया और माजिद गोली और अली छोटा ने जिस तरह आगाज़ फराम किया था काफ़ी मुश्किल कर दिया यहाँ पे जॉर्ज जवान्स के लिए। जी हाँ, इनके बॉलर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी फॉर्म में हैं, ख़ास तौर पर माजिद गोली और फजल। जिस तरह हमने देखा कि बहुत ही अच्छा आखिरी ओवर किया उन्होंने और कप्तान जो हैं उनकी कैचिंग फॉर्म जो है उनकी बैटिंग के साथ साथ वो भी टॉप लेवल पे जा रही है। और मलीर मलंग्स जो हैं उन्होंने यकीनन अपनी जो प्रेजेंस है वो यहाँ पे फील करवा दी है बाकी टीमों को। पहले तीनों मैचेस जो हैं वो अपने नाम कर लिए हैं। ये प्लेयर्स के हैंडशेक करने का मंजर आपके सामने। यहाँ 3 मैचेस में 3 फतह हासिल करके एक पैगाम पहुँचा दिया है बाकी 7 टीमों को कि मलीर मलंग्स इस दफ़ा यहाँ टूर्नामेंट अपने नाम ही करने आए हैं और उनके ओनर जफर अब्बास भी काफ़ी खुश और मुतमईन होंगे। कप्तान और बासिर लेफ्टी इनिंग्स का आगाज़ करने आए थे। कप्तान एक छक्का और चौका लगाया लेकिन उसके बाद अपनी विकेट गंवा बैठे। दाऊद खान जो कि आज तक कोई कैच नहीं गिराए हैं लेकिन बासिर लेफ्टी ने वहाँ से मोमेंटम को कंटिन्यू किया, बड़ी हिट्स भी लगाई और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा था शाहरज़ा और बासिर लेफ्टी की शराकतदारी से कि करीब करीब ले आएंगे अपनी टीम को। लेकिन 3 ओवर्स के बाद बासिर लेफ्टी बड़ी हिट लगाने गए थे, कुछ कनेक्ट भी किए। माजिद गोली के इस ओवर में भी बड़े छक्के लगाए थे जब वो कलाइयों का इस्तेमाल करने गए और अपनी विकेट गंवा बैठे। और एक बार फिर दाऊद खान लॉन्ग ऑन पे एक आसान कैच लेने में कामयाब हुए। फलक बशीर पहली ही गेंद पे पवेलियन लौट गए। दाऊद खान ने छलांग लगा के अच्छा कैच किया। अली छोटा की दूसरी कामयाबी एक ही ओवर में। शाहरज़ा ने काफ़ी कोशिश ज़रूर की कि सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को फतह की तरफ लेके जाएं लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। और फजल आफरीदी ने जिस तरह अपना आखिरी ओवर किया और पहले ही गेंद पे शाहरज़ा जैसी बड़ी विकेट हासिल की, वहाँ से जौहर जवान्स के लिए आना बहुत ही मुश्किल हो गया। और इसी तरह मलीर मलंग्स ने अपने तीसरे मैच में भी कामयाबी समेटी। ये बैटिंग कार्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जौहर जवान्स का। बासित लेफ्टी ने 34 रन बनाए, नुमाया रहे। 21 रन शाहरज़ा ने भी बनाए लेकिन ये काफ़ी नहीं थे। बॉलिंग की अगर बात करें तो माजिद गोली 1 विकेट लेके 40 रन दिए लेकिन अली छोटा ने 2 विकेट्स ली, सिर्फ 13 रन दिए और फजल आफरीदी के आखिरी ओवर में मलीर मलंग्स की जीत को यकीनी बनाया। और ये स्टोरी ऑफ द मैच, मलीर मलंग्स ने 23 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया।
और इसके साथ ही वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट ब्रेक का, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी।
यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 के 9th मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर वो तमाम 84 ममालिक के जहां हमारी नशरियात जा रही है, इसके साथ साथ जो लोग भी ठंड के इस माहौल में डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में मौजूद हैं, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। आज एक और मैच जिसमें मलीर मलंग्स ने जौहर जवान्स को 23 रन से बड़े मार्जिन से शिकस्त दी और तीसरी मुसलसल कामयाबी हासिल की। वेरी वेल प्लेड मलीर मलंग्स। और अगर हम देखें तो फिर ये जौहर जवान्स की 3rd कंसेक्टिव डिफीट थी। तो एक टीम आज तीसरा मुसलसल मैच जीती और एक टीम को तीसरी मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमारे साथ प्रेजेंटेशन पार्टी में मौजूद हैं आज के हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर इदरीस मेमन, फॉर्मर प्रेसिडेंट KCCI, उनके साथ मिस्टर तौसीफ अहमद, नेशनल सिलेक्टर, उनके साथ मिस्टर नशीद सिद्दीकी, रिप्रेजेंटेटिव जौहर जवान्स, उनके साथ मिस्टर मोहम्मद रेहान इकबाल, उनके साथ मिस्टर अर्श नसीर, डायरेक्टर बदर एक्सपो सॉल्यूशंस, द पैट्रन बॉडी ऑफ दिस यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, और उनके साथ प्राउड ऑनर ऑफ मलीर मलंग्स मिस्टर जफर अब्बास। बहुत बहुत जफर भाई आपको मुबारक हो। सबसे पहले मैं आज की लूजिंग टीम्स के कैप्टन सैयद नासिर को मदू करूंगा। नासिर आप आएंगे जी। वालेकुम सलाम। नासिर, 3rd कंसेक्टिव डिफीट, आपकी टीम इतनी कमज़ोर नहीं थी। नसीम भाई बस स्टार्ट बहुत अच्छा होता है और एंड जो है ना वो उस तरीके से हो नहीं पाता, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में कमबैक करेंगे। अब आपके पास डू एंड डाई सूरत हाल है, 3 मैच हार गए, 4 जीतते हैं तो कोई चांस मौजूद है? बिल्कुल इंशाल्लाह 4 के 4 मैच जीतेंगे इंशाल्लाह। चलें, विश यू अ वेरी गुड लक नासिर एंड द विनिंग टीम कैप्टन दाऊद पठान DK। अली छोटा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मिमरान और आप अपनी टीम को जिस तरह बैटिंग में लेके चल रहे हैं, मेरे ख्याल है ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन है मलीर मलंग्स का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जो तीसरी जीत हमारे नसीब हुई, और ये टीम एफर्ट है और टीम वर्क है। आज जैसे अली छोटा ने अच्छी बॉलिंग की, उबैद ने नीचे जाके अच्छी बैटिंग की, तो इससे मुझे और मिमरान को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है, तो इसलिए टीम वर्क भी बहुत अच्छा बना हुआ है हमारा। और ख़ास तौर पे 3rd कंसेक्टिव विन, और DHA दबंग को भी आप हरा के आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस बहुत ही ऊपर होगा। हाँ, यही बात है कि लड़कों का मोराल बहुत हाई है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एंड भी अच्छा करें। बिल्कुल। दाऊद खान पठान, वेरी वेल प्लेड, बहुत मुबारक हो आपको, थैंक यू वेरी मच। आज की अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात कर लेता हूं तो इस मैच में भी ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी देखने को मिली, जहां पर मिमरान, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, 46 ऑन 18 बॉल्स विद 4 एंड 4 सिक्सेस, उनके साथ फरमान 2 for 25, अली छोटा अच्छी बॉलिंग उन्होंने भी की, उसके साथ उबैद 40 ऑन 14 बॉल्स विद 1 4 एंड 5 सिक्सेस। लेकिन वो बॉलर के जिसने दोनों इनिंग में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया मलीर मलंग्स के लिए और अपनी टीम की जीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, अली छोटा। अली ने पहली इनिंग में 4 आउट किए 25 रन देकर, दूसरी इनिंग में 2 आउट किए 13 रन देकर, द मैन ऑफ द मैच अली। वैसे नाम के साथ छोटा लगा हुआ है, परफॉर्मेंस आपकी सारी बड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूंगा जिन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, और माशाल्लाह जिस तरह दाऊद भाई ने कहा कि ये टीम एफर्ट थी जिसकी वजह से हम माशाल्लाह कामयाब हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, इसको खेलने का फ्लेवर कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा माशाल्लाह माहौल है, और उसके अलावा ये यंगस्टर के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि इतना बड़ा प्लेटफार्म मिला और यहाँ आए और परफॉर्म करे, और माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया में माशाल्लाह ये कवरेज जारी हो, ये बहुत अच्छा साइन है। मज़ा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो। आइए जी, ट्रॉफी लेकर आइए। सबसे पहले इदरीस साहब आप आगे आएंगे। मिस्टर इदरीस मेमन मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी पेश करेंगे, मैन ऑफ द मैच अली छोटा को। मैं विन बोनस के लिए रिक्वेस्ट करूंगा आप नेशनल सिलेक्टर मिस्टर तौसीफ अहमद, आप आगे आएंगे और विन बोनस देंगे। अली छोटा, इतनी जल्दी ना जाएं आप।
नेशनल सिलेक्टर तौसीफ अहमद साहब यहाँ तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी मच सर। उनके बाद मैं मिस्टर अर्श नसीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, डायरेक्टर बदर एक्सपो सॉल्यूशंस, गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम ओसाका लाइट्स, और ये जाएगा बेस्ट कैच के लिए शाहजी, कम ऑन शाहजी। और फैन ऑफ द मैच के लिए मिस्टर जफर अब्बास एंड मिस्टर नशीद सिद्दीकी, आप आगे आएंगे। रियान साहब आप भी आगे तशरीफ लाइए ताकि ये मिल के देते हैं। ये हमारा वो अवार्ड है कि जो स्टार टी यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग ने किया फैन ऑफ द मैच, और आज के फैन ऑफ द मैच रैयान, कम ऑन रैयान। रैयान को बहुत बहुत मुबारक हो। तो फिर आप भी फैन ऑफ द मैच बन सकते हैं। यहाँ डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी आने के बाद फैन ऑफ द मैच का अवार्ड हमारी मैनेजमेंट तैयार है आपको देने के लिए, और फैमिलीज के साथ यहाँ लोग आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, और सब एंजॉय भी कर रहे हैं। इदरीस भाई कैसा लगा वैसे ये टेप बॉल को एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ले गई? सबसे पहले तो मैं बदर एक्सपो के जोहर नसीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी टीम को। और KTPL सेकंड भी जब हुई थी तो मैं उसमें भी कई मैचेस में मेहमान खुसूसी था और उसमें मैं इनके साथ साथ रहा, और उस वक्त जोहर ने कहा था कि इंशाल्लाह इसको आने वाले दिनों में बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारुफ़ कराया जाएगा और उसी स्टैंडर्ड पर इसको मुनक़िद किया जाएगा, और उन्होंने ये करके दिखा दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरह इसका इनेकाद किया गया है और जो जिस तरह इस इवेंट को मैनेज किया गया है, तो मैं उसको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मज़ीद इसमें आने वाले दिनों में आगे जाकर और भी बेहतरी आएगी। और इसको अभी हमारी बात हो रही थी, हमने US से बात की है जोहर ने और मैंने, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इसको USA में KTPL को मुतारिफ़ कराएंगे। थैंक यू वेरी मच इदरीस मेमन साहब। USA में हमारा ये इवेंट जा रहा है और लीग भी ज़रूर जाएगी, हमारे प्लेयर्स भी ज़रूर जाएंगे, और यही हमारा इरादा भी है, ये हमारी पूरी मैनेजमेंट इस जानिब सोचती है। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल चीफ गेस्ट इदरीस मेमन साहब, तौसीफ अहमद साहब, नशीद साहब, रेहान साहब, जफ़र अब्बास साहब एंड अर्श नसीर साहब, थैंक यू वेरी मच। और तो फिर आज की नशरियात में इतना ही। आपने दोनों मैचेस को बहुत इंजॉय किया होगा। आज फिर डबल हैडर यहाँ DHA मोइन खान क्रिकेट एकेडमी से आपके लिए लेकर आएंगे। शाम को 6 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।